हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और हाँ भाई, लिटरली वी आर लाइव। आपको पता है भाई, कितने अ डे 6-7 hours वी आर लाइव। क्रेजी वर्ल्ड कप यार, क्रेजी वर्ल्ड कप, गोइंग इवन मोर क्रेजी। यस ऑफ कोर्स, मैं तो यार न्यूट्रल हूँ, तो आई एम लाइक इतना ज्यादा मूव नहीं हूँ, लेकिन स्टिल सैड यार टू सी पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑब्वियसली नॉट being able to win that World Cup. Of course, he's out because of Morocco and of course Portugal की पूरी टीम. बट इंग्लैंड और फ्रांस में आज रात में पता लग जाएगा द लास्ट फाइनल सेमीफाइनलिस्ट कौन होने वाला है. हु विल प्ले मोरक्को एंड पॉसिबली इन माय ओपिनियन प्ले अर्जेंटीना और क्रोएशिया. अगेन अर्जेंटीना ज्यादा लग रहा है इन द फाइनल एज वेल, बिकॉज जस्ट एज मच एज मोरक्को बहुत ही बढ़िया किया. You have to say that France or England, one of them should be able to beat them. I don't know. Just saying. Again, मैं predictions कम ही करूँ तो better है. अभी के लिए मेरे जो predictions magic जो भी बोल रहे थे people यार, it's not coming true the last couple of days unlike normal. लेकिन again great to see everyone in the house. Again लाइक कर सकते हो तो बढ़िया, ब्रिलियंट है यार. मैंने आई थिंक मैंने पोस्ट किया ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे. हाँ, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस के मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया है, तो इफ यू कैन लाइक दैट एज वेल एज इंस्टाग्राम पोस्ट सो दैट पीपल नो दैट वी आर लाइव, दैट बी ब्रिलियंट. लेकिन हम लाइनअप देखने वाले. आदित्य भाई वापस से हेलो, एब्सोल्युटली मच लव टू यू ऑल. भाई एक तो मैं बोलना चाहूंगा, जो भी लोग आते हैं और बने रहते हैं हमारे साथ बहुत लंबे के लिए, भाई आई कैन नॉट थैंक यू ऑल इनफ यार. मतलब इट्स ऑलवेज अ केस दिस क्रेजी. मैं बोल रहा हूँ that it is not easy just being here. Of course हम साथ में as friends we discuss, it's all almighty fam, absolutely. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है that as literally we feel like friends यार. everyone, you guys are always there and again much love to you all. yeah, अगर वो increase हो जाए नंबर तो और भी बढ़िया रहे. लेकिन great to have you, of course Jack, very much a part of the almighty fam. NS Sports TV in the house, almighty goat in the house. भाई निपुन, how was the feel? I know मैंने tweet देखा है निपुन का. Nipun is like France is pasting us, लेकिन Nipun deep down you know that you want France to kind of lose, right? अनमोल दीप भाई कैसे हो? अच्युत क्या बोल रहा है? Argentina fans don't react, we stay on our dreams. Respect Ronaldo, he's a goat along with Messi. Respect for that comment. Portugal attack cross inshallah. मैं बोल रहा हूँ ना, दैट इज द थिंग. बी प्लान बी वाज ओनली रफाल लिया, उससे बेटर कोई प्लान भी था ही नहीं उनका. एंड विल कम टू दैट. अभी फोकस है ऑन इंग्लैंड फ्रांस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. हेलो हरजस, कैसे हो? कम ऑन इंग्लैंड. मैं हेड सेज इंग्लैंड 0 एंड फ्रांस 3. वाओ अंकित भाई, रोना आ रहा है, क्या करूं भाई? आगम, आई कैन अंडरस्टैंड. मेरा सेम चीज हो रहा था ऑनेस्टली. कल रात को मैं ऑनेस्टली बोल रहा था, बहुत सारे चीज मैंने शेयर किया था. लेकिन अगेन देखिए, फुटबॉल बिगर देन एनीवन at some point. यार ये ऐसे सोचो बस. only thing I know, it's difficult to think that if a Croatia, if a Morocco by chance goes on to win the World Cup, who knows, we get more development maybe in Africa, especially Morocco का. just think about it, that might transmit, maybe Asian teams can take more inspiration वहां से. मतलब मैं वैसे, I know it's easy for me to say. Messi fans just rejoined Twitter after 6 months just to see the world burn. अरे यार आखिर 10 क्या बोलोगे यार. फ्रेंचमैन टुनाइट इजी. ओके, लाउड मॉड फुटबॉल उदय, मैं याद रखूंगा भाई. बिग अप आपको, कैसे हो भाई? नाइस टू सी यू ऑलवेज. 4-3 टू इंग्लैंड. हाय ब्रदर डेरेन, मच लव ब्रो. अगेन डेरेन, आई नो यू आर सपोर्टिंग इंग्लैंड. 4-3 टू इंग्लैंड, दैट इज इंटरेस्टिंग भाई. सब लोग अभी देखते हैं. लेट्स सी द लाइनअप पहले एंड देन रिएक्ट. ठीक है, टैक्टिक्स बात करेंगे, व्हाट नॉट, हम सब चीज बात करेंगे. सबसे पहले क्या करना है, सब लोग को लाइक बटन दबा दीजिए. वो यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसा है, तो आप लाइक बटन दबाएंगे और शेयर करोगे तो भाई और भी बढ़िया है. एंड एज वेल एज यू कैन लाइक माय कम्युनिटी पोस्ट ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, हमारा दूसरा चैनल. एंड दिस इज द लाइनअप. दिस इज द लाइनअप. क्या आपको लग रहा है कुछ ना कुछ चेंज किया है टैक्टिकली? बेसिकली वो लग रहा था, इनफैक्ट सुनने में आ रहा था दैट मिस्टर गैरेथ साउथगेट विल प्ले एग्जैक्टली द सेम चीज जो उन्होंने खेला था अगेंस्ट सेनेगल. प्रिटी मच इज द सेम थिंग. कुछ टैक्टिकली कुछ चेंज नहीं किया. फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस भी सेम रखे भाई. फ्रांस भी सेम रखे. ये क्या है भाई? एकदम बिल्कुल भी चेंज नहीं लग रहा मुझे. अगेन मे बी यू कैन से दैट राफेल वरान इज इजी 100% फिट. वो आप क्वेश्चन कर सकते हो. आई थिंक ही विल बी ओके फॉर बैक टू बैक गेम्स. लेकिन अगेन आपको पता है द मेन बैटल यहां पर क्या है? वॉकर कीपिंग स्टार्टिंग प्लेस. हाँ, ये बोलना चाहूंगा, वॉकर आई इन माय पर्सनल ओपिनियन डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम अगेंस्ट सेनेगल. हाँ, जनरली सेनेगल के साथ अच्छा किए थे इंग्लैंड ने, लेकिन आई थिंक ही कुड हैव हैड डन बेटर अटैकिंग वाइज. लेकिन यहाँ पर डिफेंसिवली यू नो दैट ही इज समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट जस्ट हिम, मैं तो बोलता हूँ हेंडरसन और स्टोन्स भी.
This trio, Stones, Henderson, or Walker, against Mbappe is a key battle without a shadow of a doubt. But that is what Mbappe can suck in these defenders or defensive midfielders. और तब क्या होगा? स्पेस मिल सकता है राबियो को टू ओवरलैप. Yes, I'm saying it right. Rabiot is a left footer, remember. So Rabiot overlap कर सकते हैं and he has to be, marked as well. A Griezmann or Rabiot. दोनों ही left footers है. They can get into that space. So for me, that can be one of the ploys जो फ्रांस करे and वहीं पर जिरू आ जाते हैं भाई. जिरू आ जाते हैं and you know when it comes to crosses, Giroud is one of the best taking crosses. You know that very well. Okay. Again, Theo Hernandez, he will be attacking. On the other hand, England के Saka, will he be able to have the guts कि यार जो ओवरलैप करे हर्नांडेस को एंड एक्चुअली पुट इन द प्रोसेस फॉर अटैकिंग हैरी केन. अब वो मुझे डाउट लग रहा है. आई थिंक इंग्लैंड माइट बी फोर्स्ड टू गो लिटिल बिट डिफेंसिव और वहीं पर आई थिंक द बेंच विल मेक द डिफरेंस. आर्ग्यूबली यू कैन से इंग्लैंड का बेंच एक्चुअली बेटर है फ्रांस से और विल कम टू दैट एब्सोल्युटली. अगेन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो जो मैं चाहता हूं जीते, आई फील दैट आई वांट इंग्लैंड टू विन एटलीस्ट दिस मैच. द रीजन बीइंग नथिंग अगेंस्ट फ्रेंच फैंस और नथिंग अगेंस्ट फ्रांस और एनी प्लेयर्स. बट द रियलिटी इज मैं नहीं चाहता हूँ यार फ्रांस वापस से जीते वर्ल्ड कप. मेरा पर्सनल चॉइस है. आई जस्ट वांट वर्ल्ड कप नॉट टू गेट सो बोरिंग. एनीवे, in Bruno Fernandes बोले it's unacceptable not to have Portuguese referees and to have an Argentine referee in the competition. It's strange to say the least. Well, I don't know why are Portugal going that way. कोई मतलब ही नहीं बनता यार, कोई मतलब ही नहीं बनता वो सब बोलने का. I don't. Anyway, Hart says England 2, France after extra time. Okay. Messi fan just rejoined Twitter. तो देख लिया था. फ्रांस 3 इंग्लैंड 2 लोन वोल्फ बोल रहे इंटरेस्टिंग. वो तो बहुत अच्छा रहेगा. 4-3-3-2 वाले मैचेस देखने को मिल जाए. बड़े मजा है यार. गोल्स तो होंगे आज. फुटबॉल इज सो क्रूअल समटाइम्स. आई जस्ट डोंट फील माई सेल्फ एनी मोर. अंकित भाई, आगम, take your time, don't worry. It'll be fine. I'm telling you, it'll be fine. Football bigger than anything, or again there's always a next chance. I know not for Ronaldo, but generally. अरे सर कुशांग क्या हाल है? मेसी फैन यार ये क्या बोल रहा है बार बार, पता नहीं. आप स्पैम मत करिए आकृत. मैं वार्न कर रहा हूं आपको. अंकित भाई, वेरी हार्ड नाइट फॉर अस. seeing him crying, almost broke. I think I should take break from social media. Dipankar, I can understand. Again, I have been through that. मेरे idol Iron Robin, when he missed a chance to 2010 World Cup and again 2014 में he couldn't win it. For me, it was the moment, and in fact, मैं तो सोच रहा था he'll come back and make them qualify and win the 2018 World Cup. भाई qualify भी नहीं किए. He came back out of retirement. Still, we did not. But that's how it goes, right? Sometimes it goes that way. क्या कर सकते हैं उसका. भाई सब लोग, again, I request everyone to like the stream. शेयर करिए अगर हो सके तो. और अगेन एक ट्वीट जाती है ऑटोमेटिकली मेरे ट्विटर अकाउंट पे. इफ यू कैन रीट्वीट दैट अलोंग विद दिस लिंक, पेस्ट इट दैट, ब्रिलियंट रहेगा. ठीक है. देखते हैं और क्या आ रहे कमेंट्स. कांट सी इंग्लैंड विनिंग इनफ. पता नहीं यार. देखिए एट सम पॉइंट कोई भी टीम जीते ना, शोर शराबा तो होगा. देखते हैं. समटाइम्स आई लीव बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैच बट लव यू फॉर एवर. अरे डेरिन, बिल्कुल यार, नो प्रॉब्लम. Ronaldo is still a goat. Viva Ronaldo. Yeah, he'll remain one of the goats for sure यार. मतलब वही है. अगर if he had won the World Cup, same with Messi यार, आपका वही है, putting a cherry on the cake वाला चीज होता है ना. Looks like Argentina will be going to beat Croatia and France to take revenge of 2018. हाँ, 2018 में round of 16. Yes, of course. सुप्रियो, बहुत अच्छा कमेंट आपका. फ्रांस और अर्जेंटीना. कैन फ्रांस टॉप फिल हैरी साका? वेल, देखिए डिफेंस, हाँ वही हम इस साइड से बात की, उस साइड से भी बात कर सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन आपका. देखिए वापस टैक्टिकली बात करते हैं थोड़ा सा. हैरी केन इज गोइंग टू ड्रॉप बैक, वी ऑल नो दैट. ठीक है, हैरी केन ड्रॉप बैक करते हैं क्योंकि राइस विल प्ले ऑलमोस्ट लाइक अ थर्ड सेंटर बैक एट टाइम्स इन दिस मैच पर्टिकुलरली, स्पेशली जब आपके पास है ग्रीजमैन और एम्बापे. तो हैरी केन इज गोइंग टू ड्रॉप बैक और दैट विल प्रोबब्ली गिव स्पेस टू मे बी फोर्डन टू रोम अराउंड इन दिस एरिया. और it is very essential कि वहां पर बेलिंगहम does not really get bogged down और बेलिंगहम runs करे अपने. बेलिंगहम into the box is a possibility bro. और वो in the box with Henderson with his through balls, वही मुझे लग रहा है. हैरी केन himself with the passes. तो भाई अटैकिंग वाइज देखो, ये 5 लोग जो है, बेलिंगहम, फोर्डन, केन, साका और हेंडरसन, आई थिंक दे कैन डू अ जॉब. मेनली साका, केन, फोर्डन और बेलिंगहम. अगेन अगर केन आगे आते देन शॉ पुटिंग अक्रॉस इज इंपॉर्टेंट. बट एट द सेम टाइम कैन शॉ अटैक और वो बीट कर सकते हैं डेम्बेले एंड कुंडे? इन माय ओपिनियन ही कैन. इन माय पर्सनल ओपिनियन ही कैन, क्योंकि यार डिफेंसिव एलिमेंट ऑफ डेम्बेले इज देयर. लेकिन मुझे लगता है शॉ फॉर्म में लग रहे हैं मुझे, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार
Harry Kane has a chance as well. Upamecano, Varane, again Varane 100% fit. I'm not sure about his fitness levels, but वही है, with Foden, with Bellingham running into the box, or with Kane being there, हो सकता है इंग्लैंड हैव एन अपर हैंड ओवर फ्रांस डिफेंसिव अटैकिंगली. लेकिन वही है, कैन बेलिंगहम डू दैट? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा राइस को, एंड राइस हैज हिज वर्क कट आउट. राइस हैज टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड. मगवायर थोड़ा आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा हाई लाइन रखे तो बेटर है. लो ब्लॉक रखेंगे तो भाई गई इंग्लैंड तो. एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट आई वुड से. एब्सोल्युटली. लेट्स सी, कमिंग बैक टू द कमेंट्स. लेट्स सी, कहाँ थे हम यार? फोर्डन फॉर एशी. यू नो व्हाट, ये ठीक है. मतलब आई थिंक रैशफोर्ड इम्पैक्ट प्लेयर जैसे अच्छे लगे. आई डोंट सी एनी इश्यूज उसमें. आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ओके, आई एम नेवर मेकिंग फुटबॉल प्रेडिक्शंस अगेन. असर प्लेयर्स, डोंट वरी यार, होता है भाई, होता है. कुछ कुछ सही भी होंगे. प्रीटी श्योर सम ऑफ देम हैव गॉट राइट, बट वही हमें लगता है कि यार अपसेट्स आर मोर इन दिस टूर्नामेंट, तो ऐसे लगता है हमें. पेपे थ्रोइंग शॉट्स एट अर्जेंटीना, unnecessary I feel. Walker versus Mbappe will be a nice fight. Again, it's just not Walker. I know वो मीडिया ऐसे बोल रही है, and himself admitting it. लेकिन सच में बोलो तो it's more about, you know, राइस, वॉकर एंड क्या बोलते हैं, हेंडरसन वर्सेस एम्बापे एंड ग्रीजमैन. राबियो, इसलिए मैं बोला, आप देखिए, मैं, एवरीवन रिमेंबर, राबियो माइट एंड अप बीइंग द की पर्सन आज. राबियो, इंग्लैंड को लाइट नहीं लेना है भाई. राबियो का फॉर्म अच्छा है. एज मच एज ग्रीजमैन एंड एम्बापे स्टूड आउट एकदम, राबियो विद लेफ्ट फुट कैन एक्चुअली गो वाइड एंड पुट अ क्रॉस आल्सो. थियो हर्नांडिस, ये दोनों मैं बोल रहा हूँ फॉर जिरू. इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देम टू, यू नो, बी फोकस्ड. राइस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल. ये मैं पढ़ लिया था. डेरियन, थैंक्स फॉर शेयरिंग. फ्रांस 3 इंग्लैंड 2, फ्रांस 2-1. भाई फ्रांस से ज्यादा लोग जा रहे. देखना चाहता वापस, बट टू बी ऑनेस्ट फ्रांस क्लियर इन दिस गेम. भाई क्लियर सच में, मतलब एवरीवन हु सेइंग दैट फ्रांस क्लियर है. मैं तो भाई इंग्लैंड सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इंग्लैंड को बहुत फॉलो किया हूं. प्लस चेल्सी प्लेयर्स इंग्लैंड में थोड़ा वो भी होता है, लेकिन ऑनेस्टली ज्यादा. भाई सब लोग बोलिए जो फ्रांस का बोल रहे हैं ना, फ्रांस क्लियर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, फेलो कंटेंट क्रिएटर्स मैं देख रहा हूँ, दैट द ओनली थिंग लेफ्ट बिटवीन मेसी नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप एंड विनिंग द वर्ल्ड कप इज बिटवीन फ्रांस. भाई इंग्लैंड को क्यों बोल रहे हो? मतलब इंग्लैंड, आई नो बहुत डिसअपॉइंट करती है. गैरेथ साउथगेट भाई शिट मैनेजर, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन ही हैज बीन इफेक्टिव. मतलब when was the last time you saw England losing a match convincingly in a major tournament? I think you have to give England the credit. कहीं ना कहीं मुझे हम भूल रहे. मोरक्को क्यों है सेमीफाइनल्स में? एनीवन, द मेन रीजन व्हाई मोरक्को इज डन सेमीफाइनल्स क्यों है? They have the best defensive record in this World Cup. On paper, which is the best defensive team in the World Cup? मेरे लिए इंग्लैंड है. It is England. The best defensive team in the World Cup on paper is England. अब वो ये whether they can implement it on the pitch वो अलग चीज है. हैरी मगवायर को इंक्लूडेड, हाँ उसका फॉर्म मैं बोल रहा हूँ बाय द वे. 5 मैच टू गो, एंजॉय. बिल्कुल लाइक कर दो, बिल्कुल सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए. मनी थैंक्स. इंद्रानी बोल रहा है, आई वुड से इग्नोर व्हाट पोर्चुगल प्लेयर्स आर सेइंग, टू मच इमोशंस. हाँ वही है. आई थिंक इट्स अबाउट, यू नो, हीट ऑफ द मोमेंट. थोड़ा सॉल्टी हो रहे. फेयर इनफ, इट्स नॉट फेयर टू जज, होता है. Yes, again, Aritra, absolutely brilliant to see that from you all, यार. Means a lot. फुटबॉल वर्ल्ड कप तो क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी ज्यादा अपसेट दिखा चुका है. व्हाट अ वर्ल्ड कप. इनफैक्ट इमेजिन मेरा हाल यार, कुणाल भाई, दोनों क्रिकेट वर्ल्ड कप हम कवर किए ही थे ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, और यहाँ पर ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में हम ये कर रहे हैं. आई नो वहां पर फुटबॉल भी वापस से करना है, लेकिन क्रेजी ब्रो, मतलब दैट इज व्हाट इट इज लाइक. क्रेजी मैन, आई एम टेलिंग यू, क्रेजी मंथ एंड हाफ मेरा गया. टुडे फ्रांस इज ईटिंग इंग्लैंड इन डिनर. व्हाट इज साउथगेट डूइंग ऑन बैक फोर? भाई कुछ चेंज नहीं किया है. ही इज गोइंग विद समथिंग व्हिच इज वर्क्ड. John Stones, arguably, along with Maguire, has been the best defensive partnership in the World Cup. Saiz और Aguerd का बोल सकते थे. I think maybe you can talk about the Croatian center half partnership, Lovren and Guardiol, but I think England also is right up there. Okay. Pepe blaming on Messi. Yeah, वो तो salty हो रहा है भाई, छोड़ दो भाई. M-Shape, big up to you. Hi, bye. How's your injury? Thanks for asking, Devanik. Injury is getting better. Although मुझे स्कैन कराना है भाई कल परसों, तो होपफुली आई डोंट हैव अ, यू नो, सिवियर लिगामेंट टेयर. इट्स जस्ट अ माइनर वन. होपफुली देखते हैं, मतलब नेचुरल हीलिंग का बोले थे, तो लेट्स सी. इट इज बेटर, स्वेलिंग इट्स बेटर. सो थैंक्स फॉर आस्किंग. फ्यू टीम्स हैव सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड ऑल द प्रेडिक्शंस ऑफ वर्ल्ड कप 2022. ओनली हेवीवेट.
अर्जेंटीना फ्रांस स्टिल हैंगिंग अगेन। देवानिक, यहाँ पर मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, why aren't we considering if अच्छा चलो, with all due respect, we are considering Argentina as a heavyweight. If you are considering Argentina as a heavyweight, why aren't we considering England as a heavyweight? I'm not an England supporter. I'm just saying, just to be fair to both the teams. मतलब I'm just थोड़ा सा confused हूँ यहाँ पर, but नहीं है, it is what it is. फ्रांस तो डेफिनेटली हेवीवेट यार, रेनिंग चैंपियंस। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ क्रोएशिया भी आजकल में हेवीवेट में होगा यार। क्रोएशिया एक्चुअली इज अ हेवीवेट। दे आर इन द फाइनल्स ऑफ द नेशंस लीग, दे हैव बीन रनर्स अप इन द लास्ट टूर्नामेंट, तो लास्ट 4 से में हेवीवेट है भाई क्रोएशिया। 11-0 रैम पॉटर भाई, क्या फूक करा पता नहीं आप भाई, हिम्मत दो आगे की मैचेस देखने का, मूड उड़ गया है CR7 को देखकर। जीत देखिए यार, there's समथिंग टू बी लर्निंग एवरी गेम दैट यू वॉच एंड एवरीथिंग, और जब एंजॉय करो यार, इट इज अ मोमेंट जो अब 4 साल बाद आएगा, यू हैव टू जस्ट गो विद इट। मैं एज अ नेदरलैंड्स फैन एज वेल, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, समथिंग दैट आई वाज वेटिंग 8 साल से। मेरी तो टीम 2018 में थी ही नहीं, आप इमेजिन करिए क्या फील हो रहा होगा मुझे। लेकिन इट इज व्हाट इज, वो भी द वे दैट दे वेंट आउट, तो क्या ही बोल सकते हैं, होता है यार, मतलब थिंग्स हैपन, शिट हैपेंस। बट एनीवे, अंकित, cheer up bro, cheer up, come on. uh, this World Cup will be memorable for upsets without a shadow of a doubt. In fact, African teams, the emergence of Africa, I would say it can be termed as the emergence of Africa and Asia, maybe. One of those things also. Remember, Japan, South Korea, very much there. Senegal, Morocco, very much there. तो मैं बोलूंगा emergence of Africa and Asia. Henderson has Southgate's private videos. I am convinced now. लास्ट मैच में अच्छा किया था लेकिन लास्ट मैच के पहले वीडियो दिखाया होगा उसने, हो सकता है ये। I said Portugal to win when they lost. I said Netherlands to win, they lost, and I said Brazil to win, they lost. तो भाई असद प्लेस प्लीज आपका प्रेडिक्शन दे दिया अभी। इजी नहीं होगा फ्रांस के लिए, हाँ दिस इज द राइट वे टू पुट इट, इजी तो नहीं होगा, फेवरेट फ्रांस ही है स्लाइटली, बट वही है, मुझे लग रहा है ना, डिफेंस विंस यू टूर्नामेंट, डिफेंस विंस यू दीस काइंड ऑफ मैचेस, और इट कैन काइंड ऑफ गो डीप। England versus France will be a tight game, 100% for sure. Extra time जाएगा. Any thoughts on the lineups for upcoming match? भाई upcoming match मतलब कौन सा मैच के लिए बोल रहे हो? Do let me know. Just because of the fact is France has much more impactful players than England, you mean, okay? And France as a team played better than English team. हाँ वही है। चरित्र आपको पता है मेरा क्या व्यू है in terms of played better. But देखो played better, I understand in terms of a season पूरा week in week out वाला चीज I understand. Right, when it comes to say Champions League, when it comes to World Cup, when it comes to Euros, played better has a significance. Obviously, you would like the best team to play the best football also. Lekin not always they win. In fact, बहुत बार they don't win. That's what I would rather say. Uh, Ronaldo deserves better. Yeah, absolutely. भाई मीडिया पता नहीं थोड़ा मिक्स्ड है, लेकिन ऑनेस्टली डोंट लिसन टू मीडिया, लाइक यू नो इट इज, बट एट द एंड ऑफ द डे यार, ही इज अ प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड हिज कंट्री एंड हिज रिप्रेजेंटेड क्लब फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट एवर. आई डोंट थिंक दोज नंबर्स कैन बी ever achieved at least in like Champions League, a Messi kind of a person or someone like that, बहुत ही मुश्किल से आते हैं यार. कम ऑन, रोनाल्डो, मेसी नंबर्स के लिए अलग ही लेवल, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ एक होता है ना ऑरा, अलग ही लेवल. बट कहीं ना कहीं एवरीथिंग कम्स टू एन एंड. हाँ, अगर एंडिंग अच्छा हो तो बहुत बढ़िया होता है, एंडिंग नहीं अच्छा होता तो थोड़ा बहुत दुख लगता है, लेकिन अगेन ही विल ऑलवेज रिमेन टू बी अ गुड. सेम चीज अबाउट मेसी, यू कैन से दिस वर्ल्ड कप इज द बेस्ट वर्ल्ड कप. सुनील बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग. अगेन मैं बेस्ट वर्ल्ड कप तो नहीं बोलूंगा, आई वुड क्लेम इट एज अनप्रिडिक्टेबिलिटी के हिसाब से आप देख रहे हो तो डेफिनेटली बेस्ट वर्ल्ड कप है. इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल जो आदित्य बोल रहे थे, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर ड्रामा के हिसाब से यस, लेकिन एंटरटेनमेंट फैक्टर ड्रामा प्लस फुटबॉल प्लस काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स क्वालिटी के हिसाब से देखो तो मैं अभी तक 2006 से इक्वल मानूंगा, 2006 और ये वाला वर्ल्ड कप. फ्रांस हैज एन अपर हैंड कॉज ऑफ द फैक्ट दे हैव मोर, ये तो पढ़ लिया था आदित्य. लुक एट मीडिया हाउ मच दे आर टारगेटिंग. क्या क्या बोल रहे हैं भाई, व्हाट आर दे टारगेटिंग, लेट मी नो. क्या इंग्लैंड हारेगी? इंग्लैंड का क्वेश्चन ही ऐसे होता है भाई, क्या इंग्लैंड हारेगी? नीतीश, आई लाइक दैट बाय द वे. लेकिन ऑनेस्टली यार, चांसेस तो है कि यार फ्रांस ही जीते, लेकिन अगर कोई टीम, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ लास्ट 2 हफ्तों में, अगर कोई टीम बीट कर सकती है इस फ्रांस टीम की टीम को, मैं तो बोलता हूँ अर्जेंटीना भी मुश्किल है, सच में बोलता हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन. मुझे लगता है दैट फ्रांस की टीम रिक्वायर्स लाइक a proper say defenders who are having pace as well, and that is where I think
काइल वॉकर, मे बी डेक्लन राइस टू सम एक्सटेंट, यू कैन से बेलिंगहम, जो ग्राउंड कवर करते हैं, प्लस उसके पास एक है इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग जो एबिलिटी है वो है इंग्लैंड के पास यार। वो विंग्स विंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर बोलोगे विच कंट्री, आप बोलिए सब लोग, विच कंट्री इस वर्ल्ड कप में हैज द बेस्ट विंग्स, विंग्स पे बेस्ट, मैं बोलता अगर तीन में मुझे ऑप्शन देते ना, विंग्स, बेस्ट विंगर्स, इट कैन बी विंग बैक्स और इट कुड बी विंगर्स, ठीक है, और दोनों, मैं बोलूंगा फ्रांस, इंग्लैंड और ब्राजील। ब्राजील बाहर है, बाकी इंग्लैंड और फ्रांस, और मेन अटैक्स वहीं से आते हैं फ्रांस के। आप डेम्बेले देख लो, आप बेसिकली थियो हर्नांडेज देख लो, आप बेसिकली एम्बापे देख लो। हाँ, ग्रीजमैन इज देयर, लेकिन यार चुआमेनी और राबियो मतलब इतना क्रिएटिविटी नहीं करेंगे कंपेयर टू देम, राइट, विंगर्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। It's 55-45 for France. Yeah, this is a nice way of putting it, Praveen. Bilkul, I agree. And how much do you think the World Cup will have a mental effect on players like Neymar further going to Champions League? Will it affect the brilliant form? हाँ, इस सीजन में because it's mid season they might want to take a break, लेकिन वही है, मतलब no pun intended भाई, ब्राजील को तो ऑलरेडी ब्रेक मिल गया एक हफ्ते एक्स्ट्रा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट दे विल रिकवर, प्लस एक festivities will continue after this, मतलब in terms of being a December month, it helps थोड़ा with being with family, और then January में this restart, तो I think it will be fine. ऐसा कुछ इशू नहीं होने वाला, बिकॉज आप दो डिफरेंट कॉम्पिटिशन बोल रहे हो। सी व्हेन यू आर इन अ क्लब ना, आप ज्यादा मतलब यू आर नॉट रिमाइंडेड ऑफ दैट, यू आर मोर विद योर क्लब मेट्स, थोड़ा अलग माहौल रहता है, तो आई थिंक इट बी फाइन, अनलेस आप बहुत ही ज्यादा मतलब एफर्ट डाले हो वर्ल्ड कप में और फिजिकली आप फाइन नहीं हो, मेंटली आई थिंक इट बी ओके, आई थिंक इट बी ओके। If Argentina wins World Cup, I'm gonna forget there's some called God. क्यों भाई? Dream on. For me, England gonna win. As per latest reports, AIFS is planning to invest 1,000 crore in Indian football. If possible, make a video on this one. The World Cup is over. या भाई मैं रिसर्च करेंगे भाई आरित्र इसके बारे में, नाइस वन, एब्सोल्युटली मैं स्टार करके रख रहा हूँ आरित्र, मैं भूल जाऊँ तो मैसेज करिएगा। दिस वर्ल्ड कप विल बी वन ऑफ द वर्स्ट वन फॉर मी। देखिए वही है, अगर आपके हीरो बाहर हो जाते हैं और इन अ वे दैट दे वेंट आउट आल्सो इज नॉट गुड, यू डोंट रिमेंबर इट फॉर द राइट रीजंस। मैं फॉर एग्जांपल राइट, फॉर मी 2006 बोलते रहता हूँ मैं वाका वाका 2010 नहीं बोलता हूँ, क्यों? सोचिए, किसी ने सोचा ये बात? 2010 में मेरे हीरो आयन रॉबिन बाहर हुए थे इन द फाइनल, वी लॉस्ट इट, एंड दैट वाज एक मोमेंट जो उनके पास था एंड पीपल ब्लेम्ड हिम दैट ही मिस्ड इट। दैट्स व्हाई आई ऑनेस्ट ट्रूथ है, सच आज पहली बार एडमिट कर रहा हूँ ये चीज में लाइव। रोनाल्डो को स्टार्ट करना चाहिए था, ये वाला मैं अग्री नहीं करता, लेकिन मैं अग्री जरूर करता हूँ कि हाफ टाइम में डॉट लाना चाहिए था, और हाफ टाइम में लाना चाहिए था विलियम कार्वालियो को, और दे शुड हैव आल्सो गॉट ऑन बेसिकली फॉर बर्नार्डो सिल्वा प्लेइंग ऑन द विंग। पूरे ही मैच में बर्नार्डो सिल्वा का यूज नहीं किया जाता है अटैकर, दैट्स शेम ब्रो। व्हिच मैच वाज द बेस्ट फॉर यू इन दिस वर्ल्ड कप? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन हो, सब लोग आप लोग भी बताइए, which was the best for you in this World Cup? I think it's got to be last night's match. You would argue Netherlands Argentina, considering the second half and the extra time. लेकिन ड्रामा, लेकिन मैं बोलता हूँ ओवरऑल मैच के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस भी देखता हूँ, एंड ओवरऑल मैच के हिसाब से यू नो व्हाट, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आई थिंक आई माइट जस्ट गो फॉर क्रोएशिया ब्राजील। इतना टैक्टिकली इट वाज ब्रिलियंट ब्रो, क्रोएशिया ब्राजील टैक्टिकली बहुत ही अच्छा था। नेमार का गोल इन एक्स्ट्रा टाइम, वाओ, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट गोल। मे बी रिसेंसी बायस है, पता नहीं, मुझे लगता है क्रोएशिया ब्राजील में सच में मजा आया मुझे, ऑसम मैच था, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। मैंने कल बोला था लाइव स्ट्रीम में कि यार दिस हैज टू बी द बेस्ट मैच फॉर मी। हाँ, अगर आप कॉन्सिक्वेंस नहीं देखोगे, आप इंपॉर्टेंस नहीं देखोगे, तो मेरे लिए कैमरून और सर्बिया वाला मैच बहुत अच्छा था, फॉर एग्जाम्पल। those are some matches I remember. Of course, Japan के matches, you can say South Korea के matches were always good. They are saying that instead of shaking, consoling the players and meeting the fans, Ronaldo just walked. Come on, bro. Come on. भाई मीडिया जो भी बोल रहे हैं ना भाई, ही इज ह्यूमन, he's had a very, even as an opposition, क्योंकि मैं चेल्सी फैन हूँ, he's a Manchester United, or he was a Manchester United legend. For me, the guy's had a tough year. Give him a break, bro. The guy's had a tough year, and he's a goat. He's मतलब वो उसको आदत है एकदम to be at the very top, and right to the very top. I mean, ठीक है. And the guy like this has had personal issues. He's lost his club position, और उसको छोड़ना पड़ा club. One of the clubs which loves him as well as the player. Fans love him as well as he loved them. और अभी यार Portugal, something that he's been working for the last couple of years, वो फेल हो गया at a quarter final stage against Morocco.
और आप देखो ही इज नॉट अ स्टार्टर देयर, तो कहीं ना कहीं मुझे आई थिंक समवेयर ऑन द लाइन यू हैव टू गिव हिम अ ब्रेक। भाई अगेन मैं इस चीज बोलना चाहता हूँ, कल भी बोला था लाइव में, this is a responsibility me as a content creator I'm saying, and to fellow content creators, at least आप लोग भाई, unless you know it's really necessary, जबरदस्ती का रोनाल्डो मेसी मत किया करो यार, मतलब honestly it's not required, it's not required, give them a break, please give them a break, that's what I'll say. And again I know media, अलग media जो है वो तो अलग ही है, वो तो we cannot control, we can only suggest. France can do it but will not be a cakewalk for sure. Again a very good way of putting it, Deepak. um, ओके प्रखर, आपका मैं नहीं ले रहा, कमेंट लेना चाहता था लेकिन मैं नहीं ले रहा क्योंकि आप स्पैम कर रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है भाई। इंद्रानील थैंक्स फॉर लेटिंग हिम नो, एज वेल एज आरित्र। बिल्कुल, अगेन आपको अगर प्रायोरिटाइज करना है, देयर इज ऑलवेज अ वे, यू कैन सुपर चैट, यू कैन बिकम अ मेंबर, यू विल बी प्रायोरिटाइज जनरली स्पीकिंग, बट आई विल ट्राई एंड टेक एज मच एज पॉसिबल, वो हमेशा रहता ही है मेरा एफर्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम प्रखर, आई आई लाइक द फैक्ट दैट आप एडमिट कर रहे हो। पेपे का क्या सीन है ब्रो? पेपे का ये सीन है भाई, बहुत ही सॉल्टी है, और आकर बोला है दैट अर्जेंटाइन रेफरी नहीं होना चाहिए था, क्या फलाना दिखाना नहीं होना चाहिए था, कम ऑन, मतलब वो चीज थोड़ा सा इमोशनल, इमोशंस में बह गए, तो ठीक है, मतलब अभी अभी के लिए छोड़ो उसे। वाज माय इमोशंस, बिल्कुल, अर्जेंटीना नेदरलैंड्स इमोशनली इट वाज द बेस्ट मैच, या दिस इज द टफेस्ट ईयर। अच्छा, बेस्ट मैच दिबानिक बोल रहे हैं अर्जेंटीना नेदरलैंड्स, ओके, दिस इज द टफेस्ट ईयर एनी प्लेयर कैन फेस, मतलब स्पेशली अ प्लेयर हुज एट द टॉप लेवल, ठीक है, जो इतनी आदत है इतने सालों से, इमेजिन अगेन इतने सालों से किया, बट दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट? अर्जेंटीना नेदरलैंड्स वाज थ्रिलिंग लाइक व्हाट टिल द एंड, इंटरेस्टिंग, सब लोग अर्जेंटीना नेदरलैंड्स ही बोल रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भाई, सब लोग। एक तो सबसे पहले जो भी लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर, भाई इट विल मीन अ लॉट इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब इट, चेक करिए अगर सब्सक्राइब हो कि नहीं, काफी बार हम देखते हैं देन वी डोंट सब्सक्राइब, वो लाल बटन दबाते नहीं है, ऑल यू हैव टू डू सब्सक्राइब, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आप बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाइए, वी डू अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट एज वेल, आपको पता लगेगा व्हेनेवर यू आर लाइव और यू आर पुटिंग अ वीडियो, ठीक है, चेक आउट माय शॉर्ट्स एज वेल, तो काफी सारे कंटेंट है यार, डोंट वरी अबाउट इट, एंड लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को यार, एब्सोल्युटली हेल्प्स, ये अपना लाइक टारगेट बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द नंबर ऑफ व्यूज, तो लाइक कर दीजिए एब्सोल्युटली। लेकिन हम डेफिनेटली करने वाले हैं बात अबाउट टैक्टिक्स मोर एज वेल एज द लाइनअप्स। अगेन लाइनअप्स जो है कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो ज्यादा आज बात नहीं करें अबाउट लाइनअप्स, वी आर टेकिंग द कमेंट्स मोर। हाँ भाई, अननेसेसरी करते हैं भाई लोग, so, कुछ लोग, नॉट एवरीवन। पेटिशन भाई लिवकोविच इतना अच्छा लग गया भाई फरहान आपको? नाइस फरहान टू सी यू बाय द वे, इतना अच्छा लग गया आपको लिवकोविच? अच्छा है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट हमने तो देखा ही था डिनामो जाग्रेब में भी, बट इज ही दैट, क्या बोलते हैं, मतलब इज ही बेटर देन केपा, वुड यू से दैट? और आप बोलोगे केपा जैसा ही है, मतलब मैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन मतलब हैव यू सीन 30-40 मैचेस ऑफ हिम और 3-4 मैचेस? मैंने देखा है 4 मैच उसका, सच में बोलूं तो ब्रिलियंट था, बाय द वे ही वाज एब्सोल्युटली। क्रोएशिया अर्जेंटीना थॉट्स, चलो अर्ली थॉट्स है, देखो यार, वन वर्ड में बोलो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, द रीजन बीइंग ओमकार, बिकॉज द वे आई एम सीइंग इट इज दैट इट्स गोना बी अ, क्या बोलते हैं, मतलब यू कैन से इट बी अ बैटल, मिडफील्ड बैटल, लेकिन वही है कि यार क्रोएशिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, कर दिया, यस दे डिड इट अगेंस्ट ब्राजील, बट अगेन डूइंग इट, आई डोंट सी दैट हैपनिंग, तो इफ इट गोज डीप अर्जेंटीना हैव मोर ऑप्शंस, डी मरिया इज फिट, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है अर्जेंटीना के पास ज्यादा ऑप्शंस है, ऑफ कोर्स मेसी फैक्टर ऑलवेज, यार मैं कल भी दिखा था, वो दिख रहा है वर्ल्ड कप में, इट्स वन ऑफ दोस वर्ल्ड कप्स फॉर हिम, बट मैं एट द सेम टाइम ये बोल रहा हूँ, मेरा प्रेडिक्शन है अभी मिडवे थ्रू, दैट व्हाइल आई सी अर्जेंटीना गोइंग टू द फाइनल, मेरा गट फील है, नॉट दैट आई डोंट वांट समथिंग लाइक दैट, मेरा गट फील है कि यार अर्जेंटीना शायद नहीं जीतेगी फाइनल, इट माइट बी हार्ट ब्रेक एट द फाइनल, ये मुझे मेरा गट फील है, लेकिन हाँ I think the one which is going to win today's match might win the final. They might win the World Cup. Just a quick prediction किया मैंने. Do you still think Belgium exit was an upset? No. They have Croatia and Morocco in the group. No, it wasn't an upset. Belgium, actually, if you notice in the Nations League, in the friendlies, qualifiers, yes, काफी अच्छा कर रहे हैं, but they have not, मतलब एकदम उखाड़ के नहीं रखा है कुछ भी, ठीक है। अगेन दे आर मिसिंग जो लुकाकू 1.5 साल पहले था, अभी यार ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो आई थिंक बेल्जियम में एक्सपेक्ट नहीं करता, हजार्ड, वी ऑल नो, एज मच एज आई लव द गाय टू द कोर, ही इज फिनिश्ड, वी ऑल नो दैट ही इज नोवेयर क्लोज टू व्हाट ही वाज,
अकेला डिब्रोइना है, और प्लस उनके बहुत सारे इश्यूज चलते हैं हमेशा। बेल्जियम और नेदरलैंड्स यार, दे आर नोन फॉर इट इंटरनली, बहुत ज्यादा कहासुनी होती है। तो आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा अपसेट, लेकिन वही आई वाजंट एक्सपेक्टिंग टू बी आउट ऑफ द ग्रुप। मोरक्को हैज रियली सरप्राइज्ड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि मोरक्को ये भी नहीं है कि दे आर अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस चैंपियंस। इट वाज सेनेगल। मोरक्को फाइनल में भी नहीं थी यार, मोरक्को वाज नॉट देयर, इट वाज इजिप्ट। तो क्या बोलोगे यार? बिल्कुल यार। uh, crazy. At least my family was knocking on the door and all this stuff. I know that is happening. लेकिन anyway, again मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे क्विकली, जो सेकंड गोल था ना नेदरलैंड्स का, फॉर मी इट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द ईयर। मेरे लिए, मेरा तो मतलब साल काइंड ऑफ बन गया, एक मोमेंट दैट, मतलब कुछ भी हो रिजल्ट यार। अगेन रोनाल्डो फैंस जो भी यार एग्जिट हो रहे हैं ना, अगर ब्राजील फैंस, अगर आपकी टीम एग्जिट हो रही है, देयर इज समथिंग दैट यू टेक फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप पॉजिटिव। कीप दैट इन योर माइंड, ट्राई एंड लिव दैट वे, दैट्स व्हाट आई वुड से। भाई मुझे पता था, मैंने पोर्चुगल का 2 मैच देखा, जब भी कोई प्लेयर गोल मारता था, फर्नांडो सैंटोस कोई कॉन्फिडेंस, कोई सपोर्ट नहीं दिखाता था प्लेयर्स को। इंटरेस्टिंग पॉइंट। या इट वाज द लास्ट एटलीस्ट इंटरनेशनल मैच ऑफ रोनाल्डो। नहीं यार, बैंग बैंग होता है, मतलब आई अंडरस्टैंड टोटली होता है। मैं अभी अभी बोला सोल्यूशन, ट्राई एंड कीप दैट वन पॉजिटिव। भाई पोर्चुगल हैड अ लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स इन दिस वर्ल्ड कप ऑनेस्टली, इसलिए मेरा प्रेडिक्शन था पोर्चुगल विल विन द वर्ल्ड कप, लेकिन आई वाज प्रूवन रॉन्ग। फॉर मी सऊदी अर्जेंटीना जस्ट फॉर पर्सनल चॉइस, कॉज इज द मैच अर्जेंटीना रियलाइज दैट दे नीड टू बी सीरियस इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, एंड maybe it was a turning point, Aditya, in terms of a team. Please get Liao, man. That cross made me love him. I'm telling you, Pepe, as much as वो मुंह खोलकर बोल रहा है about Argentine referee, I know it's not the right time for me to also say it, but the guy should be realizing that he missed a chance. I don't know if he realizes that. It was a chance. बिनती आपसे प्लीज, आप प्रेडिक्शन में अर्जेंटीना को फेवरेट मत करो। नहीं नहीं, मैंने तो फेवरेट बोला भी नहीं है। फेवरेट फॉर सेमीफाइनल्स, फाइनल्स में मैंने बोला है यार नहीं जीतेगी, दैट मेरा गट फील है। You just heard it right. Maybe I'm wrong. I don't know. Let's see. Ranveer Singh, Diora bhai, thanks. I think France will win the World Cup again. Bhai, first of all, thanks for the super chat. Again, it's a gesture which counts more, but absolutely great. जो भी आता है channel में, it'll go back to the basically channel once I get it, to kind of improve things slowly but steadily. और हम improve करते आ रहे हैं, आप लोग देख रहे from the last 1 year. We have been trying to improve everything, and yeah, it's great. So, but again, Ranveer बोल रहे France will win the World Cup again. Well, Ranveer, as much as I like the super chat, आपको shout out है भाई, बिल्कुल। साथ साथ में मैं बोलता हूँ फ्रांस जीते नहीं वापस यार, कम ऑन यार। बोरिंग मत करा दो लाइफ इतनी भी। That's what I would say. अंकित भाई, be honest, you like Mukoko as a player. He is good, but he is not your starter. He is not your 90 minutes player week in week out. बहुत यंग है यार, अभी बहुत यंग है बंदा। भाई आई बिलीव इन हैंसी फ्लिक। हाँ, हैंसी फ्लिक जस्ट लाइक सैंटोस, थोड़े डिसीजंस वियर्ड थे इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में, जस्ट लाइक एनरिके एज वेल, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है देयर इज अ रीजन व्हाई मोकोको डिड नॉट गेट मेनी मिनट्स। I have to trust him to some extent, नहीं? तो it's saying me something. Last ever match तो नहीं बोलूंगा यार, come on. Last ever match at the topmost level, yes. Yeah, kudos to Morocco, the way they are playing this tournament will be a fairy tale ending if they end up winning it. By the way, भाई 7-8 मिनट बाकी है बस। सब लोग लाइनअप मैंने दिखा दिया, लीडा इट्स द सेम थिंग। आप शायद लेट ज्वाइन किया, बट अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। भाई सब लोग जो भी है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। भाई फतेह आने वाले थे, क्या हुआ फतेह? फतेह कहाँ हो? फतेह आने वाले थे। चलो, फतेह का मैसेज आ गया, ही जॉइनिंग इन 5 मिनट्स। चलो कूल है, दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग। तो भाई दिस इज द लाइनअप फॉर एवरीवन हु मिस्ड इट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम। और भाई सेम ही है, नथिंग सो सरप्राइजिंग। टैक्टिकली अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, आप लोग बोलिए सब लोग, विच इज गोइंग टू बी द 2 मेन टैक्टिकल बैटल्स जो करेगा अफेक्ट मैच के रिजल्ट पर। मैं तो बोलता हूँ इट्स गॉट बी, वन इज ऑब्वियस, सब लोग बोलेंगे एम्बापे वर्सेस वॉकर एरिया, मतलब वॉकर स्टोन्स कैसे करते हैं एम्बापे के अगेंस्ट। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ ऑल ऑफ अ सडन डेक्लन राइस। इफ डेक्लन राइस हैज अ गुड गेम, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इंग्लैंड आर गोइंग थ्रू। इफ डेक्लन राइस हैज अ गुड गेम, बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा आपको, लेकिन इफ डेक्लन राइस हैज अ गुड गेम, इंग्लैंड आर गोइंग थ्रू। क्योंकि जैसे मैंने समझाया आप लोग को, बेलिंगहैम विल बी आस्क्ड टू मेक दोज रन्स, कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अटैक भी करना पड़ेगा ना। तो बेलिंगहैम, शॉ, फोर्डन, जो लेफ्ट साइड है इंग्लैंड का, वो ज्यादा अटैक करेगी, तो डेक्लन राइस को ज्यादा ग्राउंड कवर करना पड़ेगा। हेंडरसन, स्टोन्स बिजी रहेंगे वॉकर के साथ बिकॉज ऑफ एम्बापे।
और डेक्लन राइस और रैबियो के बीच में, बहुत ही सरप्राइजिंग आप लगेगा. whoever has the better match arguably I think will win the match. डेक्लन राइस और रैबियो के बीच में, अगेन रैबियो या हर्नांडेस आप बोल सकते हो, लेकिन डेक्लन राइस और रैबियो हर्नांडेस का कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ फॉर मी, बिकॉज रैबियो और हर्नांडेस अगर फ्री हो जाते हैं और इतना डिफेंसिवली स्पेस मिलता है यू नो फॉर रैबियो एंड हर्नांडेस अटैकिंगली, तो भाई they can put in a cross for Giroud, or Giroud we all know the highest scorer for France. Or talking about highest scorer, I don't know if everyone knows it, Harry Kane can equal भाई वेन रूनी. वेन रूनी को इक्वल कर सकते हैं इस गेम में अगर एक गोल मारे तो दैट विल बी ब्रिलियंट. अगेन बेंच, मैं बोल रहा हूँ प्रेडिक्शंस बात जाते हैं, सब लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आप लोग predictions, do let me know what's your prediction. Mbappe, Walker, Griezmann, Cam, Chouamani, Bellingham. Interesting. 3-0 बोल रहे जावेज गेमिंग. इंटरेस्टिंग. मेसी 100% गोल्डन बॉल लिख कर ले लो मेरे से. दे कुडंट, या ये आते हैं भाई, विल कम टू इट. मेसी इज गोट. इंग्लैंड साइन अप आपको दिखाई रहा हूँ, एंड फायरवर्क्स आपका भी मैं लेने वाला हूँ कमेंट, ठीक है. फेयर इनफ, फेयर पॉइंट भाई. अगर जाता है मैच डीप, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे डीप, इट कैन बी एक्स्ट्रा टाइम, इट कुड बी द फैक्ट यार इट्स अ वेरी क्लोज गेम और कुछ ना चेंज करना है, तो चेंज करने में भाई फ्रांस हैव अ किंग्सली कोमन, दे हैव अ मार्कस थुराम, एडवर्ड कामाविंगा, ये आपके ऑप्शन है, और मोआनी, ये 4 ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ अटैकर्स. आई एम नॉट टू सुपर इम्प्रेस्ड विद देम. किंग्सली कोमन ओनली गाई जो मैं बोलूंगा, एंड कामाविंगा जो चेंज कर सकते कुछ. वेरएज इंग्लैंड में यू हैव अ जैक ग्रिलिश जो फाउल्स भी ले सकता है. वहां पर आपके सेट पीसेस कहां आएंगे? टॉक अबाउट सेट पीसेस, मार्कस रैशफोर्ड, ही हैज अ वेरी गुड सेट पीस, ऑलरेडी सेट पीस गोल मार चुके हैं इस वर्ल्ड कप में. रहीम स्टर्लिंग कमिंग बैक, हाँ, एज मच एज ही इज नॉट इन फॉर्म, रहीम स्टर्लिंग ऑलवेज हैड डायरेक्ट प्लेयर है, ही हैज अ गोल इन हिम, यू नेवर नो. Mason Mount, I would like to say Mason Mount being a Chelsea fan, absolutely. Callum Wilson और Mason Mount are direct players. They can take shots, they can score goals. तो आई थिंक काफी ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर्स है इंग्लैंड के पास कंपेयर टू फ्रांस, आयरॉनिकली. तो स्टार्टिंग 11 में बोलता हूँ फ्रांस की तगड़ी है ज्यादा, लेकिन बेंच इंग्लैंड की तगड़ी है ज्यादा. विड यू अग्री और नॉट? लेट मी नो इन द चैट. यहाँ पर आते हैं, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं अगेन आई स्टिक आउट माय नेक एंड से भाई इंग्लैंड जस्ट अबाउट विनिंग दिस गेम, एंड आई फील इट्स गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम. और बिकॉज इंग्लैंड का बेंच ज्यादा तगड़ा है, मुझे दिखता है दैट हो जाएगा, बेंच से हो जाएगा. रैशफोर्ड, मे बी इट कुड बी रैशफोर्ड, माउंट, वन ऑफ देम, यू नो, फ्रॉम द बेंच दे विल कम एंड स्कोर इट, और होगा 2-1. आई थिंक गोल्स तो आएंगे इस गोल में, इस मैच में, तो आई एम गोइंग 2-1 इंग्लैंड, 2-1 फ्रांस. बोल रहे आयुष, इंटरेस्टिंग. डेम्बेले को रोकता है, एग्जैक्टली. लूक शॉ और मगवायर अगेंस्ट डेम्बेले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली. ग्रिलिश विल कम ऑन एंड चेंज जस्ट लाइक रैशफोर्ड मे बी, and maybe hopefully Mount as well for my sake. England 3-0, 3-1 to England. Wow, 3-0 England तो बहुत ही confident है यार. Messi and France will join Ronaldo. Okay, तो I got a prediction. हाँ यार, देखा, इट्स टोटली आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन इमोशनल है अभी, ठीक है, मतलब दे आर ह्यूमन एज वेल. इंग्लैंड विनिंग और पेनल्टीज 4-2. वाओ, पेनल्टीज में इंग्लैंड जीतना वो हुआ नहीं है. बाय द वे, मैंने भी शायद अर्ली प्रेडिक्शन मेरी वही थी एक्चुअली. लीडा, यू राइट. Somebody's gonna get injured, it's gonna heat it. Oh, I hope not. I hope not. England win on penalties. Even if Walker gets smoked by Mbappe, let's not forget Walker is oldest player in England squad. He's older than Henderson, I think. Also, Walker just came out of surgery. Hasn't played to full potential. In fact, in Daniel, Walker का game against Senegal wasn't 100%. ये मुझे लगा था. That's right. And by the way, I think they are of the same age, Walker and Henderson. लेकिन anyway, I know what you're saying. The match is going to be lit. Absolutely. भाई सब लोग उसी बात पर, सब लोग लाइक कर दो, और दिस इज द टारगेट जो आपको दिख रहा है मेरे नीचे, दिस इज व्हाट. एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं, एंड या डू लेट मी नो यार, अगर पीपल आर जॉइनिंग नाउ, दैट गोल्डन बूट क्या लगता है, मेसी और एम्बापे? मेसी इज गोइंग वेरी क्लोज यार, मेसी और एम्बापे गोल्डन बूट, एवरीवन. अगर फ्रांस बाहर होती है तो मेसी हैज अ बिगर चांस, हायर चांस टू गेट टू गोल्डन बूट, या आप बोलोगे रैशफोर्ड आकर करे गोल्स फ्रॉम द बेंच, हु नोस. इंग्लैंड प्रिपेयरिंग फॉर एम्बापे एंड जिरू, बट डेम्बेले एंड ग्रीजमैन विल कम आउट ऑफ सिलेबस. मैं बोल रहा हूं ना, ये याद रखिए आप, रैबियो एंड ग्रीजमैन, देखना आयुष, रैबियो, ग्रीजमैन और थियो हर्नांडेस ना, उससे आएगा एक गोल फ्रांस का, एंड देन यू विल हैव बेसिकली इंग्लैंड स्कोरिंग, एंड देन इंग्लैंड विल गेट द विनर. तो पहले फ्रांस स्कोर करेगी आई फील, एंड देन इंग्लैंड विल गेट द विनर. इट कुड बी
like I said, Rashford or Mount of the bench. क्योंकि Mount has got a lot of hate recently. I hope he changes that anyway. Luke Shaw, Maguire cannot stop Dembele combined. इसलिए मैं बोला राइस हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आज के मैच में. डेक्लन राइस, यस, इट्स नॉट काइल वॉकर, इट्स डेक्लन राइस. Declan Rice can be the second line of defense for every position. Okay. Mbappe golden boot, Messi golden ball. हाँ, I'll go with that as well. भाई शुरू होने वाला है any moment. It is going to start and of course by everyone again do not forget to like, share and subscribe और बने रहना end तक. We will be joined by Fateh in just a couple minutes. Absolutely. और मजे मजे लूटो बस मैच का. This is going to be an epic clash for me. This is going to be भाई सबसे क्लोज मैच in terms of minute by minute. क्रोएशिया ब्राजील बहुत क्लोज था in terms of minute by minute entire टाइम के लिए. ये it'll be one level above. And yes, नेदरलैंड्स अर्जेंटीना ड्रामा तो शायद नहीं मिलेगा, बट देखते हैं. हैरी मैग्वायर गोट, ओ माय गॉड. अंश डाविंची, नाइस टू सी यू. अभी देखना शुरू किया फुटबॉल, क्या करूं नॉलेज के लिए? भाई आप देखो फुटबॉल जितना आप देखो बट बेटर है. आप अगर फीफा खेल सकते हो वो खेलो, अगर फुटबॉल खेल सकते हो वो खेलो. अभी जस्ट एक्सपोज करो अपने आप को, अपने आप ही आएगा समझ में. अगेन मुझे जब मैं पहला मैच देखा था 94 में विद मैराडोना, विद द Dutch greats as well, I did not know that football का ABCD. Then 98 वर्ल्ड कप केम. 96 में भी यूरोज में देखा था, लेकिन जस्ट अबाउट नॉकआउट स्टेज में. 98 वर्ल्ड कप में पूरा देखा हूँ. तब से मैं सीरियसली लेने लगा और समझ में आने लगा, बिकॉज साथ साथ में 99 में मैं फीफा भी खेलना शुरू किया था. फुटबॉल भी आई जस्ट स्टार्टेड इन लेट 90s प्लेइंग फुटबॉल. भाई शुरुआत में क्या हुआ है? I think it's England for now in terms of the possession. Yeah, it is the biggest match on paper. Yes, box office match है बिल्कुल यार. इंग्लैंड फ्रांस. अगेन मैं थोड़ा हिस्ट्री में बताया नहीं हूँ फॉर पीपल आर इंटरेस्टेड. इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस हो चुका है भाई रिसेंटली 2 बार इन लास्ट 15-20 इयर्स इन टर्म्स ऑफ मेजर टूर्नामेंट्स. इनफैक्ट एक बार तो बहुत ही एपिक मैच था, यूरोज में था. और दिस वाज यूरोज ऑफ 2004, जहां पर Beckham scored and then Zidane came and got the winner if I remember for free kick. But 2014 में भी I think these guys were in the same group if I remember right. Pretty sure. नहीं? Okay, Fateh just joined. भाई काउंटर फतेह, क्या हाल है भाई? Yo, bro, how are you? क्रोएशिया पहले वही आने वाला है. I know that. Yeah. I told you, like you guys were saying Brazil, but you were right about Morocco. I mean, I wasn't taking them seriously, but wow. I mean, but I have to check out when I can say, यार भाई Fateh probably was the most confident in saying by Croatia 100% जाएगी. मतलब he yeah. was so confident. So you have to give it to Fateh, absolutely. Yes, absolutely. देवेश बोले big up. अभी क्या लग रहा है इंग्लैंड फ्रांस लाइनअप सेम ही है, नो सरप्राइजेस, लेकिन ऑलरेडी No आई एम सीइंग दैट. surprises. I have a feeling that England will do it. Like I think we'll see an upset. France to get the first goal, but England will fight back. Either they यू win आर two स्टिकिंग विद one. दैट? नो मतलब तो बेसिकली यू आर सेइंग इंग्लैंड वर्सेस मोरक्को एंड अर्जेंटीना क्रोएशिया. Yeah. Oh my. ओए भाई साका विन द बॉल एंड Upamecano ने, was it Upamecano or was it I Chomini? think he should have Chomini taken a lost the shot ball, there. bro. I That think he was should have taken. good pressing by Saka. Yeah, Like absolutely. Harry Kane playing his right winger in this moment. Nice ball by Harry Kane. मैं बोला था Harry Kane drop करेगा ना, तो that is where Foden and Saka will have the space that they'll have to cover. And वही है. I think you know what, Fateh, मैंने क्या बोला ना इस मैच में? People might be surprised, लेकिन मैं बोला Foden is a shot but nicely blocked by Varane. I think मैं बोला Declan Rice needs to have a good game for England to win the match. Win the match. Yeah, absolutely. No, I mean, look, Because Ankit, the way the French are, they're not going to just surrender their title, very easily. of I think course. all of these English boys will have to probably be at 110%. But I somehow just feel like they're ready. Like for once they're ready. They're there to take the big leap. MJ is counting. But by the way, everyone in the chat, the way things have gone, पहले 3 मिनट में क्या लग रहा है यार? It's almost like England playing the Dutch way. I know not great memories कल के बारे में, लेकिन
But in you should terms be of, proud, though, Ankit. The way they came back, the way हाँ यार tactics changed, बिल्कुल. the way Van Hal, I really hope, is he retiring? Like, what is the news? Like, you will know. या probably, but at least एक break तो लेगा 100%. But लंबा break I think लेगा he थोड़ा. should stay on with the Dutch team. I mean, the way he changed to No, 4-4-2 वो तो with decided है. Messi, Ronald Koeman is coming. It was already announced. Ronald Koeman. हम्म, वो तो He हो रहा did है. actually. But He did start. He did lay the groundwork of, because when he was the coach before going to Barcelona, his Dutch team हाँ, was he doing was the so one well. exactly. He was the one और who he brought them did back. quite But decent in that period, short period. yeah, that Nations League, I think they was he Finals. there? Was he the I think he one? was there. Hmm. Yeah. Pretty sure he was there. But anyway भाई जहाँ मैंने एक और चीज बोला है फतेह इस मैच के बारे में. That like I said, Rice now I thought the fact is itna focus will be on Griezmann and Mbappe that I feel Yeah, yeah, yeah. Rabiot might be the important guy. Might be the important guy. Yeah, yeah, Because if absolutely. he's left free, he has a left foot, he can get you the crosses for Giroud as well and Theo Hernandez. Yeah, yeah, You don't know. absolutely. I think we keep talking about, everybody's talking about Mbappe. People haven't even been talking about Griezmann, but I think Rabiot has sort of flown under the radar. His good form for Juve has also flown under the radar. But Yeah. the way it's been, फ्री किक एक सेकंड बोल रहा हूँ भाई. भाई इंग्लैंड का फ्री किक था बट वेल डिफेंडेड हियर. फतेह आप स्पोर्ट्स 18 एचडी में देख रहे हो ना? yeah, yeah, 527. हाँ सेम सेम दिव्यांश आप Yeah, सुन लिया 5:30 अभी 5:31. yeah. दैट्स माय टाइम स्टैम्प दिव्यांश. Is that offside? They gave offside? Man, it's Yeah. still raining in Bangalore, bro. It's raining from like Really? last 30 hours almost. Wow. Is it cold? Like, दिसंबर का महीना है सोचो. we are in winters here in Mohali in Chandigarh. यहाँ भी विंटर ही है. यहाँ बैंगलोर वाले विंटर नॉट दैट विंटरी लेकिन Yeah, इट वाज ऑलरेडी कोल्ड इट इज yeah. कोल्ड. बट बारिश कहाँ से आ रही पता नहीं यार. नो आइडिया. आई थिंक इट्स अ साइक्लोन That's, और समथिंग. yeah. डेम्बेले कैन बी मैसिव. भाई डेम्बेले जैसे हमने ब्राजील वाले मैच बोला था ना एमशे दैट रफीनिया हैड टू फिनिश वेल. डेम्बेले का वही सीन है. डेम्बेले खेलता अच्छा है भाई. वो प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड. आई स्टिल हैव माय डाउट्स. आई डोंट नो फतेह वेयर आर यू ऑन उस्मान डेम्बेले एज अ प्लेयर यार. I'm with you. I'm with you because I think we played him with Inter, and his pace was so. करेक्ट. ओहो आउटसाइड ऑफ द बूट यार. एम्बापे का नाइस पास. भाई ये Was that आउटसाइड ऑफ your द बूट भी कर सकता है. रिमेंबर was that your boy Giroud? भाई दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट असिस्ट ब्रो एज इन द वे दैट ही ट्राइड दैट. My जियो God. सिनेमा 30 सेकंड बिहाइंड. ओ साइक्लोन है वही मैं सोचा ही. Oof, that फतेह भाई battle आप was. तो किंग्स 11 से हो. पंजाब. Yeah, 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 yeah. But I don't follow now. I follow the first two seasons when Stuart, what was his name? Marsh. Which Marsh was it? हाँ मार्श या शॉन मार्श. Sean Marsh, and he became my favorite because we were the poorest franchise, but we had three Aussies, Luke बेसिकली former अरे Shark. सही बोलो यार. फतेह भाई प्रीटी जिंटा यार. कम ऑन you Preeti can Zinta, say it. Come on, we absolutely. all know. I used to go. I used to get very good tickets the first two seasons of IPL, and Sean Marsh was on. There were three Aussies. Basically, they didn't have any money to for foreigners, so there ब्रेटली. was Luke Former back, Sean Marsh, and there was one other guy, हाँ ब्रेटली Australian. बाद में आया था शायद. Bentley तो बहुत बाद में आया था. I'm talking about the first two seasons, and that first season, Kings 11 got to the semi-finals. हाँ हाँ. इंटरेस्टिंग एमशे. इंटरेस्टिंग कमेंट. भाई जीरू जीरू एंड हिज स्कॉर्पियन किक्स एंड बाइसिकल किक्स ब्रो. एज इन जीरू इज अगेन मतलब पीपल बहुत बार बोलते हैं भाई. दे कॉल मी समटाइम्स जीरू एज जीरू ऑफ कम्युनिटी. मैं बोलता हूँ जीरू इज नेक्स्ट लेवल ब्रो. ही इज अ गोट. लाइक एट सम टाइम यू नो दैट यू प्रेज हिम. एट द सेम टाइम यू डोंट रियली प्रेज हिम एज मच. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जीरू probably He's the had a fact new is yeah lease he of might life. have his moment. Yeah, 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 absolutely. And that's something from his head. I लेकिन was, are you sensing like a mistake because ये देखो अभी अभी तक you cannot say KG लेकिन this is a very difficult match ना. मतलब like yeah, for yeah. like बहुत ही difficult to call who's going to win the battles no. तो are you seeing a mistake getting a goal? Or I'm saying there will be no mistake, and we go to a nil-nil penalties type of a. नहीं 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 goals तो होंगे यार. come Oh, on. ओहो Dembele right footed cross bro. Dembele again भाई just like Joao Felix हम देखे थे आज. The guy can actually cross with both feet. what do you think But about but CR7?
या आई वाज कमिंग टू दैट क्वेश्चन टू यू एक्चुअली। मैंने तो भाई 2 घंटे से, इनफैक्ट 3 I घंटे की was, वो स्ट्रीम थी, यहाँ भी आधी घंटा वही बात किया है। I आई have वुड a लाइक friend पीपल लाइक who's वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। Yeah, I have a friend who's like really he really follows Portugal and he's always been, like he became a CR7 fan somewhere in 2007, the season when AC Milan won the Champions League. They had that semi-final अच्छा। with Man U. So, he was a fan tapse. So he's not somebody who, latest. हम्म, So he was telling me, he was like, like there is this one school of thought that okay, the coach will go, but Ronaldo still might carry on till the next Euros because it's not set in stone that he's going to Saudi Arabia just yet. So he was like, and there's been some denial, ओके, and if he आई finds a डोंट थिंक club, सो, लेट्स सी। no, he said that if he finds a club because the January window is open till 30th Jan, so he was like, if he finds one, he might even plan to stay. So I was like, but that money that's being talked about in Saudi Arabia, that's too good to turn down at that age. लेट्स सी यार, अनदर क्लासिक मैच, बट व्हाट डू यू थिंक द वन दैट हैपेंड मोरक्को के लिए? I'm very disappointed in Portugal though. I think this was a game that they I think Fernando Santos, bro, the way that he didn't even use Bernardo Silva as an attacker even once for that entire game. Can you for believe the it? entire game. And I just felt like the kind of body language that the Portuguese had, the flip flopping. I don't think they needed all that. I think they had Exactly, enough very well talent. put. Half They time के had बाद में I enough don't know what talent to happened to them closer to half yeah time. they had enough talent to sort of Nice cross. oh Goal, goal, oh man. Giroud with a low header. Bhai sahab. Pickford was there, right there. अच्छा, by the way, everyone watching, do not forget to hit that like button. लेकिन साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, अभी अभी मैंने पोस्ट किया, I forgot to post it on Almighty Blues FC के community में. तो I've just posted it on my community page on Almighty Blues FC. If you can just take a second, like that community post भी, and come back in just a second, it'll be brilliant. That's Almighty Blues FC के community में posted, as well as stream को like करना मत भूलना. Let's get to the like target fast. लेकिन हाँ, coming back to that game ना, मतलब देखो, एक चीज होता है that you are confident in your squad and that's why you don't change your tactics as much early. लेकिन in terms of the way you're playing, आप मतलब body language, like you said, the body language changing is an issue for me. yeah. और I mean, I feel like they हम्म, had enough talent to sort of hurt Morocco more than the way like whatever they did. I mean, I feel like Liao should have. Yeah, I saw those comments by Pepe. Yeah, salty, that he's was being salty. yeah. But वो ये मतलब भावनाओं में बह जाते हैं ना, कभी but कभी I होता think है. you have to understand that the way this World Cup's gone, that bhavna is understandable. Like even Messi and the Argentinians yesterday, and the gamesmanship and the things that say the Dutch were doing. I mean, I think it's all part of sport. So I don't think we should read too much into their comments or whatever they say in the heat of the moment. आई Yeah, थिंक even ब्रूनो एंड उसने बोला दोनों अर्जेंटाइन रेफर, यार वही है, मतलब इट गिव्स लाइक बीइंग देम, स्पेशली आई अंडरस्टैंड पेपे का लास्ट वर्ल्ड कप मैच है, प्रीटी श्योर, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया, ऑलरेडी यार लोग जबरदस्ती रोनाल्डो मेसी को साथ में रिलेट कर देते, ऑल्दो है नहीं, yeah. ठीक है, बट स्टिल दे अब मौका मिल गया ना लोगों को उसके बारे में बोलना. ग्रीजमैन डेम्बेले बॉलिंग राइट नाउ, लेकिन हाँ, आई थिंक इट्स I, अबाउट इंग्लैंड कीपिंग अ मिड ब्लॉक एंड द मोमेंट दैट दे गेट अ बॉल, आई थिंक इंग्लैंड के पास है विंगर्स pace, yeah. टू काइंड England ऑफ started well. I think England started very well. They had more हाँ, of the ball, and now France is, करेक्ट, और वो slowly. एक्सपेक्टेड भी था फ्रांस विल डोमिनेट पोजीशन, नहीं Yeah, yeah. इसमें आई वुड नॉट एक्सपेक्ट इंग्लैंड टू डोमिनेट पोजीशन, the kind of footballers Theo Hernandez, Griezmann, even Rabiot, like he likes to play on the ball, See, this is again not. by Declan Rice. But Did you all see that? Why there was a reason why I said Declan Rice. Look at the ball won by Declan Rice against Rabiot. और वही इज द बैटल व्हाट आई सेड, राबियो डेक्लन राइस में जो भी बेटर गेम होगा ना, मैंने तो क्लियरली बोला फतेह, दैट माइट एक्चुअली टेक द गेम. yeah, 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 yeah. But then, should Harry Kane not have shown a little bit more of hustle to get या in? I बट ही mean, डिडंट हैव सपोर्ट, आई थिंक व्हाट ही वाज वेटिंग फॉर इज सम सपोर्ट, जो था नहीं hmm. उसके पास में. प्रॉब्ली आशीष बोल रहे वेल सर, आई हैव अ क्वेश्चन, लोग आज के रेफ को ब्लेम कर रहे हैं, मेरे से वो रेफ ने कितना अर्जेंटीना मैच देखा होगा एज रेफ, तो सर
भाई रेफ को आज ब्लेम करना तो मतलब बनता नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ मतलब But आई डोंट yesterday, रिमेम्बर। कल कल का 100% ब्लेम करो, कल तो 100% रेफ को yesterday I ब्लेम felt करो। was really badly managed, and we knew the referee. Like it was. It's very weird that he was given that game because he's हाँ, done such stuff पता है before as उसको, well. मतलब काफी हाई प्रोफाइल मैचेस ला लीगा में किया है, प्लस जनरली भी ही इज अ फेमिलियर फेस एंड वाई। देखो जब भी फेमिलियर, अरे नाइस रैबियो दिस टाइम विंस द बॉल अगेन भाई। रैबियो राइस ये शॉट ले भाई, शॉट लेना चाहिए था रैबियो को पहले, Ooh. नहीं मिस्टेक, रैबियो शुड हैव टेकन अ शॉट भाई। अगेन पीपल कम ऑन, हो जाए भाई एक फॉर वंस अंकित अंकित ओपी भी हो जाए इन द चैट यार। मैंने क्या बोला भाई, रैबियो राइस यू जस्ट सॉ दैट मोमेंट। बट एनीवे, देखिए कमिंग बैक टू द रेफरी ना फतेह, आई फील Hmm. रेफरी का आज आई थिंक पॉइंट आता ही नहीं अगर Hmm. पेपे और ब्रूनो If they फर्नांडिस नहीं hadn't बोलते। said all that, but they हाँ, they got very frustrated figures anyway. I saw the way the Portuguese were after about the halfway mark. Bruno एंड पेपे Fernandes, हिमसेल्फ मिस अ चांस ब्रो। yeah, Pepe, and then got that kiss, which was very weird. I mean, he didn't react to that at all. But हाँ, you know, yeah, but I mean, yeah, they were lackluster. I think Portugal, and it's a bit weird how. But then credit to Morocco, that they managed to kill their game in that manner, and everybody's now, like Sofian Amrabat is now everybody's darling. But we've been seeing him, we've been seeing him do या this for नहीं, quite आज some तो time. प्रॉपर इनफैक्ट द गाय हु केम लेफ्ट बैक ना माजरावी वाज Oh, मिसिंग एंड द my गाय हु boy, yeah, केम yeah, एंड कवर्ड फॉर हिम ही गॉट द असिस्ट। assist, एननेसरी यार, मतलब ही इज अ नॉट अ ग्रेट फॉर्म में, मतलब ही आल्सो हैड अ लीप लाइक रोनाल्डो। तो फनीएस्ट वाज देयर सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर भाई छेदीरा, मतलब फॉर yeah. मी इज द वर्स्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप। Yeah, he doesn't seem the body doesn't seem of हाँ, of a कॉन्फिडेंट but ही नहीं बंदा। yeah, और रेड कार्ड ही गेट्स लाइक 2 येलोज इन 2 मिनट्स। 2 minutes. Yeah. That was probably harsh, I think, but at least the first one. हाँ, फर्स्ट वन इट वाज आउट ऑफ नथिंग, बट एनीवे साका विद द बॉल, वॉकर साका भाई अगेन वॉकर। अब देखो भाई, वॉकर हैज बीन प्रॉपर स्पेस है यहाँ पर एम्बापे के लिए। एम्बापे नीड्स टू जस्ट गो रन एट हेंडरसन भाई, हेंडरसन एंड एम्बापे पता है। लेकिन अगेन रिमेंबर राइस, राइस इज स्टिकिंग टू एम्बापे। राइस, Ooh, अब राइस ooh. ने मिस कर दिया है। राइस इज नॉट डन वेल इन द मोमेंट एंड नाउ कम्स डेम्बेले। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर फ्रांस। यहाँ पर चौमनी को दे, चौमनी विल गिव इट टू, Goal! what a goal, bro! Germany, what a belter, bro! It's midfield. Out of all the people, Aurelian Germany scores the goal, and what a belter! And I remember Rice made a mistake. Rice committed for the tackle on Mbappe. I think he shouldn't have gone for that. Commitment नहीं करनी चाहिए थी उसको. Man, don't tell me it's again going to be a Croatia. Fateh will say that again, Croatia, France final, considering he's a Croatia, backer. Absolutely, ये but क्या भाई, ये क्यों हुआ उस? हाँ यार, होता है ऋषभ, दैट्स let's देखिए, बैड टाइम्स कम फॉर एवरीवन, ऑफ कोर्स बीइंग yeah, रोनाल्डो यू फील सॉरी फॉर हिम। भाई राइस, हाउ डिड एम्बापे बीट राइस? बिल्कुल it was beautiful from Mbappe though. भाई, दिस वाज, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन चौमनी का शॉट और वो भी, man, मतलब I think the only mistake which came about in that moment was Rice committing on Mbappe. क्या that was the only mistake? ऐसा कुछ outright mistake नहीं था, मतलब again they didn't close down Chouamani, but I don't think anyone expected, did we, that Chouamani will score. Pepe was so salty, absolutely. What a bloody goal! That is stunning. ये क्या है हमशे यार? भाई look at the French supporters, bro. Crazy, crazily. Again, मैं But तो openly बोल रहा हूँ, I don't want France to win also because I don't want यार yeah, तीन 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 वर्ल्ड कप जीते भाई फ्रांस। yeah. We'll be okay with the Morocco Croatia final, right, Ankit? आई एम ओके, आई एम न्यूट्रल अभी, क्योंकि मेरी टीम तो ऐसे भी बाहर है। हाँ, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ इंग्लैंड थोड़ा सा, बिकॉज तीन तीन चेल्सी प्लेयर है, Hmm. जस्ट फ्रॉम दैट Oh, by the पर्सपेक्टिव। way, I don't know whether you guys know about our Inter Milan's record having a player in the final since हाँ, आई 1982. सॉ दैट भाई, Yeah, कंग्रेचुलेशन यार, येट अगेन, आई yeah. थिंक कब से 1990 से ना, कब? 82. 82, From वाओ, ब्रिलियंट। 1982 till 2010, we were the team that always had a winner एवरी, every final. And then because वाओ, in 2010 Snyder lost, that's a free kick.
That has ओहो, to be a दैट्स अ free फ्री kick. किक, दैट्स इट्स अ गुड पोजीशन में फ्री किक है। राबियो ने भाई अगेन देखिए राबियो ने मिस्टेक किया है। द काइंड ऑफ गेम दैट राइस मेड अ मिस्टेक दैट लेड टू द गोल आई फेल्ट इन अ स्ट्रेंज सेंस। राबियो has made this mistake, will it lead to a goal? Let's see. uh, So, यार ये क्या you कमेंट है समझ में नहीं आया मुझे। कोई नहीं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अगेन भाई। सब लोग डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम अगेन, सब्सक्राइब wait. करिए आप लोग नहीं किए तो। लेट्स गेट टू Last आवर time I टारगेट यार। was on, Messi's goat said that what did Messi's goat say? He was talking about Brazil, I think, that they were the best. So फ्रांस के बारे में बोल रहे थे कि दे आर टू विन लास्ट टाइम क्या? अच्छा मुझे याद नहीं I यार। don't know. When Chinmay was also on, and I think Chinmay must be sweating right because याद नहीं मुझे। hardcore Indian supporter. But but I think there's a lot of, like I said, like my prediction was France will take the lead, England will come back. यार ये मेरा आवाज चली गया। यू वांट टू टेक दिस अगेन आकाश इज। Yeah. I mean, I think, in the heat of the moment, people will say those things. So it's okay. Like yesterday, what happened with Messi and not. There's just so much passion, and the way the competition has been, every game has been so well contested that, yeah. So I would not read too much into Pepe's comments. I think people say that you get those bites and here comes the free kick. Oh, straight. ओहो भाई ये एक और चीज है। बाय द वे शाउट आउट टू अनुराग माझी यार। England, are they missing a free kick taker? Because Hmm. remember, Madison is there in the squad but not been playing. Are they missing that? I don't know. फतेह कहीं ना कहीं मुझे लगता है Rashford, अगर if things don't change, Rashford might come on earlier than expected. One, because he has that ability to get in behind. Second, because he has a slightly more height compared to Foden. Thirdly, because of the set piece. So I think that you Hmm. might see second half में जैसे Ronaldo आए थे in the 50th minute around, so I think Rashford might come. Not comparing but just saying. अनुराग बोल रहे हैं hope Messi will redeem all the upsets by goats. देखते हैं मतलब अगेन इट्स अ वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स अगेन फतेह has been there यार जस्ट लाइक us as in we've been talking like 1990 से हम देख रहे हैं भाई वर्ल्ड कप्स Yeah, फतेह। interestingly, Ankit, in 1990 also, the Argentinian team that lost the first match to Cameroon, then went on to, go to the final. That team was very similar to this current team. Like they had that one guy, and they were very physical. And this Argentinian team also, I think they spend about 5 minutes playing football. Like if Messi can get a goal in the oh, here comes a Oh, Hurricane! That should have been a goal, bro. Come on. what? Just about, भाई. Loris पता नहीं कैसे he saved it in the end. But what a ball, bro. Harry Kane के लिए. Who was it? Luke Shaw who played that ball. नहीं Lucius, नहीं that's हेंडरसन no. होगा भाई क्रेजी बॉल बट या एज एन वही है They're a very तो physical team. So हम्म, it's all fun and games, but I just wonder. I mean, see, I think I expected a bit more from the Dutch, even at the start. Like हाँ वही है वी रिएक्टेड rather than act proactive yeah, it मतलब was it was a tactically reaction. I think we Yeah, got it wrong compared to yeah. The start really, I think the first 70 minutes were really wrong. But can Croatian midfield actually sort of really dominate? I mean, I don't know, like they got midfield bypassed by they Japan. they definitely can. They Kovacic definitely. arguably has had his best game ever for Croatia. Yeah, absolutely. And it's just about those three guys. I mean, I again, are Paredes and DePaul just going to spend their time trying to beat up Modric and Brozovic and Kovacic? But if those three get into the हम्म, game, then I think why not? Why not? Croatia, हो and they सकता है have that mentality. लेकिन मैं ये पूछ रहा था फतेह क्विकली गोइंग टू द नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर एक 1-2 बिलियन देख रहा है जस्ट अबाउट काइल वॉकर ने बचा लिया है देखिए मेरा ये क्वेश्चन है फतेह पीपल सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा वेयर आर यू ऑन इट येट मतलब मैं देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट वन इज दैट वर्ल्ड कप See, विद मोस्ट अपसेट्स मोस्ट ड्रामा और वर्ल्ड कप विद बेस्ट क्वालिटी एंड ड्रामा क्वालिटी ड्रामा मेरा तो 2006 अभी तक आई डोंट नो वेयर आर huh? यू I'm see again, if your team is in it and they are winning, that becomes automatically your best World व्हाट अ Cup. Like सेव ब्रो if you ask a Spanish fan, what's your best World Cup, he will say 2010. For everybody else, it would be about Vuvuzelas हाँ and 2010 मैं whatnot. तो बोलने नहीं वाला आपको पता है क्यों Yeah, I would not say it either. Like I would not say it either. So. But so yeah, I think so. I think this has been a great World Cup. I loved the atmosphere.
Yeah, absolutely. Bayern are there with us. So the hope is Hmm. that if Argentina and England make it, then Bayern's streak is broken because we are guaranteed a player. Bayern are as of yet not guaranteed a player. So you Hmm. know, so Interesting, interesting. yeah, have to Sir, watch. Portugal players needed not pass ball too much to Ronaldo at last minutes. I am seeing football my last World Cup. अरे भाई एक सेकंड देखिए football is more about just a player as much as he's a goat. Secondly, I don't think we can blame the players in particular. I felt we should be blaming the manager. Such way, if you have to blame. I don't even agree with one nation, one election. Like why? Like let the states have their separate अरे issues and वो let तो मैं there be नोटिस भी नहीं किया. yeah, let there be separate issues for the center. I mean, we should be very proud of our 75 years. Like we've achieved a lot. India Okay, is by Harry Kane doing brilliantly. By it is a foul. Come on, it is definitely a foul. By that was a foul. अब वो thing is because it started outside the box, वो penalty नहीं होगी और VAR नहीं देखेगा. In my personal opinion. Come on, bro. no, यार that's a पीछे से foul. मारा है मेरे को ऊपर में क्या नो he's hit the calf of Yeah, Harry yeah, yeah. Kane. So that's a foul. And That's is a that a foul, but penalty just too? outside, just outside. It could be inside. There is a check that could be a penalty. Yeah, but I think it's not on the line. It's just outside. I feel ये फाउल देना चाहिए था. फ्री किक होना होना चाहिए था. बट लेट्स सी. आई नो No, इज इट अ पेनल्टी पीपल. भाई ऊपर पे कहो व्हाट वाज दैट. बट भाई ऊपर ऊपर पे कहो व्हाई डिड ही हिट. मतलब थोड़ा सॉफ्ट टैकल था. बट लास्ट में जो लात मारा ना क्यों मारा वो. it just happens. Oof. This is going to be a very important moment for England. I think its benefit is going to go with the original decision. I feel clear and obvious वाला चीज होता है ना. I don't know how will they look in the World Cup. Okay, let's see Suki. England fans hoping against hope. भाई सब लोग बोलिए आप लोग की क्या लग रहा है. He's अरे not अनुराग given अगेन थैंक्स यार. अरे नॉट अ पेनल्टी ब्रो. नॉट अ पेनल्टी. मैं बोला ना बाहर है. लेकिन सी दैट्स द वर्स्ट पार्ट. दे डिडंट इवन गिव अ फ्री किक. लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट वार. it. इतना Yeah, बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है. yeah. मतलब इट इज अ क्लियर किक. इट इज अ फ्री किक. इफ इट्स आउटसाइड द बॉक्स एटलीस्ट यू रियलाइज चलो हमने ये गलती कर दी. फ्री किक दे दो भाई मेरे. इट वाज अ गुड पोजीशन टू गेट अ फ्री किक आल्सो राइट. Yeah, absolutely. अनुराग बोल रहे मेसी ईयर फाइनलिस्मा कोपा अमेरिका वर्ल्ड कप नेक्स्ट. बैलन डोर एज वेल. ऐड बैलन डोर. गोल्डन बॉल If तो he, दे. if he wins the World Cup, then he gets the Ballon d'Or. But again, just the way the Brazil game was, I would just say that like don't take Croatia to be. हाँ मेरा प्रिडिक्शन आई डोंट नो मतलब ऑब्वियसली मेरा प्रिडिक्शन हैज गॉन टू द सी. आई डोंट नो वाटर ओशियन वेयर. लेकिन मैंने प्रिडिक्ट किया था ऑब्वियसली वांटिंग नेदरलैंड्स टू विन वो चला गए. एंड प्रिडिक्टेड पोर्चुगल टू विन वो भी चला गए. अभी एज थिंग्स स्टैंड ना मेरा प्रिडिक्शन ये है. अभी लग रहा है मेरा थर्ड प्रिडिक्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि मैं बोला था इंग्लैंड जीतेगी आज. और No, no, मैंने have बोला था faith, आज have जो भी faith. जीतेगा ना दे विल गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप See, it's very interesting. विद अर्जेंटीना फाइनल्स. Suki had an interesting comment about Morocco. Morocco, they'll have a lot of fans in the stadium. There is a sizable Moroccan population in France, so there is that added element for Morocco. Spain, Portugal, France. They've had that colonial era history, so there's a lot that the Moroccans are going to fight for. And if you saw against Spain and और एक और Portugal, चीज फतेह ऐड करूं वहां. huh, हम भूल रहे हैं. पीपल आर सेइंग दैट कम ऑन पोर्चुगल शुड हैव वन. पोर्चुगल शुड हैव वन आज. पीपल आर फॉरगेटिंग द वर्ल्ड कप इज हैपनिंग इन कतार. yeah, कतार लोकल पीपल सब लोग मोरक्को को सपोर्ट कर रहे थे आज. yeah, and Moroccan fans are there, and like they have that. It's going to be a big rivalry. Like Morocco, it's a bit like you've stayed in Canada, Ankit. So there are हाँ lots and lots of Indians, there are lots and lots of Punjabis हाँ there. बिल्कुल यार अपना So अपना मिनी similarly, पंजाब है वहाँ तो. Moroccans in France, Moroccans in हाँ. Netherlands. Like it's a big thing. So it's going to be a massive rivalry there, and साका France गेटिंग द has. बॉल. भाई कुछ करेगा क्या दिखते हैं भाई. हेंडरसन प्लेइंग इट बैक. बट इस मोमेंट में आई थिंक ऊपर मैं कहना डन वेल. भाई मेसी इज गुड. मैं बोल रहा हूँ ना ये लाइन के जस्ट बाहर थी इसलिए शायद नहीं गया. लेकिन फ्री किक होना चाहिए था भाई. हैरी केन. ओ लोरिस. लोरिस इज हैविंग. इमेजिन हैरी केन और लोरिस भाई टॉटनम टीममेट्स.
That is the best part. Upamecano Was got that a lucky. handball? Who? It took a deflection. It did. It did. Just outside the box exactly. It's coming home. नहीं सुनना चाहता था. Then UCL maybe for Messi. Yeah, I think if PSG also Messi not too wins the far. World Cup, he'll just leave PSG. He'll be like, I'm off to Inter Miami. You do your thing, like. Now tell me whether that's not a foul or not a penalty. Because that's a foul and not a penalty, then it's surely exactly Messi is good. आपने शायद सुना, मैं वही बोल रहा था कि आप फ्री किक तो दो ना, इतने बेवकूफ हो, आपने 2-3 मिनट लगाकर देखा है, कान में नहीं बोल Goal. सकता तू दे, No. गोल होने वाला, What? 100% गोल. Come नहीं. on bro, how is France able to defend? I'm telling you bhai, after France has scored, it's all England bro. A goal is coming either ways, या तो इंग्लैंड विल बी काउंटर्ड, ठीक है, या तो No, I इंग्लैंड think स्कोर करेगी. गोल इज कमिंग वन मोर. मोरक्को शुड हैव हैड 3. भाई छेदीरा छेद है उसके गोल स्कोरिंग में. प्रॉब्लम है कि यार बंदा बहुत ही, और दूसरा क्या, उसका भी नाम थोड़ा ऐसे ही कुछ था जहां पर उसको भूखबल या समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम, सॉरी, लेकिन एनीवे, हैरी केन डूइंग हिज सिटी ट्रायल्स. यार सिटी तो आई थिंक इज दैट शिप इज सेल्ड ना. डेफिनेटली हाँ. फाउल. आर यू सीरियस ब्रो? रेफरी, रेफरी भूल गया यार आज. विसिल भूल गया क्या? क्या हो गया भाई? वो लाइंसमैन क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस? आई कांट बिलीव इट. गोल किक दिया भाई. आई एम शॉक्ड. हाउ इज दैट नॉट अ फ्री किक? एनीवे, not my team, so I don't care right now, but anyway it's okay. I'm just going with how can it be. भाई चौमनी का दिखा रहा है. What a strike man, what a And strike. Ankit, I didn't really know about Chumeni. I still remember you were the one on your show discussing Chumeni for the first time with Chelsea showing थैंक्स interest. यार बोलने के लिए भाई. And that was like almost 2 years ago or something. Like, हाँ एग्जैक्टली ब्रो. भाई yeah, एवरीवन लिसन टू दिस यार, जो बोल रहे फतेह, yeah. लाइक लास्ट अप्रैल में था. लास्ट उससे ईयर भी पहला अप्रैल. है, उससे भी पहले की बात है ये. I हाँ it's a when he wasn't even, like it was just his radar was just starting. I think I'm talking somewhere in 2020 you were talking about him. हाँ, End नहीं 2020 or दिस वाज something. Early 2021. आई टेल यू व्हाई, 2021. बिकॉज फैब्रिगास का लास्ट सीजन था विद मोनाको. हाँ. And Fabregas, towards the end, he said that yeah, he can actually, he's not such a DM. He can become my successor in Monaco because he can do a Hmm. lot of things. So Czech, obviously, they took note of it and they met him. And the moment Fabregas said, we all put it on at least I did on my YouTube channel. Yeah, you had it something, and like I remember asking you also, like, okay, who is Chumeni? And then you explained to Hmm. me, and I'm talking maybe to a January 2021 market or something like नहीं नहीं, उस very. समय तो चैनल नहीं था भाई. Acha, अप्रैल में ही होगा, लास्ट अप्रैल में April. होगा. Yeah, yeah, इट yeah. वाज अराउंड दैट चैंपियंस लीग वाला नॉकआउट स्टेज मार्क. Huh. भाई इंडिया मेक इट टू 2026. नहीं यार 2026 बहुत ही ज्यादा हो रहा है भाई. अर्लीस्ट आई थिंक प्रोजेक्ट ही है 2042 का, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. 2036 का इज तो 36 है, 26 30 38 सॉरी. Hmm. No, I think लाइन but the 48. एमसीए ब्रो, ब्रिलियंट कमेंट. ब्रिलियंट भाई. अगेन एवरीवन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. यहाँ पे गिफ्ट देते हुए, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस टाइम इट वाज व्हाट, बेलिंगम, Yeah. साका. Who's had Oh, a. डेफिनेटली फ्री किक यार भाई, ग्रीजमैन फाउलिंग साका. बट मुश्किल है यार, ये 1-1 तो रहना मुश्किल है गेम. क्या No, लग I रहा है? think England has a goal in them. Like sometimes, okay, like you concede a goal, but या there's a lot of एग्जैक्टली. time और left. जस्ट लाइक इस मोमेंट हुआ ना, एम्बापे गॉट द बॉल, दैट Yeah. काइंड ऑफ काउंटर हो सकता है. इंग्लैंड काइंड ऑफ गो ऑल अटैक, they might lose the ball and Mbappe factor might come in there. What do you think if Southgate had to change? Like what does he change though? Because you know I think England very. the obvious change, जैसे मैंने बोला था पहले, रैशफोर्ड है, because Rashford is someone who's more direct. Hmm. तो प्लस सेट पीसेस में डेफिनेटली हेल्प्स, बिकॉज आई थिंक दे आर विनिंग अ लॉट ऑफ फ्री किक्स फ्रॉम व्हाट आई सी. तो दे आर मिसिंग अ सेट पीस टेकर. That's a साका, foul. नहीं, इस बार आई थिंक ही गॉट टच ऑफ द बॉल जस्ट अबाउट, along with the ban maybe, I'm guessing. But again people, याद रखिए, ग्रीजमैन has got the assist for that goal.
of Chouameni. So again, golden ball. I know Messi is quite obvious. Lekin now that Bruno is out, and if France jeet gaye, I won't be surprised if Griezmann, nicks that golden ball. Depends on Aj or, of course, the next performance. Hello, Pudin. Nice to see you, bro. Pudin. I know you're low, but great to see you always. But again, मैं एक चीज बोला था पुदिन इस स्ट्रीम में. देखिए आप, आई कैन जस्ट शेयर एज मे बी अ फैन ऑफ, आप चेल्सी फैन इसलिए भी बोल रहा हूँ. देखिए एवरी टूर्नामेंट योर टीम माइट get a bad result, but there are certain moments which are, lifetime memories. Fateh and me have discussed, like we are both now nostalgic in that sense. Yeah, yeah. So like for me personally, मैं शेयर कर सकता हूँ पुदिन आपके से, जो कल दूसरी गोल आई थी ना, that free kick goal, Oh, that will stay for the rest of my life. Like I'll cherish that moment like anything, and the way I reacted, I don't react that way everyone who was watching live, and there was a reason and why I reacted that way. Ankit, what happened was that even like I was okay with Argentina winning, like when I was watching that game, because of how dirty it was from Argentina and what a lot of us sort of neutral or people who were not really at the start Dutch supporters at that moment we wanted Holland to score. And then we celebrated like we were Dutch fans. Like I know I was going crazy. I was अरे like, शुरुआत ऐसी हुई yes, थी ना. yes. सी व्हेन यू आर नॉट अ सेफ, इंडिया तो खेलती नहीं है वर्ल्ड कप, राइट? तो Yeah, जब मैं exactly. 94 में देखा था, आई रिमेंबर यार, मतलब आई थिंक इट वाज ब्राजील एंड नेदरलैंड्स, ठीक है, 94 3-2. में Yeah, 3-2. 3-2 Yeah, गेम. तो yeah. दैट वाज probably the first match that I ever watched of football generally, Okay. right? तो Yeah. फॉर मी दैट वाज लाइक, चलो भाई, मतलब एक लग रहा है टीम में, मतलब कम बैक वाला चीज, और आप सडन से सपोर्ट करना शुरू करते हैं. और उससे पहले ऑब्वियसली रूड हुलिट वो सब चीज थे. देन आई वॉच्ड मोर वीडियो, जो टीवी में रूड हुलिट वाज टू बी शोन ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दे शुड शो. तो Yeah. देन यू रिलेट टू इट. नेक्स्ट मैच में व्हेनेवर दे आर प्लेइंग, यू ट्राई एंड फॉलो देम. तो Yeah. थोड़ा Yeah. और इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट, द नेक्स्ट टाइम दे पार्टिसिपेट 98 वर्ल्ड कप में. तो या, बट मेसी इज गुड इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू बोथ, No, if no. hypothetically I Argentina. Argentina. I would definitely. I don't want to like my. I have no problems with Even Argentina and me. Croatia winning. I Hmm. am okay with like I said. Okay, I'm okay with even England winning because it's been so long. I have no problem with Correct. the it's coming home. Yeah. But I don't want to France see नहीं France जीतनी win. चाहिए यार. Come Yeah, on. yeah. Not. I don't want to see France Sorry यार, France के. I know there are a because lot of. In fact, I'm a yeah, huge fan of Giroud. I yeah, think AC Milan and Chelsea दोनों है यार. Giroud का तो you can imagine. Still मैं बोल रहा हूँ. yeah. I mean, I think back-to-back World Cups is too much. I don't want to see that at all. हाँ यार, back to back बहुत ही ज़्यादा. Was it And it's ironically, was it नहीं है, अर्जेंटीना तो नहीं थी. Has anyone won back to back World Cups? Brazil in 58 and 62 हाँ वही है. because they lost in 66, they won again Hmm. in 70. What was happening was that in 94 Brazil won and in 98 they made the World Cup. But we all loved that Brazil because Hmm. Ronaldo and भाई एवरीवन, भाई फतेह ओपी देखो, मैं कुछ भी क्वेश्चन होता है ना, मैं गूगल नहीं करता. मैं करता हूँ एक व्हाट्सएप मैसेज फतेह को कि बता दो भाई. दैट इज व्हाट ही इज you, आर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस चैनल, ब्रो. you mentioned Holland versus Brazil in 94, which was your first match. And I remember my first full match, नहीं, like I एक्चुअली saw सॉरी, दैट वाज नॉट माय फर्स्ट मैच. हॉलैंड के लिए फर्स्ट मैच था. माय फर्स्ट वाज मैराडोना प्लेइंग. तो मैराडोना आफ्टर Greece दैट मैच 4-0. ही फेल्ड द Yeah. ड्रग टेस्ट, Yeah, रिमेंबर? yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. दैट इज Yeah. व्हाट आई दैट वाज माय फर्स्ट मैच, बिकॉज़ इतना ज़्यादा हाइप बन गया था, न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट, एवरीवन लाइक Yeah, yeah. मैराडोना खेल रहा है, मैराडोना खेल रहा है. दैट वाज माय फर्स्ट मैच. बट वो समझता नहीं था भाई फुटबॉल उस समय तो, बिल्कुल. And I remember watching, like it was not the first full game that I saw. It was USA versus Switzerland. It was a 1-1 game, I think. That was the first game that I was watching. And they were saying that the stadium Hmm. is a fully covered stadium way back in 94. I don't know whether that's but my first full match was Germany versus Bulgaria. And my father was a Germany fan at that stage, and I remember watching with him and being, he was really heartbroken the way we are heartbroken these days when our teams lose way back in 94. And I was so stunned. I was like, oh, what's happened? Like, why is he so sad? Like, why is his mood? He went, switched off the TV, went away. I was like, what happened? Like, kya hua kya? Hmm. So that Exactly. becomes, France versus Croatia, revenge for Croatia. Will they I look at hope it that so, way? because they've lost two big games, like 98, the one we keep talking about, हाँ, Thuram, and और this हाँ, उससे 20. याद आता है, यहाँ पर Uh, पुतिन बोल रहे हैं भाई, फतेह, सादिक भाई और मैं, ट्रायो yeah, वाज देयर इन we've द done, फ्रांस. आपने yeah. शायद देखा होगा पुतिन, फ्रांस का बिल्डअप फॉर दिस टूर्नामेंट हमने जो किया था ना, We साथ में किया finished. था.
और And उसके बाद all उसमें three of us were like, जीतना नहीं चाहिए बस. तो दैट इज व्हाट इट वाज। बट यहाँ पर एक आउटलेट आ रहा है भाई फ्रांस के लिए। गोल होने वाला, अरे छक्का मार दिया यार एम्बापे ने, दैट शुड हैव बीन अ गोल। भाई वाज इट थियो गिविंग इन द बॉल? प्रॉब्ली इट वाज थियो, राइट? Yeah. हाँ तो वो चेक कर यार, यू कैन चेक इट आउट इन आवर फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला सीरीज या नॉस्टैल्जिक वर्ल्ड कप प्रीव्यू सीरीज, डू चेक इट आउट। हमने काफी बार बातें की अबाउट फ्रांस क्रोएशिया, व्हाट हैपेंड देन, एंड ऑफ कोर्स यू नो जनरली अबाउट फ्रांस। Even if it's a Argentina France final, like if अच्छा इटली there's भी a lot जीती of है यार rivalry बैक टू there. बैक। 2018, there was a lot of rivalry. I mean, there was a lot of chatter, and they played. Have they played before? I don't कौन think so. कौन? France and Argentina? Maybe in 86? I don't know. हाँ I don't think. 2018 ही याद आ रहा है मुझे, तो पहले तो 2018, yeah. Yeah. 2018 है, फ्रांस और अर्जेंटीना। बहुत इंटरेस्टिंग बोला यार। अब फ्रांस ब्राजील याद आता है बहुत, Hmm. अ, लेकिन फ्रांस अर्जेंटीना मुझे तो याद नहीं है एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना। Good pass. एटलीस्ट फ्रॉम टाइम वी हैव That's बीन Bellingham, फॉलोइंग right? फुटबॉल, अर्जेंटीना हैव बीन अंडर अचीविंग ब्रो। Yeah, yeah, yeah. पीपल फॉरगेट दैट। आज वही एक कमेंट आया था ना कि ओनली मेजर नेशंस, फुटबॉलिंग नेशंस लेफ्ट इन द वर्ल्ड कप आर, आया था मेरे कमेंट स्ट्रीम में, अर्जेंटीना एंड फ्रांस। मैं बोला अब अर्जेंटीना को डाल रहे हो तो भाई आप इंग्लैंड को क्यों नहीं डाल रहे हो? दोनों ही अंडर Ah, अचीव किए। England deserve it. Like they've won a World Cup. They've हाँ, England's pretty important that way. No, no, no. I think. जस्ट पुट फ्रांस। I mean, Croatia haven't won anything, but I was listening to हाँ, something that that's what they've had Croatia six has World Cups, actually achieved six World more. Cups, two semi-finals, and one final. I was like, wow. I mean, they've just, you know. वही ना, क्रोएशिया नेदरलैंड्स काइंड ऑफ टीम्स, नो पीपल लाइक एटलीस्ट जो यंग जनता है ना, जो रिसेंटली फॉलो कर रही ना, मतलब दे हैव बीन देयर और देयर अबाउट, वो इट्स जस्ट दैट इतना हाइप नहीं मिलता है फॉर व्हाटएवर रीजन। But I'm very disappointed in Van Dijk missing that penalty. Like for him to take it, obviously as a defender, sometimes they take बट well. डोंट यू थिंक मार्टिनेज डिड वेल? आई एम मोर डिसअपॉइंटेड बर्गवाइज मिसिंग। बर्गवाइज इज द नेचुरल फ्री किक टेकर। Yeah, 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 वो yeah. But बहुत Emi पास कर दिया Martinez, ना किक टू, he's बट एनीवे people are पेनल्टीज saying है that यार। Croatia have had four penalty shootouts and they've won all four. But Emi Martinez, if they have to go up against him, wow! I mean, what a dangerous goalkeeper. Liverpool, bro, find of the tournament, I'm telling you. But who's the better penalty kick saver? Like I don't know. I mean, Martinez with yeah. the psychology aspect and all, you know. What do we think about लेकिन McGuire? Presently, I बहुत think he's कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया यार बंदे ने तो अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैग्वायर? हाउ इज हिज presently I परफॉर्मेंस think बिन? he's okay. Like presently, like, No, for what England, I don't think he's making any errors, or is he? he's not, but Maguire has not been the Maguire of what he Yeah, was against Senegal. 2018. Yeah, yeah, yeah. He's held back, you know. He's held back. Yeah. देखो एम्बापे को कवर किया जा रहा है तो राबियो इज मेकिंग हिज रन। भाई टैक्टिकली डेशॉम्स हैज डन इट वेल इन माय ओपिनियन, and Giroud is making sure that he occupies Maguire and Stones, you know. Wow. Walker, Yellow. nice Oh, run. that should be a Griezmann yellow. yellow card है, pretty sure it's a Yeah. yellow card for Griezmann, 100% yellow card है। बहुत important tackle था by the way, I think he's taken off the team there। Yeah. क्या क्रोएशिया अर्जेंटीना के खिलाफ भी पेनल्टीज पे जाएगी? It's a possibility, the way the teams are. I mean, Argentina doesn't हाँ यार, really. क्रोएशिया में ज्यादा गोल्स है नहीं तो Yeah. जा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में मैं बोलता हूँ भाई पेटकोविच और ऑर्सिच ने किया। आई थिंक ऑर्सिच शुड प्ले मोर यार, He ऑनेस्टली। should play more. आई वाज सरप्राइज्ड दैट ही डिडंट प्ले सो मेनी मिनट्स इन दिस वर्ल्ड कप। Rice is being underrated in the World Cup so far. He's the backbone of England. But then वही ना देखा, the moment Rice made a mistake, England conceded. So he is important, absolutely. In fact, Bellingham has not had a good game, I would like to say. He's gotten into it towards the end, but yeah, for the first. Rice देखो वापस make a mistake. And we've मतलब I not seen think much of. strangely मैं बोलूँगा even Henderson hasn't done much apart from that one pass to Harry Kane which was brilliant. I can see changes coming, bro. Half time पे. Hmm. Half time pe ki 60 minutes. But yeah, I mean, I think
नहीं, आई कैन सी हाफ टाइम पे भी मैं आई कैन सी, मतलब आई नो थोड़ा पैनिक ही होगा, बट दैट मिडफील्ड इज नॉट वर्किंग वेल ब्रो, Hmm. एंड दे एनीवे are one goal behind. I won't be surprised if Mason Mount comes for Henderson. This is the first time England have gone behind in this tournament, right? Yeah, at least as far as I remember. So, by the way, talking about that, do you know Croatia has held the lead in this tournament only for 45 or 46 minutes? Entire Wow. tournament. Mein. They are the semi-finals of the World Cup. Yeah. They've hardly, like, I think what they've pretty much drawn every game. They've just got Yeah, one the victory draw over Canada. merchants. They hardly score. वही तो है. It's been Perisic and this guy, now Petkovic mainly. Poor cross. Bruno Fernandes, he would have been competing for the golden ball अगर पोर्चुगल जाती सेमीज पर. अभी नहीं Yeah. होगा. अच्छा, आज भी Hardly. अच्छा खेला यार बंदे ने. Honestly, he got a shot on the bar ना. Almost Yeah. गोल हो गया था वो भी. I thought he gave his level best यार. मतलब And I'm this is actually a impressed. What a massive, tackle. it's a massive sort of chance missed by Portugal. I think they, you know, the way they've had like it's a very good squad. Like I think they had no business to lose to sort of Morocco. I mean, मतलब वही ना, फर्नांडो सैंटोस मेड श्योर उसको एक एक्सक्यूज मिले by telling that, oh come on bro, we didn't have a right winger, but you had bro. Bernardo Silva could have played that role yeah, I mean, in come between on. the game, but I Argentina think यार Fernando मुझे Santos should go. I mean, see, I think he's achieved a lot. I mean, come on, yeah, he's nobody in achieved a lot and Portugal his has. time is over. They need a fresh start basically. Yeah, you need that. And uh, Ankit, I mean, it's going to be half time, so it's something that I would Sure. like to ask you. Jose Mourinho as the coach of this Portugal team. Do you think? नहीं यार, मतलब आई But थिंक don't you think they need that gamesmanship, the what Van Gaal did? And see, look, it's not really working out for Mourinho at club level anymore. लाइक I हाँ, mean, क्या ही तो अचीव कर लेगा. मतलब ही इज एनीवे अचीव्ड हिस्ट्री विद रोमा. ही इज डन. yeah, ही वन देम he's done that. यूरोपियन कप. And I think this squad, the way they are young, they listen to him. I mean, guys like Liao See, coming that is in the and thing. now Felix. There I kind of disagree because मुझे लगता है ना पोर्चुगल में like say a Belgium, like a Netherlands to some extent वो brashness है players में. There's a lot of attitude. Huh. So I think कहीं ना कहीं dressing room rift हो. Like you need actually someone like, let me tell you, someone who's achieved a lot as a player. Like say for example a Figo kind of. I know Figo is not into management, but Yeah. Figo kind of figure, or you need someone like a low profile who's just a coach. One of the Hmm. two. See, Figo will obviously not take it. The South Korea coach, I think he was the coach of Portugal at Euro 2012. Paulo Bento, I think. बेंटो, Maybe हाँ बेंटो. maybe they हाँ can go for him. हाँ बेंटो यार, व्हाई नॉट. But he's already been there, and I don't know. Like I just feel like it's a squad they've got a lot of talent coming up. I mean, लेकिन भाई Portugal. isn't it वन सेकेंड. अच्छा नहीं, साउथ कोरिया का गाना के साथ ही वो सेंट ऑफ ना. Yeah. हाँ, मैं सोचा आयरॉनिकल होता नहीं तो पोर्चुगल के साथ सेंट ऑफ होता है देन. बट अगेन भाई कल क्लोजर टू हाफ टाइम है. मैं मोरिनो का तो यही बोलूंगा दैट फॉर मी लाइक ही इज अ वीक इन वीक आउट वाला बंदा यार. आई कैन But नॉट एनविजेज. I feel like it's done. Like Roma aren't going नहीं यार anywhere. अभी. But where does he कम go, ऑन. Ankit? Like ही he would स्टिल say, यंग यार फॉर अ मैनेजर. no, ही no, स्टिल he's यंग. young. I mean, we're not saying that he can come. Van Gaal, Ankit, he coached Netherlands in 2000 from 2000 to 2002. Then came back to club management. Then went to. So anything can happen. Like Mourinho can करेक्ट take करेक्ट. any job. And लेकिन वैन हाल का व्हाट आई वुड लाइक टू से, ही वाज ऑलवेज लाइक एक I always saw him better in a cup style rather than week in week out. I don't know if you no, no, agree he with was that. good. I have seen him. He I was saw his brilliant. Barcelona team. Absolutely. मतलब आज ही मैंने वीडियो किया था, मैंने वो भी बोला यार, people don't respect him for the he is actually won German 20 title, Dutch titles, that La Dutch Liga. title he won with AZ Alkmaar. Exactly. नहीं. That resurrected his career, because what happened हम्म. was this guy was he was everybody talked about him, that Van Gaal is uh, नहीं but at Ajax when he फतेह won the sorry, Champions League. what No, I'm when trying he to say won the यहाँ पर Champions is League. that he comes across as a more tactical बंदा. You know what I mean? So the tactical banda, you are like, okay, fine. I can see international football being more tactical rather than just go with basically your week in week out wala training wala. What I mean to say.
But I remember how it was with Van Gaal, like the lows that he has seen. Because see, at Ajax he won the Champions League. He went to Barcelona, they हम्म, won the double. He built यहाँ that पर team लगता up. है हाफ टाइम में 1-0 ही होगा. Yeah, that was. एक सेकंड, एक भाई Theo Hernandez has got a injury यार, or is it an injury? No, he's Knowing just Theo faking it. Hernandez. Yeah, Theo Hernandez भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ एज अ मिलान सपोर्टर, the guy has a hot head and a, a crazy streak. We know that. But Pudin, again, thanks for sharing this, bro. कुछ comments ले लेते हैं यार quickly. गौरव पूछ रहे, who do you want to win World Cup, Fateh? I think he said it right already. Yeah, I'm okay with either Argentina or Croatia winning it, in all honesty. I think Croatia deep down. You want to say Croatia? Yeah, yeah, yeah. Deep down, Because yeah, you've been absolutely. I backing will, Croatia. I will root for Croatia, because that I've been doing since match day one. But even if they lose and Argentina were to win it, I'll be okay with it. भाई गौरव, आपको जोसे मोरिनो के प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे नहीं लगते? यू आर वन ऑफ द फर्स्ट, ब्रो. No, but see, this is what I was saying. Like, Van Hal, and I'm just that is why I want to, like, compare Van Hal and Jose there. That there was Okay, a time want to where see. he Okay, left. sorry. I So understood the when comment wrong. Yeah, no, no, yeah. So when Van Gaal left Barcelona around 2000, and I think 2000, his team lost in the Champions League semi-final. Barcelona Hmm. sort of became too hot-headed at that stage. They thought, Hmm. okay, Van Gaal is this crazy figure, and like he doesn't listen. हाफ And टाइम हो गया Van हमारे Gaal, यहाँ. yeah, and Van Gaal took over the Dutch team, and they failed to qualify for the Hmm. 2002 World Cup. And that was the time when, for the first time, you saw a Portuguese team really just dominating. You didn't expect them to dominate. They had a great Euro, Portugal, and they were not supposed to be this great team. Like, nobody thought that they'd get out of the group stages. They reached the semi-finals, and Holland was out, and Van Gaal's career was down in the doldrums. He Hmm. came back to Barcelona and he got sacked. Like, he, I think, stayed only for a year, and even that didn't work out. And Hmm. it was, Hmm. for him, they said that, okay, this guy doesn't have the right attitude. His press conferences are bad. He's too arrogant. That's what people say about Jose Mourinho. And for a year or two, he just disappeared. And he took over at AZ Alkmaar in 2004-5. And, everybody thought, well, I mean, Dutch League, Ajax is there, PSV under Hiddink. At that stage, do you remember they made the Champions League semi-final against या City? बिल्कुल. मतलब Nearly lost AC फिलिप Milan कोकू, out. Yeah, 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 absolutely. Koku and that guy, the guy who went to Manchester वैन United. बॉमल. No, no, no. The Korean Park Ji Sung. And do you remember Park Ji Sung? He went to Manchester United. He was a Korean. Hiddink brought him from Korea to 2002 team. अच्छा, पाक जी संग था क्या वहाँ? आई डोंट रिमेम्बर Uh-huh, दैट. yeah, yeah, at अच्छा PSG. अच्छा. And he was beautiful. Like, he was amazing. And so Van Gaal takes over at AZ Alkmaar, and suddenly, he makes them into a force. And it's not Feyenoord, it's not Ajax, it's not PSV, and he wins the league with them. And suddenly he was back. He was the guy who started this Bayern Munich cycle. Getting them चलो into the एनीवे, final, तो यू winning हैव the टू गिव हिम double. क्रेडिट यार. एनीवे भाई, You have to फतेह give him credit. यहाँ पर क्विकली मैं बोलना चाहूंगा भाई, हाफ टाइम हो गया है, तो लेट्स गेट बैक टू द गेम एंड विल Yeah, कम बैक टू इट एब्सोल्युटली. लेकिन मच रेस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज देयर वाचिंग keep अस. an ammo और with यहाँ him. मैं देख रहा हूँ काफी लोग काफी सजेशन आ रहे हैं, तो मैं स्टार करके रख रहा हूँ. फतेह एंड मी एंड एज वेल एज ड्रीम ऑन विल कम बैक टू दिस पॉइंट अबाउट द कोच. कमिंग बैक टू द गेम, बेलिंगहम हैविंग अ टेरिबल गेम. और भाई मानित, मैं देखा हूँ आपका कमेंट भी, हम दोनों मिक्स करते हैं यार, हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे भाई ऑडियंस दोनों की है. एंड भाई आज तो इंग्लैंड का गेम भी है, तो थोड़ा बनता भी है जस्ट सेइंग इट. लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यहाँ पर होप ग्रिलिश कम्स ऑन. तो कमिंग टू द गेम यार, अगेन जस्ट समरिंग, जो लोग मिस कर दिए हो, एवरीवन, वी रिमेंबर वी स्पोक अबाउट इट बाय डेक्लन राइस Hmm. हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन मिडफील्ड. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है फतेह, हेंडरसन एंड बेलिंगहम, I think Hmm. they have been misses. Yeah, Yes, England has yeah, come yeah. back good, but are you going to change them if you're Bench. Southgate? Yeah. So what's show? Let's see the bench. Let me just see तो बेंच आप देखो, who's on obviously the you bench. have Mason Mount who can come in midfield, you have Grealish who can come in. Grealish ज़्यादा attacking हो जाएगा, Mason Mount can do a bit of both. Conor Gallagher can also come Yeah. on. Calvin Phillips तो इतना fit नहीं है. James Maddison ज़्यादा attacking हो जाएगा, just like Grealish. So I think logic would say that Mason Mount might Mount. come on for one of them. Yeah. I think we need, because we need something, but I don't think he'll change just yet, because I think Bellingham started very slow. We didn't see much of him, but the last 10 odd minutes we saw a few, हाँ, at least he's touches made here those and there. runs. Yeah. So he's Hmm. getting into the game. But I've और been disappointed. I wanted to see more of Foden. I really haven't seen much of him. हाँ, एक्चुअली फोर्डन ऑल्सो इज नॉट लुक. अब रीजन में ही ना, जो भी अटैक्स आ रहे हैं ना, राइट साइड से ज्यादा आ रहे हैं. Right लेफ्ट side, साइड से sir. आई Yeah. थिंक
I think again you have to give credit to Chouamani, yaar. Not just his goal, brilliant goal, absolutely brilliant Brilliant. goal. Again, Mbappe was involved in the goal. Mbappe went on a run. वो गया बीच में. Rice actually made a commit कर दिया भाई tackle के लिए और he missed it. और Mbappe obviously then given to Griezmann. Griezmann given to Chouamani. Chouamani out of nowhere, hit that brilliant strike. लेकिन even defensively मैं बोलना चाहूंगा, why has Bellingham not had a great game? Why has Foden not had a great game? Because I think Chouamani has been brilliant. Hmm. Upamecano bhi bahut, I think, is coming and committing himself. Almost gave a penalty away. Fateh, for you, was it a penalty or no? I mean, we haven't seen whether it's inside or not, but if VAR says it's not a penalty, it means it's not inside. But definitely a हाँ, free kick. Come on, that was the बिल्कुल referee फ्री should have किक भी seen नहीं that. दिया यार, मतलब Linesman दैट्स should have seen क्रेजीली that. बैड. The That's what, linesman मतलब should वार का रूल्स ही रॉन्ग है. मतलब दे शुड हैव द एबिलिटी टू चेंज दैट. दे हैव मेड अ मिस्टेक. सिंपल लॉजिक यार. लेकिन अगेन हर्नांडस मेकिंग सम ब्रिलियंट रन्स, राबियो मेकिंग सम ब्रिलियंट रन्स, एम्बापे नॉट एक गेम मैं बोलूंगा. वॉकर हैज हैड अ कपल ऑफ गुड मोमेंट्स अगेंस्ट एम्बापे, बट yeah. ओवरऑल मैं बोलूंगा इट्स बीन लाइक पहला 15 मिनट आई वुड से फ्रांस, then maybe England came back, and then the last 15 minutes was kind of mixed. But that one moment मैं बोलूंगा केन का जो था ना, ह्यूगो Hmm. लोरिस, व्हाट अ सेव ब्रो. मतलब एज मच एज वो बहुत क्रिटिसिज्म लेता है फतेह, कहीं ना कहीं आई थिंक ह्यूगो लोरिस, आई थिंक इज, should I don't know, underrated is the right word, लेकिन he makes those tremendous Mistakes. saves once upon a But time, then, yeah, yeah. And see, from what I remember in 2018, I think he didn't really have too much to do. That defense was just beautiful. But today, that save on Kane. And, see, again, Harry Kane, if he's a elite striker in a game like this, that's the kind of chance that you have to take. पुतिन तो अभी भी बोल रहे 3-2 इंग्लैंड विन. देखते हैं, हम आएंगे उस पर I'm पुतिन also टुवर्ड्स. I'm also sticking with a 2-1 England win still. But that's based more on hope than. हाँ भाई आशीष, ये कमेंट मैं ऑलरेडी ले लिया, आपने सुना नहीं था शायद. ऑलरेडी आई टुक इट, बट कोई नहीं. व्हाई आई एम सपोर्टिंग द कॉलोनाइजर्स, इज इट स्टॉकहोम सिंड्रोम? मैं I समझा think नहीं. we've no, because England were our colonizers, so अच्छा, वो why तो पता है. why is but I स्टॉकहोम think सिंड्रोम क्या है? our relationship with colonialism is very different. Like we didn't go all out fight a war, and um, so I think we won in the end, and we're doing very well. I think India is one of those success stories in the world. So we have no reason to sort of hate the way a हाँ lot of other मतलब nations have. Like एंड वो भी था, मतलब ऑनेस्टली था, हुआ करता था. मुझे शुरू शुरू में देखता देखता ना स्पोर्ट, आई यूज्ड टू हैव दैट. yeah, shuru बट mein, yeah, as kids. हाँ, But बिकॉज उस I समय think. आप स्कूल में पढ़ते हो ना ऑल दीज स्टोरीज, एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्ली इट केम नेचुरली. Yeah, but I think India has just achieved so much, like and not just a sporting way, like the economy, the nation, democracy. Like there's so much to be like proud of in India. Like I would not. भाई राइस ऑलरेडी मिस्टेक कर दिए गौरव, और जो भी लोग देख रहे हैं याद रखिए, हमने बोला था राइस और राबियो में जो भी बेटर गेम होगा ना जिसका, दैट टीम विल विन. देखते हैं वेदर वी आर राइट और नॉट. दिस वर्ल्ड कप इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, बट आई डोंट सी एनीवन बीटिंग फ्रांस. आई थिंक द Yeah, ओनली I टीम think व्हिच they do कुड look बीट इज good. प्रॉब्ली इंग्लैंड. दैट्स प्रॉब्ली अ फेयर कमेंट इन माय ओपिनियन, I एटलीस्ट mean, ऑन पेपर. yeah, on paper, I really honestly thought that this is the toughest opponent they have now that Portugal is also out. But you never know. I mean, why are we underrating Morocco? Like they've अच्छा, बाय द वे knocked out. सब लोग जो भी देख रहे हैं ना, सब लोग, एवरीवन द चैट, आई कैन सी मोर देन 45 पीपल वाचिंग. भाई डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. और मुझे पता है, इफ टू पुट अ कमेंट यू हैव टू सब्सक्राइब. इट डजंट कॉस्ट अ बक, जस्ट सब्सक्राइब बटन दबाना है बस, सिंपल. ऐसे लाइक बटन दबाना है बस, ठीक है? तो सब्सक्राइब करिए और इंटरेक्शन होगा. अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग बट दे आर नॉट कमेंटिंग. तो आप कमेंट करिए. वी वुड लाइक टू नो, वी वुड लाइक टू डिस्कस. फॉर मी इट्स मी, फतेह एंड द सब्सक्राइबर्स हु आर माय पैनल, ठीक है? एंड आई ऑलवेज से दैट इट्स एन ऑलमाइटी फैम. तो एवरीवन डू लेट मी नो इन द चैट. एवरीवन, आई नीड अ कमेंट ऑन द चैट यहाँ पर. और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ भी एक और वार्निंग देना चाह रहा हूँ. आई कैन क्लियरली सी पीपल सब्सक्राइब जस्ट टू कमेंट और बाद में अनसब्सक्राइब करते हैं. भाई क्या अचीव कर लो भाई उससे, क्या अचीव कर लोगे? इट इज जस्ट अ सब्सक्रिप्शन, आपको कुछ कॉस्ट नहीं हो रहा, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प माय चैनल. और डेफिनेटली मेरा मतलब क्या बोलते हैं, गुड विशेस मिलेंगे आपको. एंड ऑफ कोर्स इट्स एन ऑलमाइटी फैम, यू कैन बिकम अ मेंबर एज वेल, लॉट ऑफ एक्टिविटीज. Everyone in the chat, do let me know who has been your man of the match abhi tak. I need a comment from everyone in the chat. Who has been your man of the match till now? Would you say was that the Chouamani moment that was probably deserving of the man of the match till now? The best player of the pitch? I would personally say, I don't know. Chouamani defensively बहुत अच्छा लगा है. Obviously that goal he got, but somewhere down the line I thought Griezmann. You would say, Hmm. I don't know. What about you? You also predicted that Rabiot would cause them problems, and he Rabiot did has. very well. Like, there were moments where he made mistakes, I Hmm. thought.
मतलब Saka, I thought got the ball from him. Rice Yeah. got the ball from him. Same way Rice also made a mistake goal के लिए. Pretty sure England player को तो नहीं देंगे अभी तक. लेकिन I thought Griezmann getting the assist technically, as well as Mm. Griezmann ने occupy रखा है along with Giroud, those defenders. Yeah. So I would go with For that. now. For now. Yeah. Uh, Samuel Eto'o prediction going half right till now. What did he say? Didn't he say that the African nation would be? Yeah, African nation होगी champion. But I ये तो think बाद में it's आ such गया. a ओके भाई चिन्मय बोल रहे हैं इंग्लैंड इज कमिंग बैक. चिन्मय ऑल द बेस्ट यार. चिन्मय आप आज स्क्रीनिंग विनिंग नहीं गए क्या? नहीं तो आ जाओ यार. आई थॉट यू वर गोइंग. लास्ट में भी कमेंट आता है, आई फॉरगॉट टू मैसेज यू ब्रो. डू लेट मी नो, बट कोई नहीं. yeah. व्हाट इफ अर्जेंटीना Yeah. बीट I mean, क्रोएशिया? I'm really hoping for like Chinmay that they at least manage to take this match to penalties. Yeah, but England's record is not all that great. But I don't know why. Like I just do feel like England are probably in gear two right now, Ankit. Somehow. I don't know. अगेन भाई सब लोग मैन ऑफ द मैच. आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? आई एम सीइंग ग्रीजमैन, चौमनी, लोरिस. भाई लोरिस का सेव ब्रिलियंट. Two saves. Yeah. राबियो को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा और केन को करना पड़ा, तो कौन आएगा? भाई राबियो को क्यों सब्स्टिट्यूट करोगे आप अभी? इफ करेंगे तो देख लेते हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन. यहाँ पे सब लोग भाई केन को तो इम्पॉसिबल करेंगे, मतलब वो तो ऑप्शन ही नहीं है. भाई माने तो आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया थोड़ा सा. लेकिन राबियो Kamavinga, को अगर बाई चांस करे तो यू Guendouzi, माइट गो विद गेंडूजी, फ्रेश लेग्स, दैट्स ऑल. Guendouzi. मतलब Yeah. Yeah. कामाविंगा व्हाई डू यू नीड नाउ व्हेन यू हैव a one goal lead? Maybe Fofana, just saying. No, I For think me, Rabiot. Saka is not choosing the correct passes in the final third. अंश बोल रहे हैं. यार साका के भी अच्छे मोमेंट्स तो आए थे, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर गेटिंग सिंगल्ड आउट. जैसे केन एक मोमेंट था, याद है जब केन वाज ऑन द रन एंड देन ही वाज लुकिंग फॉर सम Yeah, yeah, सपोर्ट बट yeah, देयर yeah. वाज नो And he सपोर्ट. went to the right. Yeah. तो दे आर गेटिंग सिंगल्ड आउट अ लॉट. वही होता है यार व्हेन यू काउंटर ना, व्हेन यू प्ले दैट काइंड ऑफ फुटबॉल, you kind of get that. इसलिए you have to be very critical in that, decisive in that 1 second, that you have to either run, go for a run, or have a cut in. इंग्लैंड साइड से कौन, इंग्लैंड साइड में कौन अच्छा लगा यार अभी तक फतेह? Uh, I like the right back. काइल Obviously, वॉकर. Kyle Walker for. And like I said, I mean, I wanted to see more of Foden. I have not seen more of Foden. वो अंडरवेलमिंग Kane लगा. had two chances. I think Kane that shot, and I think it has to be Kane. केन एक्चुअली डिड वेल, स्पेशली आफ्टर जो हुआ था फ्रांस का गोल, उसके बाद अच्छा किया बहुत केन ने. आई एग्री विद दैट. आई थिंक एम्बापे इज सेविंग इज वन रन फॉर द सेकंड हाफ. एक्चुअली एम्बापे, आई थिंक इट माइट बी अ टैक्टिक दिव्यांश. देखो एम्बापे इज होल्डिंग बैक थोड़ा सा, और आप देखो रन्स भी आ रहे तो ही इज गोइंग सेंट्रल. जो गोल आया था ना, ही वेंट सेंट्रल, ही डिडंट गो ऑन द Yeah. विंग. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट इज अ टैक्टिक, दैट बिकॉज ऑफ दैट थियो हर्नांडेज कैन बॉब ऑन, और यू हैव राबियो एज अ लेफ्ट फुटर कैन कवर दैट स्पेस. तो और ग्रीजमैन आल्सो कैन. तो आई थिंक यू हैव थ्री लेफ्ट फुटर्स वहां पर. तो आई थिंक दैट इज अ टैक्टिक. आई जनरली फील दैट. एंड अगेन डेशॉम्स को देना पड़ेगा क्रेडिट. Bellingham, he's been poor in the first half of that half, but like Fateh said, Last 10 minutes we saw more. यार अगर आप लाओगे भी ना किसी को, you don't have a player who's a pure DM slash number 8 यार. मतलब Mason Mount is not that. So Mason Mount can come on for Henderson, but for Bellingham, I still feel Rice needs some support, or Calvin Phillips has not been fit enough. यार फतेह, would you say कि Calvin Phillips को लेना ही itself was like एक प्लेस वेस्ट किया ऑलमोस्ट? नहीं, he's hardly played bro. He's hardly played, and they've also sent two players back. Stuff has happened. No, Sterling is back. No, Sterling is back. Sterling is Sterling back. Yeah, I का saw the it was a game. burglary. Yeah. So do you think Ben Sterling White. comes for Saka? Or Sterling Foden? for Saka? No, not really यार. हाँ, experience you. I would say Rashford. Rashford? Foden can play on the right hand side. तो Huh. Rashford आ I सकता would है. like to see Foden because yeah, we हाँ, need to maybe see more because of Foden. Foden, हाँ ये हो सकता है maybe. Saka has been decent, Huh. लेकिन Foden can be tried on the right hand side with Rashford coming. लेकिन हाँ, Ben White has gone or he's not coming back. There are reports, Yeah, I I don't mean, know if it's true. You know, right? Steve Holland, ex-Chelsea hmm, assistant coach. He is hmm, now hmm. assistant coach for Southgate, ना? तो it Okay. seems Ben White और Steve Holland के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, which I don't agree. The guy is Huh. like loved by everyone generally. It's just rumor हो सकता है, and that is Hmm. why he said that personal problems के वजह से जाना है. Come on, you're not going to leave your England chance and go home. I think it'll be pretty serious.
Yeah, it must be something. Okay, Putin बोल रहे हैं Chouamani, but definitely Harry Kane will score. Then he'll get. भाई imagine Harry Kane, Loris stopping Harry Kane. यार, pretty much that'll be the story of this match. That'll be No, interesting. but I have a feeling that Kane has a few very good shots in him now. So Due to Mbappe, Walker is not making those outside runs. Hence, Saka is getting singled out. Yeah, you can say that. Walker tried making 2 runs. वहाँ पर we had Rice kind of covering his position for one of them, I remember. तो I don't know यार, if you're Southgate, क्या बोल रहे हो? मतलब you just play the same way and आप attack same मत way for करो the next. until. Same, no, I mean same players for the next at least 10 odd minutes, and then I think I would do as you said, like Rashford in, if Saka doesn't sort of step up, because But yeah, I think we now need. kick off हो रहा है second half का, extra time coming or not coming? Everyone I in think it chat. is coming. I need England to score. I'm supporting England so far. तो भाई मैं भी जा रहा हूँ इंग्लैंड स्कोर करेगी बट देन या एक्स्ट्रा टाइम कमिंग एंड देन लेट्स सी हु विंस आई थिंक आर्गुबली बेंच इज स्ट्रॉन्गर ऑफ इंग्लैंड ना बाय द वे आई मस्ट से स्टार्टिंग 11 फ्रांस का है ज्यादा लेकिन आई थिंक बेंच इंग्लैंड का स्ट्रॉन्गर है इन माय पर्सनल ओपिनियन जैसे मैंने बोला वहां पर यू हैव अ मार्कस टुराम एक्सेट्रा बट कम ऑन कोमन है बट रैशफोर्ड इज इन बेटर फॉर्म जनरली स्पीकिंग and then we have एक सेकंड फतेह विल बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स नो वरीज भाई सब लोग सेकंड हाफ के प्रेडिक्शंस हो जाए आज क्या कमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं लोग क्या बहुत लो है क्या बिकॉज ऑफ द अर्लियर मैच everyone do let me know in the comments and again people are not subscribed by consider subscribing it is absolutely free तो आप करिए membership super chat is all optional करें तो और भी बढ़िया है लेकिन यार definitely you will get a lot of content and fun in this channel as well. Uh, France took advantage when Kyle Walker was out of position. Kyle Walker is key to stop Mbappe. By Bellingham on the run, definitely it would have been a foul. लेकिन referee is playing on. A cross आया है which has been cleared by Upamecano just about. Kyle Walker is key to stop. Yeah, Mount को लाना चाहिए for Henderson and Rashford should come later for extra support for Kane and Saka. Exactly मैं तो सोच रहा था लेकिन लग रहा है कुछ चेंज किया नहीं इन्होंने. Anyway. Sancho would have been great, yes, but किसके लिए यार मतलब again Madison remember he's a plan B. Madison is the number 10. अगर if they plan to have a proper number 10 and not Mount, they might just go for Madison this time. By Dembele getting a yellow card, bro. उनका जो challenge था on Bellingham. देखते हैं Foden with a again they don't have great. Oh, what a shot, भाई! Was it Bellingham? Bellingham with a shot just over the bar. Corner था फोर्डन का लूक शॉ ने ट्राई किया कंट्रोल करने के लिए नहीं हुआ लेकिन व्हाट अ वॉली ब्रो भाई सेव ह्यूगो लोरिस मैं तो बोलता हूं मैन ऑफ द मैच ह्यूगो लोरिस यार अभी तक व्हाट अ ब्रिलियंट कपल ऑफ सेव्स he's had यार 2-0 full time 1-all still I think Mbappe will show his class in second half hi Vana Buzz कैसे हो nice to see you always bro what a save by Hugo भाई ब्रिलियंट है ओके फोर्डन विद अनदर ओहो फार पोस्ट में मगवायर थे ये क्या हो रहा है यार भाई Hugo Lloris having one of those days, I'm telling you. I think luck is favoring या जो भी बोलो. Again ये वाला he was lucky because वो गिर गए थे यार. लेकिन Oof. Bellingham, what a save, man! What a brilliant save that was. Did you see that save? You missed it, Fateh. I Come on. saw it. I just saw it. I just saw it. What a save, man. But Bellingham, good start man, by technique. England. Good intent by England, and more of this, please. In fact, जो corner resulting corner था उसमें भी Maguire had a chance, right? Yeah. And where was Loris during that corner, though? गिर That गया था. position. Luckily, it fell to a French defender. Probably Kunde, I'm guessing. भाई लेकिन Oh, इंटरेस्टिंग है अब अरे भाई लकी मैन ऊपर मैं कह रहा हूँ लकी इन दैट मोमेंट यहाँ पे फ्री किक है अगेंस्ट Saka. साका भाई कुंडे हैज नॉट मेड एनी रन्स ऑन द राइट हैंड साइड सो इट्स अ टैक्टिक नो आई थिंक Hmm. Yeah. आई थिंक इट्स We, अबाउट
we've hardly seen stuff happening from this wing anyway, from Kounde's. I think if I'm not wrong, उस साइड कौन खेल रहा है? बेलिंगम खेल रहा है ना, that is why I guess. Bellingham and Foden, yeah. भाई एम्बापे falling and it's a free kick. Henderson is like And as though रेफरी ने पता नहीं उसको ना घर से बाहर निकाल दिया, I ऐसा think he एक्ट कर got a रहे yellow. Did he get a yellow? हैं. Surely it's not a yellow. Come on, this is a yellow. He I no, he hope just not. gave a free kick. It's a free kick. It is a free kick. Come on. Should Bayern look for a new goalkeeper? हाँ, by the way यार, Neuer is injured, हाँ, skiing करते हुए. Hmm. And out for the season. तो Bayern, I don't know, like generally Germany They से could prefer go करते हैं for the Croatian goalkeeper anyway, like Livkovic. नहीं, but he'll hmm. become number 2 ना once Neuer comes back. अभी भी बाकी है Neuer का 1-2 सीजन और. No, yeah, they say that he wants to play the Euro that is being hosted in हाँ, Germany. 100%. Neuer goalkeeper के लिए we know right. Buffon played till what 41? He's still playing, I think, for मतलब with the Parma. highest topmost Yeah, yeah, yeah. starter I level. think goalkeepers can play till 38 to 40, I think. हाँ, How old is तो Neuer? 30, 34? नहीं, he must be little bit more, लेकिन 35 36 होगा, but anyway he can probably. Imagine Peter Cech making a comeback. You know why I'm saying? I don't know if you know. Ice hockey में ना basically he was a part-time goalkeeper by last season. Okay. What He's team? keeping himself fit and busy Okay. off season में. For which team? Czech team? Some Czech team? Probably yeah. वहाँ पर बहुत फेमस है ना. कनाडा में बहुत होता था आइस हॉकी. Both. It's a beautiful sport, वैसे. Did you get the मैं chance to ever I play don't know if you guys have played यार. If anyone remembers Blades of Steel, एक वीडियो गेम होता था. Fateh Blades must of be Steel? remember. I thought Blades of Glory कोई movie भी थी. ब्लेड्स ऑफ स्टील, इट वाज ब्लेड्स ऑफ स्टील करके बोलता था. आइस हॉकी होता था. बहुत बहुत Okay. खेलता था. सीजन पे सीजन खेलता था. I have played the NHL game. EA Sports का ही होता था. Here comes a chance. Here comes a हाँ, chance. Oh my God! साका Why, साका नहीं यार, कट why did बैक he करना shoot? था ना. हेंडरसन विद अ शॉट बट नो अवेल. भाई एम्बापे भाई एम्बापे विद वन बॉल. जिरू इज ऑफसाइड लुक्स लाइक. Probably Giroud shouldn't have been offside by the way. If he is, it's not good. लेकिन वही होता है, it happens. ये क्या 36 37 Penalty! penalty. Man, England Penalty! में penalty. Saka man, Saka wins the penalty and Chouameni of all the people is the person who concedes that penalty. Okay, Neuer का एज है 37 next March. Thanks Mudit. Bro, Saka man, Saka मैं बोलो ना, मतलब he has moments. अब Chouameni unnecessary tackle bro. And I know वो ऐसा नहीं कि फाउल प्रॉपर किया, लेकिन वो ये he went for the tackle and Saka stood his ground. Knee is touched the knee. He's going to fall down. We all know that. भाई Harry Kane against Loris. ये ट्रेनिंग में Wow. कितना बार करते होंगे ये लोग यार. Just imagine. Harry Kane against Hugo Loris people. Pretty sure yeah, Harry Kane knows what Loris will do and Loris knows what Harry Kane will do. नहीं? Yeah, क्या I लगता है? mean, but I Everyone. think Harry Kane will score. Yeah, he should score. भाई टॉटनम का कैप्टन कौन है आज के दिन में? केन है कि लोरिस है ना? Kane, I think. No? नहीं लोरिस है कैप्टन. लोरिस कैप्टन है. France का है Loris. लोरिस है कैप्टन. Okay. लेकिन इंग्लैंड का कैप्टन ऑब्वियसली केन है. तो यहाँ पर दोनों एक कैप्टन अगेंस्ट कैप्टन. पीपल व्हाट डू यू थिंक? ह्यूगो लोरिस, यस और नो? यस और नो एवरीवन इन द चैट जल्दी से बोलिए. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी A goal. अ गोल. भाई फोकस तो बहुत कर रहा है, लेकिन भाई चेंज हो गया. अब मैं बोलता नो गोल. मैं बोलता नो गोल. भाई हैरी केन इज गेटिंग कॉन्शियस. इज द नो गोल. भाई इमेजिन, मैं बोलता नो गोल. या ओके, केन इज कैप्टन अभी इस सीजन में. फेयर इनफ. भाई मैं बोलता नो गोल. हुआ नहीं है. आई एम जस्ट गेसिंग. Goal. 1-1. Wow, what a penalty man. भाई बढ़िया. What a
belter of a penalty, bro. That was crazy, man. Harry Kane showing his stuff, bro. Again, when I say showing his stuff, people don't misunderstand people. Come on. लास्ट में स्ट्रीम में भी ये होता हिमांशु बोल रहे गोल 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 वो होता था ना ब्राजील में Ah. जब ब्राजील गोल करती थी Yeah. What is that sound that plays goal Brazil? Like, आई थिंक इट्स अरेबिक चैनल्स राइट no, बीन no, एंड no. ऑल दैट Okay, you're talking about that. Okay. There's something very interesting that happens whenever Brazil scores. I first saw it like it started I think somewhere in the '94 World Cup. Like, remember that Mortal Kombat that sound? Like, हाँ वो तो वर्ल्ड कप में बेसिकली इट्स अ वर्ल्ड कप थिंग ना सर्टेन वर्ल्ड कप्स लाइक वेन्यू में दे यूज्ड huh? टू प्ले सर्टेन आई थिंक भाई लुक एट स्टीव हॉलैंड एंड गैरेथ साउथगेट भाई हैरी केन स्कोरिंग अगेंस्ट हिज क्लब कैप्टन और मे बी द अदर वे अराउंड व्हाटएवर कैन 1-1 पीपल ब्रिंग इट ऑन मतलब मैं तो अभी बोल रहा हूँ नो व्हाट आई एम एक्साइटेड एंड सेइंग दैट आई कैन सी मोर गोल्स इन 90 मिनट्स एज वेल यहाँ पे Oh, मिस्टेक गोल होने oh, वाला है भाई ओ wow. व्हाट अ सेव राबियो भाई वापस से राबियो का मैं बोला था राबियो विद अ शॉट भाई पिकफोर्ड जस्ट अबाउट kept his cool where was the England defense भाई when France scored England did very well for the first few minutes and now England scored France is coming back let's see what a pass man that was Was that Giroud with the head? did he touch the ball okay. I think so. No wonder that was a difficult shot to stop it was a bad ball like बहुत ही weird kind of volley bounce जो होता है ना बहुत मुश्किल होता है goalkeeper के लिए especially at that pace and being the last man Chomani be like बचाऊंगा भी मैं मारूंगा भी मैं ही सौरभ see that is what यार आप देखो that's the difference you can argue that when you have a very experienced midfielder as much as Chomani I think it'll become one of the GOAT midfielders that you'll ever see but Oh, भाई oh, oh, एम्बापे मत टैकल मत डालना गोल हो oh. गया नहीं. नहीं बच गया यार एम्बापे इजीली बीटिंग वॉकर वॉकर इज नॉट There. लुकिंग 100% फिट मेरे लिए यूजुअली वॉकर डजंट गेट बीट लाइक दिस टाइम स्टैम्प 56-5 56-6 Oh, come on, 56-7 Foden. Keep it Foden in. Foden will he keep the ball no he didn't keep भाई the match has started now proper मजा आ रहा है यार लास्ट 5 मिनट में बहुत मजा आया नहीं फतेह Totally. And we'll get more of this, Like, I don't think, I think we'll go to extra time the way that it is. okay let's see Chomani to Kunde Chomani why what must be going through his mind right now हाँ एम्बापे का पेस है लेकिन वॉकर का भी काफी पेस है इट्स जस्ट दैट ही लॉस्ट हिज पेस ऑब्वियसली बीइंग 32 नाउ लिटिल बिट जस्ट अ लिटिल बिट एंड द फैक्ट दैट वो ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी बिफोर दिस टूर्नामेंट Hmm. What do you think about Dembele though? We've seen येलो him a कार्ड पर bit. भी है अच्छा ये अनुराग पूछ रहे हैं फतेह व्हाट विल बी हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कप For me, लाइक probably just seeing, मेसी uh, no, seeing Modric win the World Cup and then get the Ballon d'Or because वाओ he's won, अगेन yeah, Champions League winner, and I mean that guy is just so classy. And I think for Croatia to मॉडरिच do it, मतलब ऑनेस्टली यार एज मेसी इज अ गोट ऑफ कोर्स रोनाल्डो इज लेकिन इन टर्म्स ऑफ मिडफील्डर्स ना आप बोलो ना हैज yeah. मतलब मैं आई नो पीपल पुट इनिएस्टा जावी मैं तो अभी भी बोलता हूँ आई एज मच एज दोज वर एब्सोल्यूट ग्रेट्स आई पुट जिडान वन लेवल अबव आई Oh, जस्ट absolutely, अबाउट absolutely, ठीक है absolutely. लेकिन मैं अभी बोलना चाहूंगा वुड यू पुट मॉडरिच इन दैट लीग अगर वो जीत जाता है वर्ल्ड कप जिडान Oh, वाले लेवल पे totally. Above Javi and Iniesta for me. Again, different players. People don't. I'm not comparing यहाँ पर. Yeah, but लेकिन what I'm then saying is, oh, Harry Kane becomes England's joint top scorer with Wayne Rooney, by the way. wow. लेकिन हाँ, तो Modric he'll probably reach that level. I must say. लेकिन यार If मेरे he लिए wins the World Cup for हम्म, Croatia after having won what 4, 5 Champions League titles, you have to. You just have to. Man. but still like you're okay. Like पता नहीं if I'm okay, but for me यार वही है. Either Modric misses out or Messi misses out. I'm okay with Definitely Messi. Messi is a larger phenomenon.
But that's why it'll be fun if he misses out. नहीं fun मतलब I think what you mean is like Argentina has won it earlier. Croatia hasn't won it, so you would like to see Yeah. that. And So also, I again, in think Fateh's Argentina viewpoint, have the thing with Argentina. Even yesterday, I thought that yeah, I understand being dirty, but somehow I feel like they, Mhm. they don't play enough. It's. I saw their Copa too. It was just the same physical. The idea is to just go around Yeah, beating but up the वही है ना opposition. tournament football में you never know, bro. That might work It hasn't worked tactically. for them. It didn't work in 90. It didn't work in हाँ 2014 में 2014. Yeah, 2014 में they were very exactly. much like this. Exactly. And but they've always been like that. Uruguay and Argentina have always been very hard and Mhm. physical. So In fact 2006 में तो फिर भी they had a little bit of flair, that but was complete. Yeah, Jose Peckerman team. Yeah, yeah, yeah. That was. लेकिन हाँ मतलब मेरा It पर्सनल was ओपिनियन तो Saka. भाई मेसी है. Oh, ओहो साका विद अ नाइस रन. अनुराग yeah. मेरा So तो my मेसी my है. happy ending is Croatia. Croatia winning it. लेकिन I will happily take any Chelsea player Yeah. winning the World Cup, bro. I'll happily take it. So beat Any? Hakim Ziyech. हाँ. Yeah, yeah. अच्छा, Chelsea player. Yeah, yeah, yeah. तो Walker 2, Killian 1. Darren is keeping count. भाई आई वुड से 2 ऑल है. द मोम आई नो डायरेक्ट कंपटीशन नहीं था वॉकर और किलियन के बीच. जो गोल आया ना वहां पर आई थॉट एम्बापे ने आउटविटेड वॉकर इन अ डिफरेंट वे. एम्बापे इज लाइक अ फरारी रनिंग ऑन अ जेट इंजन. भाई एम्बापे व्हाट इज द सीलिंग ऑफ एम्बापे फॉर यू यार. मतलब आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट गोट्स यार इसलिए मैं नॉट येट आई नो एटीट्यूड इफ ही सेट्स इट राइट ना. Where how high can he go in terms of world He football can go. He can already? go. Yeah, 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 absolutely. I think it's entirely possible that he'll go clear of Haaland as Foden will well if he run. moves to a Mhm. club like Real Madrid or something. Like I understand the idea of making money, but then हुँ, हुँ, हुँ। you अच्छा know, आज मुझसे पूछा गया था पिछले स्ट्रीम में बिकॉज़ फतेह हैज़ सीन अ लॉट ऑफ फुटबॉल. मैं फतेह से सेम चीज़ पूछूँगा. द 3 बेस्ट सीडीएम्स इन फुटबॉल फॉर यू व्हिच यू हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ लाइव. CDMs. हाँ, मेरा आंसर भी है बट लेट्स सी. इस ये कमेंट मुझसे याद आया. ओहो! लोरिस इज़ अनदर सेव. I used to be a big fan of Edgar Davids, who used to be a CDM. हाँ, मतलब एक ऑरा वाज़ देयर डेफिनिटली. And I remember his Juve days. Him and Takinadi in the center, or him and हुँ. Conte, and then कॉन्टे. Zidane ahead of them. Yeah, I mean they were very special. हुँ. That's one guy. I think Effenberg was not a complete CDM, but हाँ, तो इसलिए I did not even consider Lothar Matthäus. I did not even consider Ruud Gullit. I did not even consider Effenberg, but those honestly. guys, in the modern day, they would be those. But Or would someone they who be is first capable of, class? let me Who put would it they this be way. in the modern? नहीं, someone who was capable of playing in a single pivot Uh, consistently. यार एक you दिन तो know, मैं सोचा you will always obviously take the name the guy who उसके लिए position has been named by Foden. What a run, bro! no, no, What a run, Makalele Foden. to is like yeah, I was going to come. वो तो बोलना ही था. So I'm just thinking हाँ. of somebody else, like Davids and और Makalele ये will always what be. about Busquets? मैंने Busquets का नाम लिया था because Nah. मतलब ही इज नॉट एट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एंड टू एंड प्रोडक्ट. बट आप अगर केयरफुली देखो ना इन वर्ल्ड फुटबॉल देयर आर वेरी फ्यू लाइक बुस्केट्स with Yeah, I that mean in the calmness, modern with that sense, ability to deal with the press, as well as the passing ability, plus certain height. Uh, or you can argue, I know some people say leadership nahi hai, but still I would say that he has fair amount of it. So I have strangely because consistency देखा है मैंने ना. तो no, but I would not put although him there. I'm thinking of who else is. Would I you? actually named Because Roy I Keane. remember. See, I remember the early FIFA's. Balak used to be a CDM. हाँ Obviously, बैलेक. इसलिए you know. So बैलेक लॉथर मथायोस I mean, I इवन would टू सम never even एक्सटेंट. consider. For me, even Makalele becomes a problem because Makalele was good at Real Madrid those 2 seasons when they 2000 and 2002. ग्रीजमैन इज द रन पीपल. नहीं नहीं आई हियर यू लेकिन यार I some don't. I people you can't put associate with that Busquets. position ना. Yeah, but I can't put Busquets. And See see, Pirlo with I will not Makalele, call him a CDM honestly. He was like a ball playing number 6. Pirlo. But
his position was always that. It was Gattuso who was doing the dirty work for him. That's what I said. So I would, Yeah, well, when I'm thinking CDM, I'm thinking the Gattuso category, the Makelele yeah. category. I know different See, players, but more defensive than people who are ball players. I Busquets does a like bit of both. see again, nobody would have seen these guys, but I was because in Serie A, CDM was a very important position. There was this Argentinian player called Almeida, Matias Almeida. Absolutely, Hmm. Mascherano. I was about to talk about him because I just came to these Argentinians. So Almeida was one, and then obviously later on Mascherano came. So I would definitely pick somebody like Mascherano over Busquets. Hmm. Never, I would never pick Busquets. I actually went for the third one as Roy Keane. I think he could do the single pivot very well. Oh, beautiful. Roy Keane. And I still remember, because you said Roy Keane, there was this one match between Juve and Man U where Alessio Tacchinardi put in a man of the Hmm. match performance against Roy Keane. And like Tacchinardi was also a CDM. So I would take players from genre. Saka being fouled, Bo. Come on, 1 second. How's that not a free kick? People, please help me But out. they won it back. Oh, yeah, भाई the ये referee एक is प्रॉपर letting not. बैटल बन गया. चलो लेट्स गेट बैक टू द गेम. ग्रीजमैन गेटिंग द बॉल एंड आई थिंक यहाँ पर काउंटर हो सकता था फ्रांस के लिए, बट आई थिंक जस्ट अबाउट दे हैव ट्रैक बैक. हेंडरसन डिफेंसिवली ही हैज डन डिसेंटली यार इन द लास्ट फ्यू मिनट्स. And I don't know, Ankit, coming back to the CDM, there was this German player called Carsten Ramelow. He was captaining Bayer Leverkusen along with Balak when they made the final 2002, and he also played for Germany in that 2002 team that made the final. And he was, very no nonsense, blonde guy losing his hair in his 20s. Nobody talks about him. But that one season, 2002, when Leverkusen lost the final and Germany lost the final, what amazing Yeah. performances he अच्छा put यहाँ in. पर ना एक कमेंट लेना चाहता हूँ फतेह. लेट मी एड्रेस दिस इफ यू डोंट माइंड. लेट मी ओनली एड्रेस Yeah, yeah, दिस. भाई मेसी इज गुड. मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. absolutely, आई absolutely. डोंट टेक इट रॉन्गली. मेसी इज गुड. यू नो आई लव यू ब्रो. I would like to ask you, when did you start watching football? I I Okay. don't want to show it down. मैं क्यों बोल रहा हूँ? Let me complete it. Let me only take it for this one. देखिए, ऑनेस्टली सच में बोलता हूँ, ये कोई दो राय नहीं है. डियोगो सिमियोने जो द मैन जो आप आज देखते हो ना बिहाइंड द टच लाइन, Oh, that was what he was always, always. Or the reason why I personally have not put him as one of the best CDMs is while he was a very good player in the mind, I thought his tackle were kind of very bad. In fact, मैं तो बोलता हूँ Argentina were known for it a lot. और जब DePaul came back, a lot of people associate DePaul the way that is with Diego Simeone, and the fact that DePaul खेलते Atletico Madrid के लिए. Trust me, for someone who's been watching football non-stop from 90s, right? Argentina have always, and I'm saying always, and not only in football, even in hockey and other sports, Argentina are known for that, physical, and there is very nothing physical. wrong in that. There's Nothing nothing wrong. wrong Yeah. in being dirty. Okay, Netherlands का Louis Van Gaal का I understand they have been dirty. I admit it. Yeah. But यहाँ पर if you're talking, we are talking historical थोड़ा conversation हो रहा था. Some teams are known to play that way. वो एक होता DNA of that teams. That is what Argentina teams have been known to play like. So And that is what, and that's a fact. We cannot change the fact. Messi is good. Argentina, there's nothing wrong in them being physical. The one or two times when they were not this physical, they were very pleasing on the eyes, but they didn't have success. Like 2006, they were very good on the eyes. They were not this dirty. They were not physical. They were probably the best team there, and they lost in the quarterfinals to a physical Germany. हाँ मैं खुद You know, बोला यार 2006 yeah. they were had flair but कोई नहीं. 2002 Bielsa, those silky skills, everything. They were not dirty. They went हम्म, out in the group stages. बिल्कुल. 2014 very physical final. Even now very physical semi-final. So I हम्म. think there's nothing wrong in them being. And look, I think even the Dutch were. Like the way things were going on. Yeah, absolutely. Messi go 2006, and the way Dumfries was, like there was memes where Dumfries was getting into Lautaro Martinez's head, and Dumfries was doing this and that, and De Jong was talking, and everybody was talking, and stuff was happening. So yeah, absolutely. Yesterday was it's a proper grudge match now. Holland versus Argentina, the '98 World Cup, 2014, 2022, and Ankit, we love it. 2026. Let's see, yeah, let's see. We'll go there. But anyway, uh, बिल्कुल बिल्कुल.
Argentina versus Portugal versus France versus England. Who plays more rough and tough game? But yeah, let's get back to the game, bro. We'll come back to it later because it's getting to that point. 69 minutes हो गए. भाई साका मतलब अभी अगेन मैं What a second देखने half. वाला हूँ. सब लोग ये बताइए second half में which has been that one player who's like he has Saka. changed the game for England. Well, I would like to say by Saka, man. Saka has Saka. been absolutely brilliant. And the In fact, smile on Foden his bhi. face, like there have been moments when the referee has probably let him down. He should have had one or two fouls here and there. Mhm. But Let's see. And people, yes, again, we'll be taking a lot of questions. मैं star करो कुछ कुछ which is away from the game because कभी कभी क्या होता है ना बहुत लोग want to talk about the game and then we are not focusing. That's what feedback I've got. So I'm just going with that. लेकिन यहाँ पुदिन पूछे अरे पैटो भाई एक्स चेल्सी मैंने एक्स मिलान एंड दैट टू मिलान में तो बहुत ही अच्छा था. इनफैक्ट क्रेजीली गुड फॉर अ कपल ऑफ सीजंस. injuries really. इंजरीज या दैट्स व्हाट. प्लस एक एप्लीकेशन भी होता है बंदे का भी अरे Oh, गोल oh, हो लो. ओ भाई हैरी मैगवायर. इमेजिन इफ हैरी मैगवायर had got the winner, bro. Talk about not taking free kicks well. In fact मैं तो बोलूंगा भाई नाउ सेट पीस से आया है. पॉसिबली 2 गोल्स होते. that would have हेंडरसन been given as offside, was it? Oh, probably. Saka and Walker both. Okay. oh my God! Did that hit the post? Did that that hit the post? The outside of the post. Yes, yes. Amazing. But I think this has been a very consuming game. This has Mhm. been a very Ankit, you must have really enjoyed this World Cup. I mean, making these streams, the way हाँ the मतलब last it's been crazy tiring but crazy. at the same time मेरे साथ भी ड्रामा हो गया था बीच में with accidents Yeah, and yeah, all. yeah. I know. But How is your husband? so it is इतना let me put it this way. Like again, I don't have a photographic memory. Although I watched 94, 98 absolutely. लेकिन है ना ये वाला वर्ल्ड कप मैं भूलूंगा नहीं. इसीलिए इतना बता सकता हूँ मैं. That is for sure. अरे फोर्डन ऑफसाइड है यार 100%. जोहार्ट वर्सेस अच्छा प्राइम जोहार्ट ये प्राइम पिकफोर्ड. No, I prefer Pickford because Joe Hart was the goalkeeper when that Perlo Panenka happened Euro 2012, I think. I think No, Joe Hart used between to make 2012 and mistakes. 2016 he was the guy. Yeah, no. I think he used to make mistakes. Even when he came to Torino, there were always errors here and there. हाँ टोरिनो तो खैर मतलब it was No. goal. Come on, man. How did Saka not score? How did Theo clear that ball? Why Theo Hernandez if he's got to that ball? Again, Luke Shaw, bro. I must say that a very good low cross and Theo Hernandez did brilliantly. He just read it in time, bro. Good body check as well. It hit his shin almost. It hit Theo Hernandez's shin. Yeah, that one skipped the post. Maguire has better finishing skills than defending. He's actually a good ball player, He's people forget like when he was matlab, the reason why he made his moves that he made, na first Leicester and then Manchester United was like he was known for this ball playing centre half, Hmm. who had a height and presence about him. So he was always a threat in the opposition box in set pieces. Is Kunde really good in this World Cup so far? Matlab, he's not stood out, right? But He's not I stood think out. slowly but steadily he has done a job. The fact that Pavard को displace किया है, Fateh. Absolutely. I think he is. Also, I think Pavard, with all the injuries that he has, all the problems that he's, I थोड़ा think सा Kunde will ट्रैक become बैक a में mainstay. थोड़ा इश्यू है ना पवार्ड का. Yeah, yeah. So I think Kunde will become a mainstay for them. I think he's solid that way. नहीं नहीं फुटबॉलिंग नॉलेज की बात नहीं है. मेसी इज गुड यू हैव अज्यूम्ड. देखिए मतलब अगेन फतेह आई वुड लाइक ओनली माई सेल्फ टू स्पीक ऑन दिस. डोंट माइंड इट यार बिकॉज आई थिंक मेसी इज गुड यार. आपने बहुत बार थोड़ा सा ये बोला है पॉइंट इसलिए मैं एड्रेस भी नहीं करता बिकॉज यू Good. आर समवन हु गिव्स योर टाइम ऑलवेज टू स्ट्रीम्स. तो इसलिए आई And वुड Messi is रेस्पेक्ट good. मेसी इज गुड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा Yeah, हूँ. we देखिए यहाँ पर ना मैंने आज दैट क्वेश्चन अबाउट द ईयर और एक्सेट्रा मैं पहले बोला डोंट माइंड इट. द रीजन इज आपने अगर देखा ही नहीं है लाइव व्हेन इट हैपेंड इन रियल टाइम. एक होता है ना ऑरा ऑफ द गेम द कॉन्टेक्स्ट एवरीथिंग. लाइव यू अग्री लाइव देखना अलग चीज होता है एंड हाईलाइट देखना अलग चीज होता है. तो आपने अगर देखा नहीं 94 वर्ल्ड कप 98 वर्ल्ड कप बीट 2002
कहीं ना कहीं आपने वही है, दोज आर द टाइम्स देयर ऑलवेज, एंड इट्स नॉट टुडे, ऑलवेज। एंड ऑनेस्टली एक और चीज मैं बोलता हूँ, आई नो आई मूव्ड ऑन यहाँ पर, और यहाँ पर एक शाउट आया बाय द वे इंग्लैंड के लिए, पेनल्टी के लिए फॉर बेलिंगहम। बेलिंगहम इज नॉट एबल टू बिलीव इट ऑलमोस्ट, लेट्स सी, विल सी द रिप्ले। लेकिन क्विकली, if you're known to play dirty, it is not bad, bro. Messi is good. वही मैं हमेशा बोलता हूँ, not to you, but lot of Barca fans. Again, nothing against Barcelona. A lot of Barca fans. So generally, मैं बोलता हूँ अर्जेंटीना या स्पेन फैंस होते हैं, honestly, जो youngish fans है, they're not seen that that is a side of football which is needed for you to win stuff. It is good that you have that. It was And almost a compliment. yeah, Messi's goat is I think इट a इज नीडेड ब्रो। top. और Yeah, yeah, you कल मैं, top आई डोंट नो इफ guy. यू हर्ड मैसेज गोट, और सब लोग जो सुन रहे हैं ना, आप मारियो मेलकॉट को सुनिए, उनका इंटरव्यू में सुना, बहुत अच्छा चीज बोला, दैट ही एक्चुअली प्रेज, ही इज अ डच गाय प्रॉपर, ठीक है, ही इज अ डच गाय, ही प्रॉपर्ली प्रेज्ड अर्जेंटीना टू हैव दैट डर्टी साइड ऑफ देम लिटिल बिट मोर देन डच, बिकॉज Hmm. दैट इज व्हाट विंस यू दोस मोमेंट्स, और एक क्रिएट करता है साइकी इन द ऑपोजिशन। व्हेन परेडेस हिट दैट बॉल, it was not just heat of the moment, it was planned. Because of that, Dutch team lost their cool, इसलिए maybe extra time we not, there's a lot of to talk anyway, वो never ending things. Messi is good, But I wouldn't have taken that comment again, and let's actually end this topic here, let's move on people, as a भाई game चल as रहा a है अभी, let's not yeah, yeah, ruin our mood यार, everyone I will please. not ruin your mood, Ankit. But as a नहीं, fan enough of यार, people need Italian to football, understand bro, as in, see, I understand everyone knowing football, अगर आप कल भी देख रहे हो, I don't talk about the years of etc, लेकिन the fact is that there was a certain period when Argentina or certain any team, not Argentina, any team was known for certain way of football for a good 15 years. आप अगर but 15 साल में नहीं देखो you तो आप know, कैसे बोल सकते हो, मतलब I ये मेरा, I because no, when you ask me about defensive midfielders and being a fan of Italian football, uh, one of the reasons why I would enjoy Argentina winning it is because they're dirty. Like we in Italy, we are very that way. We like fouls. I like fouls. I remember there was a something, Ankit. Somebody was asking me who are your three favorite players, and I took the name of three defenders. exactly, मतलब I don't know why we think that way. Anyway, coming back to the game, Yeah, I can't see Foden doing anything. भाई honestly, Foden and Saka have changed the game. In fact, मैं तो बोलता हूँ यार, मतलब I know yeah, ज्यादा runs नहीं हुए, but फिर भी I think एक दो runs बहुत ही अच्छे थे यार Foden और Saka के। yeah. I think. यार अगेन भाई, And मैच के you and I were मैच पर talking पूछो about यार, आप लोग Saka. मैच पर फोकस करते पीपल, लेट्स फोकस ऑन द Yeah, मैच प्लीज you and I were एवरीवन। talking about Saka being replaced or Rashford coming on, but the way he has played in the second half, I don't think Saka is going anywhere. या साका इज, अगेन देखो, डबलिंग अप ऑन डिफेंडिंग एम्बापे, भाई ग्रीजमैन विद द राइट फुटेड क्रॉस, Goal, गोल होने वाला, goal. जीरो, व्हाट सेव मैन, सेव ऑफ द वर्ल्ड कप, सेव ऑफ द वर्ल्ड कप पीरियड, व्हाट अ सेव बाय ओलिवियर, बाय पिकफोर्ड Does on a that Olivier save? Giroud shot, a volley, Is 100% that nailed on goal था भाई, it was a is good that height, but come on, Ankit? Is that the save that changes the course of England's history? Like it was a good telling height. you, It was a good मतलब height. सब लोग बोलिए यार, सब लोग बोलिए इन द चैट, इज इट द सेम ऑफ द वर्ल्ड कप, मेरे लिए इन इन ओपन प्ले इट इज आर्ग्यूबली दैट्स हाउ गुड इट इज। भाई जिरू ने क्या मारा था यार शॉट वो, आई नो रिप्ले स्लो स्लो मोशन में दिखता नहीं है समटाइम्स, बट Goal, ओ 2-1. हो भाई Giroud. साहब, जिरू मैन, जिरू scores man, this is a winner, I think this is a winner, man, जिरू का भाई, the moment we say save the वो, what a cross, Theo, pretty sure it was Theo crossing the ball, Theo crossing the ball and Giroud getting the winner bro, Giroud goal, absolutely save the year, yes, but वही गोल हो गया भाई, absolutely bro, crazy man, was it Griezmann or Theo, भाई again it was a resulting corner, remember, तो ग्रीजमैन था शायद, हाँ, Griezmann. पता नहीं, जो भी था यार, Pedro went डिड with इट his टच Maguire. मैग्वायर, Yeah. प्रॉब्ली डिड, इट डिड डेफिनेटली टच मैग्वायर, बट प्रीटी श्योर जीरो इज गोना क्लेम इट, भाई फ्रांस विनिंग द वर्ल्ड कप, मैं बोल रहा हूँ
लुक एट डेशॉम्स ब्रो. अरे भाई एम्बापे 7-8 बार स्लैपिंग जीरू, जीरू लाफिंग. अंदर पड़े तो अंदर आ भाई, दिखाता तुझे. मुझे थप्पड़ मार रहा है. लुक एट द इमोशंस ऑफ ओलिवियर जिरू. भाई ओलिवियर जिरू बहुत कम होता है इतना इमोशनल, वी ऑल नो दैट. एंड बट व्हेन ही गेट्स रियली इमोशनल ब्रो. लुक एट दैट ब्रो. For someone who did not score a single goal, or I know there was a lot of memes on him, but the guy is underrated like crazily badly. And by he not only breaks Henry's record already जो हुआ है इस World Cup में, he goes on to almost, as of now, get the winner for France against England. This is arguably, आप बोल सकते हो, arguably मैं बोलता हूँ easily the closest match on paper. ठीक है, that's what it is. Is Giroud one of the best header of the ball, or we can say underrated? भाई दोनों ही yes answer question. 100% Giroud is भाई header. मतलब again there have been a lot of people who are like great headers. Miroslav Klose was absolutely brilliant. लेकिन आज के दिन में who is the best header of the ball? If I have to say, probably Giroud, yeah. Probably Yeah, Giroud. Yeah. that's a fair shout. That's a good. It's a good shout. You remembered Closer. Yeah, absolutely. That was Shearer was a very good header. या मतलब यस्टर्स में तो काफी इनफैक्ट थे, लेकिन अभी ये मुझे रिसेंट इयर्स में हेडर्स, वही नेचुरल हेडर्स बॉल का दैट एक होता है ना, एक नैक. एक Is that सेकंड a भाई, पेनल्टी है. penalty? कम ऑन, श्योरली दैट्स अ फ्री किक भाई. माउंट. Penalty. No. हाँ, CR7 ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स. लेकिन वो ये Oh, आज के CR7. फॉर्म में आई थिंक आई पिक जिरू. CR7 ऑब्वियसली इन यस्टर इयर्स, रिसेंटली मैं बोलूंगा भाई. माउंट ज्यादा अपील नहीं किया एक तो. That's a penalty, though, man. Come on. I mean, अरे how do you do that? 100% penalty, man. How can that not be a penalty? That's not a shoulder push. That's not even a shoulder 100% push. penalty. भाई इंग्लैंड आर रॉब्ड. अगर ये पेनल्टी नहीं मिले, इंग्लैंड आर रॉब्ड. That is a penalty and a half. How That should can be a check. England not get a penalty? That is That's a a check. Come stupid, on. That has to be a penalty. Come on, man. I mean, such a stupid foul by Theo, bro. Such a stupid one. यार that एक तो Theo does इंग्लैंड that all the इंग्लैंड time. प्लेयर्स Theo शुड does नॉट that इवन all the कंटिन्यू. time. दे शुड बी रिवोल्टिंग अभी. इट इज द 81st मिनट. Yeah. Has to give a penalty. Ramos. Has to Ramos, give a yes. penalty. Oh, bhai, this is a compliment, bro. Giroud is one of the most good-looking footballers. Yeah. Everybody talks about that. भाई ये बॉल को नहीं देख रहा था. भाई आई एम अ थियो हर्नांडेज फैन, बट आई एम अ मेसन माउंट बिगर फैन. यू ऑल नो दैट. और भाई ये पहले क्वेश्चन था, हु इज योर स्टिल बेस्ट चेल्सी प्लेयर. यार मेरे लिए करंट चेल्सी टीम में ऑलवेज बिन कोवाचिच, देन कम्स मेसन माउंट एंड रीस जेम्स. That should be a card, man. That should be a card. It's a red card. He's It's the last a man. he's It given should be a it. red card. He was the last man. It's a red card. It should be a red Yeah. card. Give I him think a it's a card. red card and a penalty. But they Again, won't give I'm the. being neutral and saying, people, trust me. नहीं दिया. एक सेकंड. He didn't give it. एक सेकंड, हुआ क्या है? पेनल्टी है, लेकिन रेड कार्ड नहीं दिया है. He should. He's giving a yellow. भाई द रेफरी हैज चिकनड आउट. If it is a card, it is a red card. I know, Yeah. I don't agree with the rule, but it is a red card. He was the last man. Why Theo Hernandez should be getting a red card? Oh, that would have been a major change for France. Remember, it's not a shoulder push. Theo Hernandez क्या लड़ रहे हैं यार? मतलब how can you even argue that? To be honest, The pressure should that be they. red. भाई everyone flashback करिए, rewind करिए. मैंने बोला था Mason Mount will come off the bench and him or Rashford will score नहीं किया, लेकिन he has made a difference. Has he? And yes, by the way, for people we might have missed it during the conversation, Henderson off थे, Saka off थे, Sterling और Mount आ गए. दोनों Chelsea मैन आ गए हैं. This is a red, 100% red होना था भाई. How is that not a red card? I am shocked. भाई अगर वो पेनल्टी मिस कर देना अभी वापस से सेकंड, इंग्लैंड विल गो मैड. दैट रेड कार्ड नहीं किया. बाय चांस अगर केन मिस कर देना, बाय चांस ग्लोरिस सेव कर देता है. I wish he was given a red though. He's a very इट dirty वाज अ player रेड. in general. कोई मतलब सोचने की बात भी नहीं है यार. कोई नहीं, आसपास कोई भी नहीं था. या माउंट इज ऑलवेज इन योर फेस. वी नो दैट ना. दैट्स द थिंग.
रेफरी has got salary of Mbappe भाई. ये वाला हो सकता है अभी मिस कर दे. दो बैक टू बैक पेनल्टीज बहुत ही कम होता है. We all know that. He needs to be, Especially with you know, Loris, that. his club man. भाई इंग्लैंड are robbed. सच में ऑलरेडी हाफ रॉब्ड है. देखते हैं फुल रॉब्ड होके नहीं. Oh, he missed it. Oh no man, he misses it. By Kane bottles it. By the Spurs bottler in him. Sorry, Spurs fans, but why are they भाई cheer लोरिस को क्यों बोल रहे हैं भाई? लोरिस ने कुछ किया नहीं. Anyway, Oh, and Ankit. अभी England, if players don't go mad, trust me, they अभी that is what it shows. England players should go mad behind the referee right now. I know it will waste 1 minute. Like I'm so Ankit, shocked. It's not this a red reminds card. me of Euro 2004, Beckham missing a penalty. He was the captain too Ah, against France. Same, put it over the bar. Or I don't know, was it saved by Barthez or what? Oh, come on, man. Like, that's a. होता है भाई, it happens. Yeah, 100% it was a red card, bro. And I think पता नहीं यार, मतलब somewhere down the line ना, I feel that referees ना बहुत ही पता नहीं है. Is it like the aura is getting to them? The aura of, say, for example, in Mbappe, yesterday, Messi. पता नहीं आपने देखा था क्या? I know, again, I'm generally saying, but I think referees ना बहुत ज़्यादा hesitant रहे to make those difficult calls in this particular World Cup. They are just giving Hmm. the Yeah, benefit or what it is. yeah. I thought yesterday the penalty that Dumfries gave away was very, नहीं वो तो even as a Dutch fan, I think it was a penalty, bro. It was just on the very, line. yeah, very soft. But people go हाँ, down. I don't लेकिन know. वही है मतलब देखिए, see, some things cannot be debated. ये वाला तो डिबेट नहीं कर सकते ना. It is a red card. But again, bad penalty by Harry Kane, man. Oh God, this referee. Harry Kane has beckoned. Let's see if Marcus Rashford can do something. But if England go out here, I think that's the end of the road for Southgate. If I mean they've got 5 minutes, maybe another 5 minutes of injury time. But talking about into road, I am more surprised about Tite ending the road, yeah. I thought Tite would not. No, I mean two quarterfinals at a country like Brazil. That's a very demanding country. You can't. And the first European nation, every time that they faced, they were out. So I think yesterday, I mean, getting caught on a counter in the 116th भाई minute, पेनल्टीज में बाहर हो यार, मतलब. but still, Anyway. Ankit, I think. भाई imagine Loris going back to Tottenham and bantering Kane about it. Oh my god. भाई लड़ाई हो सकती है knowing Kane and Loris. Giroud doing well, game. यार That is a gamesmanship Giroud knows it. horrible, horrible penalty. What the hell? But are we not surprised? I am more surprised. देखो भाई Mbappe का face देखो ये. Look at that face of Mbappe. Why this is what the attitude that I don't like about Mbappe. Honestly, I don't think he needed to do that. The moment Kane missed the penalty, he's like Ninja Turtle proper लग रहा था भाई. Come on, England. Come on, get a goal. Let's have some drama in the penalties. Like I हाँ want वही Kane versus Loris part 3. आएंगे उस पर दिन आएंगे. अभी just focusing on the game अभी के लिए. But answer is no for me. He's a good player, but not that good. We need to elevate, not just go for promise. मेसन माउंट टेकिंग फ्री किक अगेन. भाई मैडिसन बोल रहा होगा मैं क्यों यार तेरे जूता साफ करने आया हो. मैडिसन को यूज ही नहीं किया है साउथगेट ने. इतना बेसिकली ही मेड हिम दी गाई हु वाज सपोज्ड टू बी लाइक एक लास्ट मैन हु वाज सेलेक्टेड. रोया बेचारा. ही केम बैक फ्रॉम इंजरी. भाई जिरू डिफेंडिंग. दिस इज अंडररेटेड. जिरूज डिफेंसिव स्किल्स बाय द वे. रिमेंबर ड्रॉगबा यूज्ड टू डू दिस ऑल द टाइम. Ankit, I know that like you don't want to discuss this. Have England been too nice though? Like we talked about, teams wanting to be dirty. Do you see any that? Exactly. That was I, my point. The moment the penalty was missed, hmm, okay, I understand Kane me going into his shell for a minute. hmm. What But then happened to he's the a big, others? yeah, he's a big. Come on, come on, come on, come on, come on. No, नहीं यार छक्का मार दिया. Mason Mount ने, like he's it or been not, there good. is an X factor in Di Maria. Of course there is. Di Maria for Argentina is extremely important. By the हमेशा way, रहा है for.
Mason Mount, since he's come on, very good impact. हाँ, लेकिन अगेन आई थिंक इंग्लैंड नीड अ गोल स्कोरर. Who's on the bench? Who's the goal scorer? Thanks Anurag again यार for the super chat, means a lot for the gesture. Shout out आपको absolutely. मैं बहुत बोल रहा था मैडिसन. देखिए मैडिसन has been in hell crazy form. I know he's coming back after injury as well more recently. लेकिन आपका क्रिएटर है जो बहुत अच्छा सेट पीस टेकर है. आई एम सरप्राइज एज मच एज मैं तो आई एम नॉट सैड कि यार स्टर्लिंग एंड माउंट टू चेल्सी प्लेयर्स हैव कम ऑन, बट आई एम वेरी सरप्राइज दैट मैडिसन हैज नॉट बीन ट्राइड इन दिस गेम. I think he was injured. He was injured. He's come back. Now that at the max extra time ही होगा, I think it will be good for him to come. Again, someone who takes shots. I think he would have been brilliant. A goal scorer है. अब देखिए ना मतलब साउथगेट हैज नॉट रियली चेंज मच हैज ही, लाइक ही इज नॉट लाइक गॉड. मतलब एकदम हेल्प फॉर लेदर वाला चीज नहीं हुआ ना फतेह, होना चाहिए था. डोंट यू थिंक सो? Yeah, I mean that's what I'm. But the way the French manage these games, like they See, he's haven't. got Rashford, Raheem Sterling, and Mason Mount. He has Wilson, Grealish, Madison, Gallagher, and it's going to be like end of the World Cup for them. And Yeah, he's not played Madison. मेरे he's लिए not issue playing है. much. I think at this point in time, I would have taken off Bellingham. I would have even taken off who else? Maybe a defender even. Itna panic. It's that Come time, on, he bro. got It's the stoppage time. We're ball. out of the This World Cup. referee is just. Like right now, he should just stop it and he should just bring in. He should bring in Madison. He should bring in maybe even Callum Eight Wilson. minutes, Ankit. 8 minutes, He has but to. do a Vanguard. Just put your balls in the box and just do Yeah, something. yeah, yeah. Yeah. I think Callum Wilson needs to come on. Maybe even मैं बोलता हूँ ट्रिपियर मैन, ही इज अ गुड सेट पीस टेकर, ही इज अ गुड डिलीवरी, मतलब अच्छा डिलीवरी करता है ट्रिपियर भी. जैक ग्रिलिश इन द बेंच, ही इज अ गोल स्कोरर. हाँ, जैक ग्रिलिश मैं इसलिए नहीं बोला, मैं देखा था इंद्रानील. द रीजन आई सेड इज बिकॉज आई कंसिडर जैक ग्रिलिश coming on when you want to manage the game, want to win free kicks. He's the best at that in business. अभी के लिए we want someone who's more direct and in the box. I want a. तो I don't want this game to be over, Ankit. I want extra time, man. I want penalties. यार I आज want long. दोनों ही नॉर्मल टाइम में हो गया यार. इमेजिन दैट टू पोर्चुगल एंड इंग्लैंड गोइंग आउट. 7 minutes लेफ्ट. पीपल क्या बोल रहे हो? राशफोर्ड गोल कमिंग सून, पुतिन बोल रहे हैं. इंग्लैंड मिस द चांसेस. वो ये पेनल्टी मिस किया यार मतलब. लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर फ्रांस वो डाउन टू 10 मैन इवन ऑन मिसिंग द पेनल्टी, इंग्लैंड वुड हैव हैड हायर चांस. तो आई थिंक देयर आर नॉट इनफ पीपल रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट. वो थोड़ा सा सरप्राइज हूं मैं. ये क्या कर रहा है भाई? कौन है वो? राइस था क्या? हाँ This is a मतलब good move. Come on, अमन, come on. टू बी फेयर, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट गेम टू कॉल एनीवे यार. मतलब दोनों ही टीम्स अरे यार. कॉर्नर है. चलो कॉर्नर तो दिया एटलीस्ट. Corner. Come on, England. Like get a goal. Yeah, oh yeah, you need someone with a better delivery, or you need people in the box, or you need a Harry Kane, a Callum Wilson, a Rashford in the box, and people with delivery. वो you can say Madison and Trippier have better delivery than even a Mount and a Sterling. ये मेरा है opinion. मैं खुद चेल्सी फैन होकर बोल रहा हूँ. Imagine. उत्कर्ष fan is funny. Oh. Oh, well defended by France. इमेजिन एम्बापे. और अदर फ्रांस में बहुत लोग. who guys were there यार? which all people were there in the last world cup from this squad? Mbappe was certainly Mbappe. there. Varane. Varane, Griezmann, Griezmann. Giroud. Coman, Dembele. Coman is there. Giroud. हाँ, जीरू ऑफ कोर्स. कोमन स्क्वाड में तो था शायद, जहां तक मुझे याद है. जीरू, डेम्बेले. यार यहाँ पे अपील कर रहा है मैगवायर, पता नहीं किसके लिए. 100% Madison, bro. Ansh, 100% Madison is better. I'm not going to claim just because I'm a Chelsea fan. भाई ट्रेंट भी है यार बेंच पर. इमेजिन. Yeah, इमेजिन, मैं भूल गया exactly. था ट्रेंट भी तो है. भाई But व्हाट I think विल they're ट्रेंट एंड scared मैडिसन of थिंक? the Mbappe and
या वही है डिफेंस में, लाइक आई थिंक इट्स लाइक हेल्प फॉर लेदर वाला पीरियड चल गया भाई, स्टॉपेज टाइम में लास्ट 4.5 minutes इज लेफ्ट भाई, इंग्लैंड एक्चुअली हैव अ चांस टू मेक सब्स्टिट्यूशन भाई, दो ही सर, दे मेड जस्ट टू सेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, रिमेंबर, दे हैव अ चांस, आई नो इट विल वेस्ट 1 minute, but I think it is worth it. You need people with better delivery in the box, and you need an extra man in the box. I don't think Rashford and Kane are just cutting it. हाँ, काइल वॉकर क्या कर रहा है भाई, स्टर्लिंग भाई कुछ कर दे, मैजिक, Hmm. हक दिया स्टर्लिंग ने हक दिया है, अरे यार स्टर्लिंग बैड पास यार, पवार्ड ऑल्सो, यस यस थैंक्स, नहीं नहीं वो देते नहीं यार, दे डोंट इवन काउंट सेरिया फॉर व्हाटएवर रीजन, यू नो दैट्स अ फैक्ट, इट्स रॉन्ग दो। कैन क्रोएशिया स्टॉप फ्रांस भाई, पहले तो क्रोएशिया अर्जेंटीना देखना है, फिर आई थिंक फ्रांस, मैं तो बोला यार जो भी ये मैच जीत रहा है वर्ल्ड कप, I mean, स्टर्लिंग these ऑन are द obviously very भाई, good स्टर्लिंग teams. एंड राबियो, स्टर्लिंग विद रन, स्टर्लिंग विद अ क्रॉस, आई डोंट थिंक इट्स गुड इनफ, लूक शॉ बॉल लेकर लास्ट 2.5 minutes से पीपल, What will Maguire थ्री do एंड हाफ here? मिनट्स एक्चुअली, लूक शॉ क्रॉस अच्छा किया है, लेकिन कैचिंग God. प्रैक्टिस लो रिस्क के लिए, Yeah, imagine I after think it's Italy 1934, 1938, Brazil 1958, 1962, France 2018, 2022, I why don't not? want that. गौरव बोल रहा है यू कांट चेंज स्पर्स ब्लड, इट्स इन द हिस्ट्री ऑफ स्पर्स। As Cellini said, it's the history of पहला the. चीज वही बोला ना, बॉटल इट। Yeah. But that, yeah, I mean, I think you can't miss penalties against world champions in a World Cup quarterfinal. Yeah, but people, you know what? See, that's what is one bad aspect about football. By the way, Stones is definitely injured for long term. नहीं तो इस moment में why would he fall? Uh, not good for Man City fans. लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा यार, people will forget. They will not talk about it. I know that. But I think, and I genuinely believe that. मैं तो मतलब I'm not like a big supporter of England or something like that. मैं Hmm. genuinely believe करता हूँ, क्या बोलो, कि वो रेड कार्ड अगर मिलता ना थियो को, गेम वुड हैव बीन डिफरेंट भाई। सब्स्टिट्यूशन, गैरेथ साउथगेट हैज टू बी क्वेश्चनड, गैरेथ साउथगेट हैज टू बी क्वेश्चनड, ही हैज टू बी ब्लेम्ड डायरेक्टली। व्हेन यू आर लैकिंग दैट एक्स फैक्टर, आपके पास एक एक्स फैक्टर है भाई बेंच में, आप खाली रैशफोर्ड के पीछे क्यों पड़े हो यार, आपके पास है, और यू आर सपोज टू पुट बॉल्स इन द बॉक्स एंड एक्सपेक्ट वन स्ट्राइकर भाई, लाइक आई वुड हैव जस्ट रिमूव्ड बेलिंगहम एंड पुट, चलो ग्रीलिश आ रहा है अभी व्हेन 1 minute इज लेफ्ट, again वही tried and tested, he's not bringing something different, these are people that you would expect being a France manager, he would not expect Madison at this point, right? Madison again, I'm not sure how fit he is, but pretty sure आधी घंटा तो खेल ही सकता है यार, अगर बेंच पर है फतेह, राइट, Yeah, अगर I एक्स्ट्रा टाइम mean, जाता तो, obviously, like you said, he's been in hot form. But and unless until the. not just him, Callum Wilson bro, मतलब I would have got maybe one of the fullbacks off, take risk, bring in Callum Wilson, bring in Madison, or if you want delivery and what do you say, fullback, you get in Trent or a Trippier. Yeah, I think they'll probably get 3 odd minutes, but 2.5 minutes. But nah, I don't. Yeah, I या think इसलिए इसका bomb. मेरे पास फोटो है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, एंड मैं करना चाह भी नहीं रहा हूँ, बिकॉज आई यू नो दैट हाउ द रिएक्शन वुड बी, as it is I'm as stressed as with that यार, with the loss itself, I don't want that right now। तो हाँ, I have a picture, I have it with me, मैं हम डिस्कस करेंगे कल परसों यार, हम will be doing a review of the quarter finals of course। फ्रांस इज विनिंग दिस वर्ल्ड कप फॉर श्योर, अमन बोल रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन मुझे बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ यार आई डोंट माइंड फ्रांस विनिंग द वर्ल्ड कप बिकॉज आई थिंक दे हैव बीन रियली गुड ऑन मेरिट में बोल रहा हूँ, दे हैव बीन गुड ना। No, they have been good. I mean, this game they've been good. They've managed it very well. या एंड आई एग्री But विद विशाल हियर, साउथगेट मैन आई स्वेयर ब्रो, yeah, द I think गाइज, if England go out in the quarterfinals, yeah, यार I don't think Southgate.
राइस क्या ही तो कर लेगा भाई, क्या कर रहा है तू भाई, क्या कर रहा है? बॉल डालो भाई कोई, दे नीडेड अ ट्रेंट, व्हाट आर दे डूइंग? They need someone to just put the bloody ball in the box. What are they doing? It's 8.5 minutes almost. Whistle ho jayega final. Rice at least has realized that to some extent. By Giroud playing a centre half, that's Oh, that's interesting. a foul. Definitely free That's a kick hai. free kick. Lekin I think Giroud has done very well. Giroud is playing centre half, people. But Ankit, a free kick just like yesterday Netherlands had. Yeah. Crazy number of fouls, right? कल तो भाई अलग ही लेवल था. Croatia versus France No, World Cup there was a rewind. there was भाई a comment that said, Argentina can actually stop France. I genuinely do believe that. You have to beat, you have to get very physical with the likes of Giroud and अच्छा, Theo I do and think, मैं सोचा I do not think. yeah, Okay. absolutely. I agree with Vishal there. Like it can happen. भाई Rashford should take this free kick. कोई experiment मत करो. Rashford should take this free kick. This guy is an actual free kick expert. Really? हाँ हाँ, बहुत अच्छा फ्री किक मारता है. As much as Mount भी इस पोजीशन से बहुत अच्छा है, I know that. This is a great position for Mount, but I think Rashford should take it. अरे प्रेडेटर एक्सएचडी यार, मतलब भाई पीयूष क्या हाल है यार, मतलब नाइस टू सी यू ऑलवेज. लेकिन आई नो हार्ड डे, yesterday was a very hard day for me. पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आई एम अ नेदरलैंड्स फैन फ्रॉम 90s. But yeah, it happens, bro. As in, again, try and remember the positives of Ronaldo. Of course, you being a Ronaldo stan, just you know it. There's a lot to celebrate. To go with the positive, he'll always remain a goat, as well as a few others. But Grealish, Bayern records chase याद दिलाते हुए. Why are we counting Morocco out? नहीं, fair point. But this is the last kick of the game, potentially. Last kick of the game. नहीं यार, it's just over. And I think उसी से हो गया क्या? Rashford. Yeah, I think very sad for England though, because I genuinely thought that they had a chance this time. Obviously, it's हो गया done. यार. Look at Loris, Yeah. look at Giroud. भाई, they are in the semi-finals of the World Cup. कर्स, व्हाट कर्स. और ये हर एक मैच फ्रांस के बारे में यही बोल रहा हूँ मैं. कर्स, व्हाट कर्स. हैरी केन मैन, मतलब वो बंद कर रहा होगा उसको यार, कि यार ग्राउंड पे होल कर दे, मैं घुस जाऊं उसके अंदर बस. बेचारा यार, आई फील सैड फॉर हिम एट द सेम टाइम, इवन बीइंग अ स्पर्स प्लेयर. लेकिन ऑनेस्टली आई हैव टू गिव इट टू फ्रांस यार. यस, you would say definitely, Fateh and everyone, that England should have taken their chances, but at the end of the day, Yeah. France have looked good. Yeah, we have to give them again. ऐसा नहीं कि they dominated the entire game, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो they have like a plan B. For example, मैं बोलता हूँ, जो क्रॉस आया, via Griezmann to Giroud. I don't see England making the chance for Harry Kane. Yeah, I mean, I think, yeah. So they have a plan B better on the pitch, as well as I know again, why didn't Southgate make the changes beforehand? Why was he waiting till the very 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 last? भाई क्या ही तो कर देगा भाई ग्रिलिश 1 मिनट, मतलब आप सब सोच के देखो. You wait entire year, you prepare for it, and then you go all the way, and you don't even get a chance. If you get a chance, you get in stoppage time of the last match जहाँ आप eliminate हुए. I think it's unfair on them as well. So I think again, referee utter shit, absolutely shit referee. ठीक है. I think a lot of fouls were questionable, but that wouldn't have changed the result. It could have, I don't know. Uh, Whether it was a penalty or not, I don't think it's even debatable. Clearly Theo Hernandez ने किया था foul, और साका का भी यार क्लियरली था, चौमनी वाला. Remind me of early CR7 free kick scoring days. Though I support Argentina, but yesterday game was having worst referee. भाई आज भी बहुत बुरा था यार. रेड कार्ड होना था बिल्कुल. नहीं यार, ये सारे मैनेजर्स मेरा दिमाग खराब कर देते हैं. एंड व्हाई द हेल refs are not using VAR in quarterfinals? मैसेज यह है विशाल, कि यूज कर रहे हैं, लेकिन वही है वार. व्हाट आर दे सेइंग देम, व्हाट आर दे टेलिंग देम, आई डोंट नो. Let's talk about it. Anurag, again thanks a lot यार for giving the super chat yet again. Shout out आपको. In remaining teams, Argentina is the bet versus France. यार अर्जेंटीना, मतलब honestly, Yeah. from a footballing एक होता है ना spectacle perspective, everyone would like to see Argentina France, right?
But again, tactical perspective में you cannot say no to Croatia because defend काफी अच्छा करती है, and we said that defenses wins your matches. But on the other hand, this match, यार फतेह, again आप लोग भी chat में बोलिए, who was the main difference maker in the two? I don't think it was Mbappe today. Pretty sure it wasn't Mbappe. I think Griezmann's cross to Giroud, and then Griezmann and Mbappe were both involved in that first goal. Yeah, So technically yeah, दोनों ही assist Griezmann लिया. Plus, I think midfield of France was slightly better than England's midfield. Would you say that? absolutely. I think Chouameni with the goal. Okay, he gave a penalty away too. I think just the way France managed, all the little It details was of the Tottenham game. I mean, players. definitely Deschamps. It was Tottenham players. I mean, see, you miss a penalty against the world champions in a quarterfinal. I mean, how many excuses can we make? I can't blame the referee. I can't blame anybody. Red or no red, you have a penalty. You have to get it in. Yeah, exactly. Again, भाई, for people who are watching from a long time, thanks a lot. लेकिन साथ साथ में pretty sure it was a red card, यार. The only Man City player left in the World Cup is now Julian Alvarez. Really, भाई, interesting, भाई. Inter Milan has Lautaro And Brozovic. and Brozovic, and we have, as in, if you're talking about AC Milan, there is of course Theo Hernandez, there is Giroud, then there is of course यहाँ पे Chelsea में कौन 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 है भाई अपने? We have Kovacic, we have Ziyech. Yeah. uh, भाई सरप्राइजिंगली फ्रांस के स्क्वाड में है नहीं क्या कोई चेल्सी का प्लेयर इस बार? Yeah, actually, I just realized that. Wow, that's interesting because we always have that, but again, Kante is injured. We know that. City had joint second highest players going to the World Cup. The only one player in last four teams. Yeah. Let's take more comment. Maybe one thing everyone didn't know was the Qatar invest offered Mbappe World Cup winner. अरे भाई कुछ भी. Rabio difference maker Ashish is interesting. Thanks for being here, यार. Argentina के पास 8 yellow card. Uh, Yellow cards are wiped off after the quarterfinals, right? हाँ, exactly. मतलब in fact, they might have missed semi-finals, but I don't think I'm missing finals unless they pick up two yellow in the semis. Giroud's placements though, that guy just knows where the ball is gonna fall. Yeah, exactly. Yeah, absolutely. Let's blues. यार क्या क्या बोलोगे यार मतलब इंग्लैंड के लिए what was missing? I think for England, they never really had any, passage or part of dominance in any part. And I thought that somebody like Bellingham or, like you said, Declan Rice giving that ball away. The midfield, I think they lost it. They lost to Rabiot and Chumeni today. I think हाँ मतलब अच्छा definitely. सेकेंड हाफ में फिर भी बेलिंगहम Yeah, हेंडरसन फोर्डन Bellingham, एंड साका प्लेड Henderson. Yeah, बेटर. I mean, Saka was good, but yeah, I think having said all of that, two penalties though. I mean, you get two penalties, you get those chances. You have to blame Harry Kane. I mean, yeah, I know that he's the darling of the English media and all that, but these high pressure, these situations. That's where your forward, your number nine, your number tens. That's I where have a it's difficult not question भाई good. सब लोग के लिए. I know Harry Kane is the captain and Harry Kane he takes penalties often, but considering ये बहुत rare होता है. Remember I just said it before the penalty, फतेह, बहुत rare होता है where there are two penalties in a game and both are Yeah, scored. both are scored. Yeah. So would it have made sense to give it to say a Declan Rice who's actually a very good penalty taker? People underrate his Absolutely, penalty absolutely. taking I think ability. that's for the manager to, that's where the manager comes in. I mean, if Louis Van Gaal can bring on a special goalkeeper for a special penalty shootout, then you have to be ready for क्योंकि these sorts of situations. हाँ, and the reason I'm asking that is yes, I know वो ऊंचा उड़ा गया. It's I know easy to say in hindsight because it was low risk in goal. That is all the more reason I thought. Yeah, there might have been in a thought कि कहीं ना कहीं if you get two penalties in a single game, your second penalty taker is going to take it and probably इसमें या तो साका होता है या तो I don't know, maybe even Maguire. I know that he has a good penalty ironically. By the way, just letting you know. I feel they should have given the second penalty to someone. अरे भाई old school purist भाई we think alike are absolutely brilliant. इंग्लैंड वाज मिसिंग कंपोजर. मेरा मतलब है लिंक नहीं हो रहे थे प्लेयर्स के पासेस. अगेन Upamecano, I believe, I think he did well. Upamecano did some very very important challenges. Upamecano he made. Rabiot, Upamecano, Theo Hernandez, that left side na. Again Hmm. Kunde,
we hardly saw him in attack, right, Fateh? लेकिन I think did We didn't see an eventually attack at all. it was well Yeah, done. yeah, वर्ल्ड कप का बेस्ट गोल कौन सा लगा? वर्ल्ड कप का बेस्ट गोल था, आई थिंक इट्स गॉट टू बी द टीम गोल ऑफ ब्राजील. नहीं, नहीं, probably. Yeah, साउथ कोरिया. इनफैक्ट साउथ कोरिया का जो एक गोल आया था ब्राजील के साथ में. that was a belter. व्हाट अ गोल. That was a belter. या लेकिन और yesterday नेदरलैंड्स का सेकंड गोल, बिकॉज द वे इट वाज, द मोमेंट इट वाज, आई थिंक कॉन्टेक्स्ट को लेकर, और बहुत रेयरिटी होती है वैसे फ्री किक गोल Yeah, होना. तो आई थिंक ये तीन जाऊंगा. टीम गोल, आई नो रिचार्लिसन बाइसिकल किक यू वुड से, बट आई वुड से yeah, टीम गोल जहां पर थियागो सिल्वा असिस्ट टू रिचार्लिसन. Then I think these two which we just said. Haaland was born in England. He could have played for England but chose Norway. Imagine Haaland in England team. By Kane is also very good. Let's be honest. By the way, Kane has equaled Wayne Rooney. Aj. I know it doesn't make sense to him. Both are he'll be like disheartened big time. साउथगेट की जगह पॉटर ही होता कम से कम कुछ तो एक्सपेरिमेंटल. भाई अगेन मैं यहाँ पर मैं दिखाना भूल गया भाई. सब लोग एक तो भाई करीबन 100 लोग हमें देख रहे हैं यार. प्लीज प्लीज लाइक द स्ट्रीम. प्लीज सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है. एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मीन अ लॉट इफ यू कैन डू दैट. गेट अस क्लोजर टू द टारगेट जो हमारा है. सब्स्टिट्यूशंस ब्रो, कम ऑन. फतेह, go for it, bro. yeah. I mean, you kept 79 minute saying. he waited. Yeah, yeah. I think Southgate, but Ankit, in a game like this, managers also have an eye on extra time. They have an eye on all the permutations. But yeah, I think Southgate needed to go for यार मेरा, go मैं for it. एक स्टोरी बताना चाहता हूँ क्विकली. मैं स्कूल में डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेता था. इनफैक्ट आई रिमेंबर, जस्ट टू शेयर, मैं ब्रैग नहीं कर रहा यार. 9th स्टैंड में मुझे मिला था बेस्ट डिबेटर स्कूल का. ठीक है. तो 10th स्टैंड में क्या होता, मैं अपने हाउस का कैप्टन था. तो वो अगेन डिबेट कॉम्पिटिशन होता है. तो उसमें वो होता है ना, ड्रॉज निकलते हैं कि यार जो फर्स्ट राउंड में करेगा, जो सेकंड राउंड में करेगा. तो बिकॉज आई हैड काइंड ऑफ वन द बेस्ट डिबेटर इन द प्रीवियस ईयर, मी बीइंग अ कैप्टन अलोंग विद अस, वी डिसाइडेड कि हम मुझे रखेंगे इन द थर्ड राउंड. साला हम लोग Hmm. पहुंचे ही नहीं. Poncheri, like Neymar's 20. एग्जैक्टली exactly. तो वही हो गया ना. तो Yeah. आप सोच रहे हो बात की, जब आप बाहर जा रहे हो वर्ल्ड कप है, आपको आपकी फ्लाइट है बैक टू इंग्लैंड. तो Hmm. आई थिंक 70, एक तो 79 मिनट तक वेट क्यों किया. मैडिसन बोल रहे होंगे भाई तू खाली साले मीडिया के लिए लिया है मुझे टीम में. आई नो ही Hmm. वाज नॉट 100% फिट, बट ही Hmm. वुड हैव बीन द डिफरेंस मेकर. ट्रेंट, वो तो भाई आए भाई बेलिंगम के साथ स्काउटिंग कराने के लिए. लुक एट द सेलिब्रेशंस ब्रो. लुक एट द सेलिब्रेशंस, बिकॉज फ्रांस इज फीलिंग दैट दिस वाज द गेम which is now एक hand, one hand on the world cup. Because I really feel this was, मतलब अगेन चैट आप लोग बोलिए, फतेह आप बोलिए, for any team, I think this was the toughest test till date in this World Cup. Yeah, absolutely. Having said that, Ankit, this World Cup or any World Cup, it never goes to like we can keep saying that okay, France they're looking very good, this that. We don't know what's going to happen. Like if we think Morocco are going to lie down for them, considering that rivalry, considering that the population that Moroccans have within in Paris and in France, no, no, no. I think it's going to be a battle even there. Although I think France have too much quality, absolutely, but don't count them out. And then again, the final. I mean, look, both Croatia and Argentina have something to fight for against the French. They were both knocked out. They were both beaten in the last World Cup. So nobody's looking at the French and going, out of the players, out of the three teams, and nobody's going to be looking at them and saying, "Oh, har gaye hum to." No, they're going to be looking and they're going to be, like, let's bring it on, bring it on. So Yeah, this one and I agree. today, By the way, Pudin ka Mount was not an option. वो तो मैं agree. But probably I'm guessing that like आपने बोला Harry Maguire, it could have been basically as an even say for example Rice, he's a good penalty taker. लेकिन हाँ substitutions, I'm so surprised by Southgate के substitutions. हमें यहाँ पे quickly भाई, because 110 लोग हमें देख रहे हैं, but again do like and subscribe to our channel. It's a fan channel for all to see. बहुत सारा content आपको मिलेगा हमेशा. लेकिन हाँ, जर्सी कॉन्टेस्ट एक हो रहा है. इनफैक्ट कॉन्टेस्ट नहीं है, मैं तो गिव अवे बोल रहा हूँ भाई. कॉन्टेस्ट तो है, वो तो कॉन्टेस्ट हम बना दिए. इट्स अ गिव अवे रियली. तो आपको मिल सकता है एक फ्री जर्सी ऑफ द टॉप क्वालिटी जो आप देखे थे. मैं पहना था नेदरलैंड्स का जर्सी कल. इट्स अ टॉप क्वालिटी जर्सी. गो फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉलो करिए. फॉलो sportshub.in. वहां पर मैंने पोस्ट किया था परसों. दिस इज द पोस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट. इनफैक्ट मल्टीपल पोस्ट किया, कोई भी पोस्ट का आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लो चलेगा. 2 स्टेप से खाली आपको फॉलो तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है अपने दोनों चैनल्स में, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस और ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. एंड
कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है हु इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड कप विनर, रनर अप और थर्ड प्लेस, और आपको टैग करना है आपके 3 फ्रेंड्स को. You are eligible to be getting in the draw of that particular jersey winner. All the correct entries get into that. हाँ, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत लोग का प्रेडिक्शन रॉन्ग ऑलरेडी हो गया है. मैंने यहाँ डेडलाइन रखा है परसों का, तो आपको अगर सेकेंड बार कमेंट करना है तो आप करिए. मैं यहाँ गारंटी नहीं दे रहा, जो भी फर्स्ट गेस में करेक्ट किया उसको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगा, तो वो मैं बता सकता हूँ सब लोग. ठीक है, तो कर लीजिए. हाँ, अभिषेक अभिषेक एंड हिज कमेंट्स ब्रो, ब्रिलियंट. It could be Croatia, France, and finals yet again. Maybe Africa derby in the semis. Africa derby, France. Because Okay, I France get has a it. lot of African A players, lot yeah. of exactly. Heritage. And yes, people, let's get to 250 likes. Actually, Prabhat, thanks a lot. Messi versus Mbappe, current और future हो versus हो जाए भाई, वो सब लोग वेट कर रहे हैं. मुझे लगता है बैलन डोर इस बार ला लीगा नहीं चाहेगा. दिस टाइम इज पीएसजी प्लेयर आई थिंक. एक्चुअली मुझे भी लग रहा है, मतलब इट्स गॉट बी मेसी और एम्बापे यार, एज थिंग्स स्टैंड. और मे बी आई नो No, if मॉडरिच इज Modric, व्हाट. yeah, if Croatia win this thing, then Modric gets it. I mean, he's won the Champions League. He's won this. No chance anybody else gets it. या गौरव बोल रहे अर्जेंटीना. ब्रो सेम, आई टुक पार्ट इन डिबेट कंपटीशन, बेस्ट स्पीकर इन चैनल, ब्रिलियंट ब्रो. अंश, फ्रांस, क्रोएशिया, मोरक्को, लेट्स गो भाई. मुदित भाई, मुदित बना बस. ही हैड ऑब्वियसली ही पुट फेथ इन इंग्लैंड जस्ट लाइक बोथ ऑफ अस यार. एंड मुदित बाहर हो गए जस्ट लाइक मी. मेरा तो नेदरलैंड्स इंग्लैंड दोनों ही बाहर हो गए, पोर्चुगल भी बाहर हो गए. मेरे तो सभी प्रेडिक्शन गए पानी में. लाइक कर दो बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट. मैडिसन यार, अगेन मैडिसन और ट्रेंट आपके पास है. ट्रिपियर भी बोलता हूँ यार, तीनों दे आर आर्ग्युबली 3 ऑफ द बेस्ट पेनल्टी टेकर्स, और अदर 3 ऑफ द बेस्ट सेट पीस टेकर्स, फ्री किक टेकर्स, कॉर्नर टेकर्स इन इंग्लैंड पीरियड, इन ईपीएल एज वेल. ओके, या मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट में आएंगे उस पर बार बार. मोरक्को वर्सेस फ्रांस विल बी टफेस्ट भी यार. टफेस्ट See, I टेस्ट think कौन सा होगा फ्रांस के लिए? no, a lot of people will say this is, but your toughest test is always your next game. I mean, look, if France think, like you were saying, like if you see those celebrations, if the French are thinking, oh, it's just Morocco, we'll do this, we'll do that. Remember when Greece won Euro 2004, Ankit, and nobody gave, एग्जैक्टली nobody यार, मैं thought, वही बोल रहा हूँ बार बार. जब ग्रीस जीत सकती है यूरोस, yeah. वाई कांट क्रोएशिया? मतलब मोरक्को चलो फिर भी दूर है, क्रोएशिया तो डेफिनेटली जीत सकती है वर्ल्ड कप. क्रोएशिया तो हैव But बीन even डूइंग वेल. even even Morocco, like if the French are believing that they're going to enter that game and the Moroccans are going to be wowed by them and they're just going to lie down, it's not going to be like that. So yeah, let's go. I mean, today look, Portugal, Portugal were neutralized. I don't know about the injury that Saiz has for Morocco. Like I don't know what's going on there. एग्जैक्टली, तो आई थिंक माजरावी माइट कम बैक, बट आई थिंक उनका अग्वेड इज इंजर्ड, साइस इज इंजर्ड. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ फिट दे आर. मुझे लगता है फ्रांस शुड बी एबल टू बीट Hmm. मोरक्को, ऑनेस्टली स्पीकिंग. लेकिन अगेन मनार बस आपको भी शाउट आउट है, डेफिनेटली इज हेल्प्ड अस विद द कैप्शन ऑन द पोस्ट ऑफ द गिव अवे. Why in every single World Cup, despite having one of the best squads on paper, England always managed to bottle? The answer is there's a lack of winning mentality amongst these English players. आई डोंट नो यार, मतलब इस बार तो एक्चुअली देयर इज अ पॉइंट. आप देखो ना, लास्ट चांस हम जो बोल रहे थे फतेह, Hmm. इंग्लैंड में हु वुड यू से इज द डेफिनेट लास्ट चांस कैंडिडेट? देयर इज नो वन. There's really no मतलब one. हैरी केन माइट प्ले वन मोर वर्ल्ड कप फ्रॉम ऑल वी नो. ही इज जस्ट व्हाट 30. नेमार जैसी है, बट हैरी केन इज लेस इंजरी प्रोन, राइट? तो आई थिंक तो somewhere down the line, in other words, what Messi is what you are saying is people who have been there, done that in terms of winning things, So experienced players who have won a lot of stuff, say Champions League हो गया, ये हो गया, they don't have many, right? And that's a fact. Whereas आप देखो, France obviously has, we count what, 6 people they already had in the World Cup 2018. Again, you're having a Giroud who has won stuff with Chelsea, you know that. तो I think somewhere down the line, or against Scudetto, recently Theo ने जीता. यहाँ पर you had people like, for example, yeah, you can say EPL जीते हैं, but again EPL भी जीते हुए you can argue, इंद्रानी कमेंट किया था कि ग्रिलिश को ही ला देते भाई जल्दी. They could have gotten Grealish early, get in a set piece taker. Grealish would have attracted people, got even more fouls than जो मिले, plus एक set piece taker आता और he could have scored. I'm just saying. So there are two ways, but again, people coming back to the same point. By red card, would it have changed the game? Do let me know. Messi's got everyone in the chat. या वो रेड कार्ड मिलता
थियो हर्नांडेस को, क्या आपको लगता है, क्योंकि 10 मिनट अभी बाकी थे, क्या चेंज होता रिजल्ट आप लोग के लिए, क्या लगता है आपको? पुदिन पुदिन यार, चीट कोड बता दिए भाई, चलो करो। मैं फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट तो दूंगा डेफिनेटली, लेकिन देखते हैं, आप करो करो, टेंशन नहीं है। क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को फाइनल, व्हाट से यू? I would love it. यतिन भाई, अर्जेंटीना फ्रांस स्पेक्टिकल ब्रो फॉर मी, ऑनेस्टली। And then, मतलब आई एम मोर, एज मच एज आई लाइक अंडरडॉग्स, आई डोंट लाइक रेट, मतलब स्टोरी है ग्रीस विनिंग दैट वर्ल्ड कप, बट आई वुड नॉट rate that Euros, not World Cup, sorry, Euros, Euro 2004. So I no, don't I, remember I Euro 2004 like wow. no, I enjoyed it. I enjoyed it. I'll always enjoy. Like if Croatia versus Morocco happens, come on, Ankit, we'll enjoy Okay, it. We चलो. don't want. I don't want it because France has already won the last World Cup. They can win the next one. But back to अरे back. Nathan in the house यार. Nathan, what's up, bro? Sports learn Nathan. Nathan, sorry if I have taken your comment late, but yes, commiseration. Nathan is also an England fan, obviously. Nathan, it would be great if you could come on and share your thoughts, bro. I was thinking that you were streaming yourself, but koi nahi. Commiserations again, Nathan. It'll be interesting to know. मतलब व्हाई डिडंट द इंग्लैंड प्लेयर्स इवन फाइट बैक? ये होता है ना कि यार लड़ लो भाई, रेड कार्ड कैसे नहीं दिए आपको? येलो कार्ड मिलता वापस, उसके लिए खुद को रेड कार्ड मिल जाता। मैं तो बोलता लड़ लेना चाहिए था, क्योंकि आपको पता था पेनल्टी मिस हो गया, उसके बाद में लड़ लेना चाहिए था, कि रेड कार्ड कैसे नहीं दिया भाई तू? आई एम वेरी Hmm. सरप्राइज्ड। Yeah, but I नहीं think नहीं, आशीष overall, व्यू पॉइंट है। टोनी क्रूज इन द हाउस पीपल। Should Tony Cruz make a return to Germany? Probably yes. Spain, Portugal too were strong, but Morocco did the exactly. job. भाई मोरक्को, फतेह एक गोल कंसीड किया है फ्रॉम ओपन Hmm. प्ले, दैट टू डिफ्लेक्शन, an own goal if I'm not wrong. Yeah. बुनू यार, arguably the goalkeeper of the tournament. Bono, absolutely, arguably the goalkeeper, and a lot depends on size. I think they will need him. If he's out, then it's a very also, Hmm. I think you do expect Mbappe to steamroll that defense though. एम्बापे, देखो अगेन, द होल बिल्डअप वाज अबाउट एम्बापे, Hmm. ठीक है। एंड आई थिंक वो ये बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक अदर्स हैव टेक, जैसे हमने डिस्कस किया था शुरू में, राबियो, ग्रीजमैन, दे हैव काइंड ऑफ कम टू द फोर। एंड भाई आई थिंक यार हेडलाइन होना चाहिए जीरो। आई होप ओलिवियर जिरू इज द ओजी, इज द हेडलाइन ब्रो। कम ऑन एवरीवन, भाई ओलिवियर जिरू, एम्बापे एम्बापे नहीं होना चाहिए इस मैच के लिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। एम्बापे फॉर अ टूर्नामेंट यस, बट आई होप ओलिवियर जिरू गेट्स इट ब्रो, आई एम जस्ट सेइंग इट। हकीमी फॉर बैलेंडर, हु सेज नो? पता है आपको लेट हो रहा है तो आप जा सकते हो यार, मतलब अगर आप यू फीलिंग टू स्लीप और समथिंग। Yes, man, I am yawning, so I या यू shall कैन leave. ऑलवेज जस्ट मैसेज मी ब्रो, नो फॉर्मेलिटी क्या है अपने बीच में। तो अरे भाई नहीं फतेह, नहीं. भाई फतेह ओपी हो जाए इन द चैट, आई But विल टेक अ फ्यू Hakimi मोर for कमेंट्स Ballon अगर d'Or, आप। I really miss him at Inter Milan. Like I would love to have Hakimi back. He's been awesome. And that duel at Inter, he definitely beat Theo. In that duel with Conte, so that Hakimi versus Theo duel is going to be very interesting next match. Ankit. चलो एनीवे, तो फतेह मिलते हैं यार, और अगेन विल All बी right, हैविंग अ man. लॉट ऑफ चैट See you in कम the कम द सेमीफाइनल्स, semi-finals. Yeah, बट man. Yeah. अभी के लिए वी आर न्यूट्रल्स, तो विल Yeah. एंजॉय Yeah, दैट। me too. Okay, man. Enjoy. Good सी night. यू फतेह, फतेह ओपी हो जाए एवरीवन। मैं तो अभी लेने वाला हूँ आपके कुछ और कमेंट्स। गेन जस्ट बॉटल इट लाइक इज क्लब, वेल अगेन आंसर इज यस, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा किक किसी और को देना था, बिकॉज इट इज टोनी, सॉरी, इट इज टोनी क्रूज बोल रहा हूँ भाई, इट इज लोरेस इन फ्रंट ऑफ हिम। अगर फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो जिडान का कितना चांस है फिर फ्रांस का कोच बनने के लिए? आई थिंक ईदर वेज, आई थिंक देशॉम्स टाटा बाय बाय बोलेगा, 2 वर्ल्ड कप और क्या ही तो जीतेगा यार, कम ऑन। Either ways, I think either ways he's going. I feel ये मेरा gut feeling है. At this rate, most of the country will be left with no manager. Good one. Honestly, मेरा जो opinion है ना, मैं हमेशा बोला हूँ, I wanted a country जो recent, at least जब से मैंने फुटबॉल शुरू किया ना देखना, that is around 94 या 94, तो तब से जो भी कंट्री नहीं जीती ना वर्ल्ड कप, वो जीतना चाहिए। तो that includes in that list अर्जेंटीना, क्रोएशिया, मोरक्को। तो मैं चाहता नहीं हूँ फ्रांस को जीतना, सच में बोलूँ तो। इसलिए मैं आज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था आज, बिकॉज एक तो चेल्सी प्लेयर्स 3 है वहाँ, कंपेयर टू मिलान प्लेयर्स इन फ्रांस, तो मैं आई वाज गोइंग विद दैट। बट यस अगेन, इंग्लैंड के लिए इट्स एन एंटी क्लाइमैक्स।
साउथगेट आउट यार, एवरीवन साउथगेट आउट, अग्री? साउथगेट आउट भाई। बंदे ने बेटर फुटबॉल खेला है इस टूर्नामेंट में, लेकिन दिस मैच शोड हिज लैक ऑफ दैट, होते ना एलीट कैटेगरी, वो नहीं है, नहीं हो सकता। मतलब ही बंदा सोच रहा है एक्स्ट्रा टाइम के बारे में जब आपका स्टॉपेज टाइम चल रहा है भाई। आर यू सीरियस? एंड योर यू नो वन गोल बिहाइंड। फ्रांस इज नॉट इवन मिसिंग बेंजेमा, बहुत ही अच्छा फैक्ट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आई थिंक फ्रांस मैन, यू हैव टू गिव इट टू फ्रांस भाई। बेंजेमा हो गया, लूकस हर्नांडेज हो गया, एंगोलो कांटे हो गया भाई, पॉल पॉगबा हो गया, इमेजिन। In my opinion, that was a red, but it would have changed. But would it have changed the course of the game? Well, we don't know exactly. France team are mentality monsters. Okay, I told you France will just do it, not be a cakewalk. Brilliant, exactly. अंश भी यूज कर रहे हैं पुदीन का आइडिया। भाई लेकिन एक्टिव रहना उस वाले आईडी में। क्या ही तो बोलूं मैं, बिकॉज वो ही वाला आईडी के होंगे। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो भी होगा, जस्ट सेइंग। बट हाँ, यू आर टेलिंग इट टू मी हु इज सपोजिटली द जज। रेफ डिडंट गिव द येलो। आई थिंक ही गॉट इनपुट फ्रॉम वीआर रूम फॉर येलो। इन माय ओपिनियन नो रेड। ओके नीलेश, लेकिन नो रेड क्यों नहीं? हार्श है आई नो, लेकिन ही वाज द लास्ट मैन ब्रो। पता नहीं, मतलब he literally stopped him from scoring the goal. That is what I mean. Oh, interesting. ये मैं स्टार कर रहा हूँ दिव्यांश, याद रखना। France is a cheat code. I was live. I don't really. I understand Nathan. No worries. And England would still have bottled it even if France would have received not one but four red cards. Oh my god. आसाद भाई बहुत ही आराम से बोलते थे। माय ऑल फोर प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग इन क्वार्टर फाइनल्स। भाई डिड आई गेट रॉन्ग? मैंने बोला था इंग्लैंड जीतेगी, इंग्लैंड हारी। मैंने बोला था नेदरलैंड्स, इनिशियल मेरा था नेदरलैंड्स जीतेगी, लेकिन आई चेंज इट टू अर्जेंटीना जीतेगी, तो आई गॉट दैट ऑलमोस्ट राइट। देन ब्राजील, डेफिनेटली आई गॉट इट रॉन्ग। और मोरक्को तो भाई एवरीवन गॉट इट रॉन्ग, तो मेरा भी एक हुआ बस, जस्ट अबाउट। साइज इज इंजर्ड बाय द वे, या एग्जैक्टली। Olivier Giroud is the real OG. This has to be by framed. Giroud will get it, I hope so. Fateh OP, absolutely. Olivier Giroud, good night Fateh, bilkul. Mbappe versus Hakimi, damn, it will be amazing again, the battle of pace. Wow. It'll be fun यार, it'll be fun, absolutely. और बीच में हकीम जियश ले जाएंगे बॉल और मार देंगे गोल, क्या बोलते हो पुदिन? जस्ट सेइंग। क्रोएशिया मोरक्को वुड बी अ ग्रेट फाइनल। वेल इट वुड बी इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट रहेगा, बट ऑनेस्टली एज अ स्पेक्टिकल वी ऑल नो अर्जेंटीना फ्रांस यार, लग रहा है मुझे। चेल्सी फ्रेंडली स्ट्रीम करोगे? बिल्कुल करेंगे यार, हम करते ही है। अच्छा नहीं, चेल्सी फ्रेंडली का स्ट्रीम डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन मैं देखता हूँ अगर इफ आई एम एबल टू डू इट आई विल ट्राई एंड डू इट इन टाइम, लेकिन आई डाउट, आई वोंट कमिट राइट नाउ। यार मुझे रोना आ गया रोनाल्डो और दिव्यांश को रोते हुए देखते हुए यार, मतलब पता नहीं यार, मतलब अगेन दिस इज फॉर समवन हु स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो। इमेजिन फॉर पीपल हु हैव वॉच्ड फ्रॉम स्पोर्टिंग। मैं देखा हूँ यार रोनाल्डो को स्पोर्टिंग लिस्बन डेज से मैं देखा हूँ व्हेन ही वाज एक्चुअली स्काउटेड, लेकिन हाँ मैं रोनाल्डो स्टैन नहीं हूँ, बट आई जस्ट सेइंग फॉर इमेजिन द फैंस हु हैव बीन वाचिंग फ्रॉम दैट टाइम। क्योंकि एक आपका विश होता है, योर गोट, योर अगेन आई कैन रिलेट टू इट वेरी वेल बिकॉज when Iron Robin missed on qualification of 2018 World Cup and announced the retirement the second time, हो गया था यार, मैं उसको PSV डे से देखता था, and then obviously Chelsea, and then obviously Real Madrid, Bayern, everywhere, and the guy actually went on to get lot of glories क्लब लेवल पर, बट इंटरनेशनली नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आई नो यू वुड अज्यूम आयरन रॉबिन को भी घुसेड़ रहा है हर जगह, but I genuinely feel that Iron Robin was that good. It's just that his injuries didn't make him the goat that he deserved to be. Anyway, Southgate out. Come on, Potter should go for England. Chelsea should go for new. अरे भाई इतना जल्दी पुदिन, come on. साउथगेट आउट, सैंटोस आउट, अग्रीड 100%। दोनों ही आज आर्ग्यूबली भी नहीं बोल सकते भाई। आई थिंक सैंटोस ने बेवकूफी की नॉट टू गेट विलियम कार्वालियो, हिज मैन, नॉट टू यूज बर्नार्डो सिल्वा एज अ विंगर, not to use Southgate के लिए बोल रहा हूँ, not to use Madison, not to use the delivery of Trent, not to use the delivery of Kieran Trippier, not to bloody use Callum Wilson। आपका लास्ट मिनट, you're out of the World Cup, आप एक और स्ट्राइकर लाओ भाई, just bombard करो बॉल। He didn't do that. Southgate lacked mentality that reflected England's gameplay. Mount should have started. Yeah, I don't agree with this, लेकिन हाँ अर्ली सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए था, वो भी एक मिस्टेक है। 79 मिनट
स्टर्लिंग अमाउंट है, बहुत लेट हुआ है. गेट देम ऑन एट 1 hour टाइम. भाई 150 लाइक्स भी नहीं हुए. कम ऑन पीपल, कम ऑन ब्रो. इतना अच्छा स्ट्रीम गया. लेट्स गेट टू 250 लाइक्स एब्सोल्युटली. ओके, वेल प्लेड फ्रांस. इंग्लैंड हैड 90 मिनट जस्ट लाइक फ्रांस बट दे स्कोर्ड मोर. सिंपल एज दैट. बिल्कुल आई अग्री विद दैट. फुटबॉल वर्सेस कैंसर, बिग अप ब्रो. टॉक मी ब्रो, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू ऑलवेज. पीपल डू चेक आउट फुटबॉल वर्सेस कैंसर एज वेल. हाँ बिल्कुल यार, आई रिलेट टू दिस पुदन. बिल्कुल. आई होप people have been talking about me on other streams as well, just like that yesterday, because I was really sad. मैं कल रात सोया नहीं था भाई. तो आई होप पीपल हैव डन दैट टू बी फेयर टू मी. आई होप एवरीवन इज सेड यार. यहाँ पर एक नेदरलैंड्स फैन है जो खाली 25 साल से देख रहा है नेदरलैंड्स को. तो आई होप यू गाइस टू बी फेयर हैव सेड इट. नो नो टू वेज अबाउट इट. ओके. नहीं नहीं, देखो, इफ यू आर यूट्यूबर यू आर नॉट ऑक्टोपस, वो अलग है. यू आर नॉट जस्ट अ प्रेडिक्टर ना. आप यू आर डूइंग मच मोर. नो नो वरीज ऑन दैट. मेरा भी बहुत बुरा हुआ यार रोनाल्डो के लिए. सैड ब्रो टुडे. बिल्कुल आई अंडरस्टैंड टोटली. देखिए यार, नॉट एवरीवन कैन अचीव एवरी ग्लोरी. सिंपल एज दैट. और नीडलेस टू बी सेड, आई थिंक रोनाल्डो, मेसी, प्रीवियसली जिदान, मैं तो बोलता हूँ ऑल्दो ही वन द वर्ल्ड कप, देन रोनाल्डिनियो, अ लॉट ऑफ पीपल हु बेसिकली आर सो गुड एट दैट गोट लेवल ना. मुझे लगता है दैट अगर वो वर्ल्ड कप नहीं भी जीतते या नहीं भी जीतते हैं, either ways they are in the goat category. Maradona of course तो जीता है भाई दो दो. लेकिन I'm just saying this World Cup has shown that how football has grown in every country, even if it's small. Good to see. Bad, this World Cup is remembered, मैं बोल रहा हूँ, for African and Asian teams particularly. मैं बोलता हूँ one of the upsets. बिल्कुल बिल्कुल, that's a very well put comment. uh, yeah, Pochettino to England to make sure it never comes home. भाई 200 लाइक्स कर दो भाई. बिल्कुल. By the way, Croatia won 3-0 last time against Argentina. इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग है यार. हाँ, वो लोग सेम ग्रुप में थे ना पुदिन. सेम ग्रुप में था ना 2018 में. हाँ एग्जैक्टली. दैट्स व्हाई अर्जेंटीना गॉट फ्रांस इन द राउंड ऑफ 16. करेक्ट 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 करेक्ट. बहुत बढ़िया बोला है आपने. लेकिन 4 साल हो गए इस बात को. चिन्मय ब्रो, रियली सॉरी ब्रो, रियली सॉरी. आई नो चिन्मय इज अगेन अ इंग्लैंड फैन. सॉरी टू सी दैट चिन्मय, बट यार यू नो दैट व्हेन केन इज टेकिंग अ सेकंड पेनल्टी अगेंस्ट अ लोरिस, समवेयर डाउन मुझे लग रहा था कुछ तो होगा. लेकिन रेड कार्ड भाई चिन्मय. आर यू डिसअपॉइंट विद दैट एज वेल एज मच? नहीं दिया थियो को. फ्रांस अगेन नहीं यार. मैं भी यही बोल रहा हूँ यार बहुत दिनों से. मैं तो चाहता हूँ, इफ यू रियली आस्क मी which are the teams that I want to win the World Cup, honestly, Argentina, Croatia और Morocco, I'm okay with them. Even Morocco, yes. फ्रांस नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वो ये अभी बोलूंगा that they deserve it as well. Like you cannot argue कि anyone doesn't deserve it. इस टूर्नामेंट यार वो अच्छा खेले. That's why they're there. Hakimi versus Mbappe was Messi one player final. He's my goat if he wins the World Cup or not. बिल्कुल, that's the attitude. Still Saliba is better than Upamecano? Oh, that's an interesting question. ऑनेस्टली आई थिंक फ्रांस का डिफेंस आज ऊपर में इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा किया था. कुंडे इन पर्टिकुलर बहुत डिफेंसिवली अच्छा किया है. आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है थियो हर्नांडेस का क्वेश्चन कर सकते हैं. चलो वो रेड कार्ड होता, probably I have not put him in that category, but I think Upamecano or Jules Koundé coming to this France backline has helped. Again, Rabiot, who knew that he would do so well? Chouamani, brilliant goal. I know penalty concede किया, लेकिन brilliant goal. Keeper was okay. Even that Argentina team scored 3 goals against France also. Yeah, 4-3 हुआ था बिल्कुल. मे बी यार, लेट्स सी. इट्स लॉन्ग टाइम. ही इज अ लेट ब्लूमर, तो करेगा करेगा मेरे ख्याल से. अगर क्वालिफाई करे. हमारा तो ये भी होता है ना. आई वाज सपोर्टिंग ब्राजील फर्स्ट, पोर्चुगल सेकंड, स्पेन थर्ड, सभी बाहर हो गए. भाई मेरा भी सेम है यार आदित्य. सपोर्टिंग नहीं बोल रहा हूँ. सपोर्टिंग तो ऑब्वियसली नेदरलैंड्स फर्स्ट, वो तो बाहर हो गए. और मैंने प्रेडिक्ट किया था पोर्चुगल, वो भी बाहर हो गए. और इंग्लैंड आज मैं बोल रहा था बिकॉज ऑफ 3 चेल्सी प्लेयर्स प्लेइंग फॉर इंग्लैंड, वो भी बाहर हो गए. क्या बोलूं मैं. आई वांट टू सी क्रोएशिया टू विन मॉडरिच विद हिज सेकंड बैलन डोर. एक्चुअली फतेह ने वही बोला है. दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी. प्रेडिक्ट योर वर्ल्ड कप फाइनल. यार मैं बोल रहा हूँ इट इज गोइंग टू बी अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस. मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं तो ये भी बोल चुका हूँ ऑलरेडी, अर्ली प्रेडिक्शन एट द क्वार्टर फाइनल एंडिंग स्टेज. मैं बोल रहा हूँ the team which has won today will go on to win the World Cup. And that is in fact France, which I won't want second back to back, लेकिन मुझे लग रहा है जीतेगी. ये मेरा gut feel हो रहा है. Not that I want, but
अगेन मैंने बोला है आई डोंट वांट देम टू विन, बट दैट इज माय प्रेडिक्शन. कोनाटे एंड उपमैकेनो सो सिमिलर, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड. नहीं नहीं, कोनाटे काफी डिफरेंट है. कोनाटे इज मोर टॉल एंड स्ट्रांगली बिल्ट. उपमैकेनो भी काफी है, लेकिन आई नो दोनों सेम क्लब के लिए खेले, मे बी दैट्स व्हाई पुट इन. लेकिन आई थिंक उपमैकेनो इज मोर लाइक अ बॉल प्लेयर, कोनाटे इज मोर लाइक अ प्रॉपर ओल्ड स्कूल डिफेंडर. अरे चिदम्बर यार, थैंक्स अ लॉट. दैट दीस काइंड ऑफ कमेंट्स कीप मी गोइंग. अगेन, जो भी लोग प्रशंसा करते हैं मेरे चैनल के बारे में, व्हाट आई वुड रियली रिक्वेस्ट इज पास वर्ड ऑफ माउथ. आप मे बी बाकी चैनल में जाते हो तो बोला 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 करो यार. अगेन, आप अगर कंफर्टेबल ओनली देन that why don't you have Ankit here as much as possible, because he knows his football and he speaks sense. तो आप प्लीज बोलिए, आप बोलिए कम्युनिटी को, शेयर करिए मेरा स्ट्रीम जितना भी पॉसिबल है, शेयर करिए मेरा चैनल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स और व्हाट नॉट, बिकॉज वी आर हैविंग अ टारगेट ऑफ गोइंग टू 7K इस हफ्ते. तो नेक्स्ट हफ्ते होपफुली विल बिकम 7.5K. होपफुली यू गाइस हेल्प देयर. हाँ, मैं ओरिजिनली मैं गिव अवे नहीं करने वाला था, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था गिव अवे करेंगे हम 10K में. बट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस और ऑलमाइटी ब्लूज एफसी का मिलाकर अगर 10K हो रहे तो मैं गिव अवे कर रहा हूँ अभी. और यस, हमारा एक दूसरा चैनल भी है, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. हाँ, 2 हफ्तों से ज्यादा कंटेंट नहीं आया है, बट आप वहां भी देख सकते हो, इतना सारा कंटेंट है, बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट वहां पर. यहाँ पर खाली फुटबॉल. Imagine all these comebacks and all mad games just to see another Francis Croatia. That's what I don't want. Exactly. हैंडसम लग रहे हो भाई. आज बहुत हैंडसम वाले कमेंट आ रहे हैं. क्या हो रहा है? मतलब मस्का क्यों लगा रहे हो भाई? कुछ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यार. आई थिंक इट्स गोना बी a repeat of 2018 final, Croatia versus France, and Croatia takes revenge. Okay, old school purists coming with his prediction now. Interesting. तो old school purists reverse jinx है. Pretty sure Argentina fan हो आप, right? France back to World Cup. या डेफिनेटली मैं तो बोलता हूँ भैया. एनी व्यूज ऑन वैन गाल मेसी इंसिडेंट? मैं बहुत व्यूज दे चुका हूँ उसके बारे में इन द प्रीवियस स्ट्रीम, बिकॉज द स्ट्रीम वाज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. आई वुड लाइक टू अवॉइड इट फॉर राइट नाउ, बट वी विल कम बैक एंड रिव्यू व्हाट इज हैपेंड इन द क्वार्टर फाइनल. तो डेफिनेटली वेट करना मेरे वीडियो के लिए, वेट करना फॉर अ लाइव सेशन ईदर वेज. तो हम करने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, इन द नेक्स्ट 2 days जो ब्रेक है. I can't see Messi losing another World Cup final. Mario Götze 130 minute. Oh, वो भी है. Just like Croatia, we can't see them losing. Maybe Argentina as well. It'll come down to Argentina versus Croatia, is what you're saying. विशाल बोल रहे हैं. What I understand is Argentina versus Croatia जो भी जीतेगा वो वर्ल्ड कप जीतेगा. Going by that logic, Vishal. Okay, France versus Croatia happens. It will be the second time with 2 consecutive finals with the same teams. फर्स्ट टाइम कौन सा, याद करने दो मुझे. इफ आई नो इट. ये तो क्विज क्वेश्चन हो गया. ओल्ड स्कूल प्यूरिस्ट राजेश, फर्स्ट टाइम कौन सा था यार? एक से भाई रिसेंट टाइम्स में तो मुझे याद नहीं आ रहा यार. ब्राजील इटली 94, देन यू हैड फ्रांस ब्राजील. सेम दो ना. ब्रिटिश और जर्मनी. ओ अच्छा अच्छा, वाज इट नेदरलैंड्स? प्रॉब्ली इट वाज, राइट. अर्जेंटीना जर्मनी. ओ हाँ, जर्मनी एक टीम तो मुझे पता था. जर्मनी नेदरलैंड्स में मुझे लग रहा था यार. नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग. एनीवे 70s में होगा डेफिनेटली. लेट्स अच्छा क्वेश्चन है काफी. How did you become a Chelsea fan? I to become a Barca fan because of a very stupid reason. I was 14 and liked Messi more than Ronaldo. Stupid नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है. आप मेरा एक प्लेलिस्ट चेक करिए. एक सीरीज है कॉल्ड नो योर क्रिएटर. तो नो योर क्रिएटर एक सीरीज है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया मेरे बारे में. सो यू विल गेट टू सी दैट. मैं फुटबॉल फैन बना 94 वर्ल्ड कप की वजह से. जनरली नॉट फैन, बट आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल, लाइक लेट्स पुट इट जस्ट अबाउट बच्चा था लिटरली, बचपन में एकदम. बहुत सारा न्यूज था विद मैराडोना ड्रग्स इंसिडेंट एंड एवरीथिंग. देन यू हैड 98 वर्ल्ड कप. जिडान डिड अ मैडनेस. ऑफ कोर्स रोनाल्डो इन हिज प्राइम, R9. फिर चेल्सी का चैंपियंस लीग शुरू किया. 99 का हाइप हुआ था बिकॉज ऑफ द वे द मैनचेस्टर यूनाइटेड केम बैक. इनफैक्ट बेकहम का मेरा पहला जर्सी था, बेकहम का. यू वोंट बिलीव इट. यस. एंड आई स्टार्टेड वाचिंग चैंपियंस लीग फुटबॉल. और चैंपियंस लीग फुटबॉल से मैंने देखा था चेल्सी का मैच पहले बार्सिलोना के साथ, नॉकआउट मैच 99-2000 सीजन का बोल रहा हूँ. और दैट इज वेयर आई थिंक चेल्सी लॉस्ट ऑन एग्रीगेट. लेकिन हमने बहुत अच्छा किया था. एंड ऑफ कोर्स उस समय हम कप कंपटीशन भी जीते थे उस सीजन में, इफ आई रिमेंबर राइट. एंड काफी सारा एक
बोलते हैं ना अंडरडॉग चीज थी, और आई ऑलवेज बैक द अंडरडॉग। अरे आई वेंट विद चेल्सी, प्लस फीफा भी उस समय खेलना शुरू किया था। somehow I always liked the Chelsea kit and everything, so I used to go with Chelsea players, Chelsea, and start with that. AC Milan मैं काफी फॉलो करता था उस समय, because I was a huge Shevchenko fan, काका fan। 2002 वर्ल्ड कप के बाद में काका burst onto the scene, so that's how it became. So Chelsea AC Milan का ये connection है। Yes, by the way, for people who don't know, I'm also an AC Milan supporter, not एक proper fan नहीं बोल सकते, लेकिन मैं support करता हूँ उनको। चेल्सी का तो डेफिनेटली स्टैन हूँ, लाइक 99 से यू कैन से दैट आई एम फॉलोइंग। 2002 से तो वीक इन वीक आउट में देखता हूँ बिल्कुल। Supporting Spurs since 2007, I went tired of defending the club, getting. I understand. भाई ये चीज मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बिकॉज फॉर समवन हु वाज अ चेल्सी फैन इन इंडिया बिटवीन 1999 एंड 2005, वो 6 साल बहुत ही मुश्किल थे, बिकॉज हम वी वर स्टिल वांटिंग टू बी बिग। हम जीते थे, कप कंपटीशन जीते थे, लेकिन वी नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग, सो आई अंडरस्टैंड। Thanks a lot. But again, speaking highly is one thing, but again, getting the numbers is another thing. वो कैसे होगा? If we are there on multiple channels, if you guys are helping us, grow in terms of numbers, and that is something that is needed absolutely. इंडिया बांग्लादेश ओडीआई सीरीज ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट प्लस, चलो करते भाई आदित्य, वहां पर कंटेंट करना है। लेकिन ऑनेस्टली मैं अब क्लियरली मैं एडमिट किया था यार, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ना फुटबॉल का ही कंटेंट आएगा दोनों चैनल्स में, तो मैं फुटबॉल का ही करूंगा, लेकिन बातें कर सकते हो उस चैनल में, यू नो दैट वेरी वेरी मच। जिन कुछ नहीं होता, आई एम एक्चुअली विद यू। बियर थोड़ा सा बस एकदम जीरू लोगोगे भाई, जीरू का तो पहली बार सुना मैंने यार। जीरू, पीपल हैव कॉल्ड मी काका जीरू, जावेद जाफरी, आशीष नेहरा। क्या ही बोलूं मैं। ब्राजील ओवर सेलिब्रेशन, इज इट लाइक दैट? फेयर इनफ। 86 से 90, ओ जर्मनी, ओके फेयर इनफ, अर्जेंटीना जर्मनी, करेक्ट करेक्ट। इंटरेस्टिंग, तो एक बार अर्जेंटीना जीती, एक बार जर्मनी जीती। I understand totally. I understand. भाई अच्छा हो आदित्य, nice to see you as well. Again, do not forget to like the stream. भाई देखते हैं, पहले तो क्वालिफाई तो हो जाए। बिल्कुल भाई। unknown guy, great to see you. Much love to Baba as well. You know that भाई, he's part of my family absolutely. उनका channel and a lot of other channels I always recommend. It's there in the channels tab. Again, the fact is हम हमारा भी चैनल चला रहे हैं, हम लोग भी लाइव जा रहे हैं। मोर और लेस आई गो नॉकआउट में तो हार गया हूँ। हाँ, लेकिन उसके अलावा इफ बाबा कॉल्स, इफ अदर्स कॉल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक ऑफ टाइम एंड गो। तो अगर आप बुलाए तो बहुत बढ़िया यार, आप बोलिए उन्हें कि यार आप अगर चाहते हो कि मैं वहां जाऊँ, आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, then you go and tell, and I'm sure Baba is a brother, he will call me, and we can definitely talk. Love for Baba and certain channels, I always take out time, you know that very well, not from now, from always, and that will always happen. Big up to him and everyone in the community as well. भाई सब लोग लाइक कर दीजिए। आई एम होपिंग दैट, आई नो आज थोड़ा सा मतलब एंटी क्लाइमैक्स हो गया कि दोनों ही नॉर्मल टाइम में हो गया यार, ये क्या बोलोगे? मोरक्को, पोर्चुगल, पोर्चुगल वेंट आउट ब्रो। आई नो इट्स नॉट गुड टू रिमेंबर दैट, स्पेशली फॉर रोनाल्डो फैंस एंड पोर्चुगल फैंस, बट क्या बोलोगे आप लोग यार बेस्ड ऑन दैट? इज इट लाइक समथिंग? और बाय द वे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हम लोग भाई 6500 सब्सक्राइबर्स से खाली 8 सब्सक्राइबर्स दूर है भाई। 7-8 सब्सक्राइबर्स और हम हो जाएंगे 6.5 के। So let's get us to 6.5k. For people who are not subscribed, please consider subscribing to the channel. It doesn't cost a buck यार। Membership, super chats, वो सब definitely cost, but वो optional है। लेकिन subscribe करिए, like करिए, that definitely helps, और subscribe to other channel as well. So we are just 7 subscribers away from 6.5k. I'm hoping we get to 7k also very soon. With all your help, we will, right? वही step by step. It's an almighty fam. You guys are part of it very much. और for me, a lot of times, you guys are my panel. मैं बात करता हूँ आप लोग से इतना, and I really love it. So I hope you guys can support me there much. But again, coming back to the games, again, Fernando Santos, Southgate, they got it wrong. वो ऑनेस्ट ट्रुथ था। आई थिंक बहुत ही लेट रिएक्ट किया दोनों ने, और वहीं पर आई थिंक मात खा गए। और अगेन बिग अप टू मोरक्को भाई, बिग अप टू फ्रांस। फ्रांस जो हम बोल रहे थे कर्स है, इतने सारे इंजरीज, इंजरीज आए थे ना, लगे था कर्स 100% होने वाला है, लेकिन नहीं। वी ऑल नो दैट थिंग्स हैपन, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दे हैव द विनिंग मेंटालिटी। देना पड़ेगा। हाँ, एक मोमेंट था अबाउट हैरी केन नॉट स्कोरिंग द सेकंड पेनल्टी, वही है, दीज थिंग्स मेक और ब्रेक अ टूर्नामेंट आपका।
हाँ, ये वाला ना, योर व्यूज आर ट्रूली रिमार्केबल, आई सजेस्ट यू टू चेंज द ओनली चेल्सी फैन चैनल टू कंप्लीट फुटबॉल वन। ओके, यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मेरा। आपको क्यों लगता है भाई मृदुष में बहुत ही अच्छे आप कमेंट देते हो, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, आपको क्यों लग रहा है दिस इज ओनली चेल्सी फैन चैनल? आप प्लीज प्लीज लेट मी नो। इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, लिटरली हर एक वीडियो में बोलता हूँ। अच्छा, बोलने से नहीं होता, कंटेंट आप देखिए। मैं अगर मैं 10 वीडियोस करता हूँ ना, 10 में से 2 वीडियोस होते हैं चेल्सी के। दैट्स हाउ इट इज। मैं बात करता हूँ हर एक क्लब का, मैं बात करता हूँ, एंड नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, मैं बात करता हूँ सेरिया। भाई सेरिया में आई वुड लाइक टू क्लेम दैट वी कवर द मोस्ट कंटेंट ऑफ सेरिया। ठीक है। मैं बात करता हूँ बीट ऑल द बिग गेम्स इन ला लीगा। मैं बात करता हूँ चैंपियंस लीग। मेरा यूएसपी इज नॉट चेल्सी, मेरा यूएसपी इज चैंपियंस लीग एंड इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल। दैट इज व्हाट माय यूएसपी इज। क्योंकि यर इज समवन हु हैज वॉच चैंपियंस लीग फुटबॉल फ्रॉम 1999, here is someone who's watched international football from 1994। ठीक है। चेल्सी एक्चुअली वीक इन वीक आउट तो शुरू हुआ 2002 में। यस, आई एम अ फैन ऑफ मिलान एज वेल। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो व्यू पॉइंट है ना, ऑनेस्टली मैंने अपना चैनल का नाम भी बदला था। पहले इट वाज सपोज टू बी अ क्रिकेट एंड फुटबॉल चैनल जस्ट लाइक ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। इट वाज कॉल्ड आरसीबी एंड चेल्सी फैन टीवी 1.5 साल पहले। ठीक है। लास्ट ईयर टुवर्ड्स एंड मैंने चेंज किया था ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। ठीक है। दैट वाज व्हाट इट वाज। सो द एसेंस विल से दैट आपको मिलेगा, मैं हूँ चेल्सी फैन, मेरे से आपको मिलेगा इनपुट, लेकिन मेरा जो नॉलेज है दैट इज मच मोर देन दैट। इनफैक्ट मैं तो क्लेम कर रहा हूँ ओपनली बहुत बार कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, than a lot of content creators, than a lot of fans, मैंने ज्यादा एल क्लासिकोस देखे, मैंने ज्यादा मिलान डाबीज देखे, एंड मैंने ज्यादा देखे अर्जेंटीना ब्राजील के मैचेस। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। वो एक फैक्ट है, वो फैक्ट नहीं चेंज कर सकते, और मैं वो कवर करता हूँ। देयर इज अ हिस्टोरिकल सीरीज, लॉट ऑफ थिंग। हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको मिलेगा चेल्सी कंटेंट डेफिनेटली, क्योंकि हूं मैं। लेकिन आपको उसके अलावा भी मिलेगा, मतलब इट्स ओनली अ सर्टेन परसेंटेज। इनफैक्ट हमारा जब चैट आप देखो सब्सक्राइबर्स के, we have more non-Chelsea fans than Chelsea fans in the chat. वो that proves itself. तो yeah, we used to be one of the channels जहाँ पर Chelsea होता था। Who am I? Who am I? मैंने I would like to claim that I was the first person on internet to bring something like that. I can challenge the internet यहाँ पर। तो हु एम आई का पहला सीजन वाज ओनली चेल्सी। बहुत ही चेल्सी का हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छा है। अगेन बाबा वाज देयर ऑन दैट, ही विल प्रोबब्ली ऐड टू दैट। सेकंड सीजन वाज से ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड ऑल द क्लब्स का, एंड दैट इज व्हाट इट्स। तो कहीं ना कहीं है ना, एक पर्सपेक्टिव बन चुका है। दैट इज व्हाट पीपल नीड टू चेंज। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू चेंज फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। पता नहीं फॉर वट एवर इज नॉट कमिंग थ्रू, बीट माई थंबनेल्स और वट एवर फीडबैक होता प्लीज दीजिए। आई बी मोर देन हैप्पी टू हियर इट फ्रॉम यू गाइज। बट दैट्स ब्रिलियंट टू गेट दैट, बिकॉज वो मुझे लगता है समवेयर ऑन द लाइन इज अ रॉन्ग परसेप्शन। व्हाट इज हैपनिंग विल मोरक्को गो ऑल द वे? आई फील नहीं, इट माइट बी द लास्ट। होता है ना डबल ट्रिपल सरप्राइज, ठीक है, थर्ड टाइम लकी नहीं होगी मुझे लगता है। नॉट दैट दे लकी, दे डिजर्व द लक, बट जस्ट सेइंग दैट फ्रांस इज जस्ट टू गुड। That's a good point, Pudin. बहुत अच्छा पॉइंट है। 1998 and they are only ending it. Uh, Absolutely thanks Aditya as well. नेम बीइंग मोर जनरल, हाँ, तो ये भी मुझे फीडबैक मिला भाई, नेम ये ऑलरेडी एक बार चेंज कर चुका हूं मैं, और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ऑनेस्टली मैं लेना नहीं चाहता चैनल के नेम्स। भाई देर आर लॉट ऑफ चैनल्स इन, आपको पता ही है, लेट्स नॉट गो देर आर लॉट ऑफ चैनल्स इन द कम्युनिटी जहां पर नेम से इट्स ईदर बेस्ड ऑन अ प्लेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लब विच इज लाइक, और इज बेस्ड ऑन द क्लब दे लाइक। फिर भी उनको मिलता है भाई, प्यार मिलता है। हमें भी मिलता है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा मिलता है, विच दे डिजर्व, बट वी डिजर्व दैट मच एज वेल। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डबल साइड नहीं लूंगा, लेकिन एनीवे अगर लगता है आप लोग को इतना स्ट्रांगली, तो आई विल पुट अप अ पोल सम टाइम एंड डू दैट। लेकिन वही है, एक बार ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं मैं नाम। कवर ऑल टॉप 6 टीम्स ऑफ ला लीगा। हाँ मैं जनरली, हाँ ये एक बढ़िया पॉइंट है। आई चैंपियंस लीग में हर एक कवर करता हूँ, चैंपियंस लीग में 100% मैं कवर करता हूँ। ला लीगा में आई कवर मोर और लेस रियल मैड्रिड बार्सिलोना। ठीक है। अगर क्लैश होता है, समटाइम्स द मैचेस क्लैश से विद चेल्सी का मैच या मिलान का मैच, देन ओनली आई डोंट कवर दैट। तो दैट्स द आइडिया, बट आई ट्राई एंड कवर एज मच एज पॉसिबल। अगेन मैं अकेला हूं, आई वुड लाइक टू ग्रो द टीम। वो कैसे होगा, आप लोग ग्रो करो नंबर्स, हम एज फैमिली वी ग्रो एज नंबर्स, देन मे बी आई हायर समवन। मैं और भी कंटेंट लाना चाहता हूँ आप लोग के लिए। इनफैक्ट इंडियन फुटबॉल भी देयर इज अ प्लेलिस्ट। इंडियन फुटबॉल भी मैंने शुरू किया था लास्ट ईयर, इस बार बिकॉज ऑफ पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, अभी यार फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑन दिस, तो थोड़ा सा बिजी रहो और कुछ नहीं है।
France have been better than Brazil. Sure, Christian, nice to see you. Brazil hyped lacks the mentality. भाई पेनल्टी किक्स में कोई भी जीत सकता है, हार भी सकता है यार, कोई नहीं. दिव्यांश क्या बोल रहे हो भाई? कतर मनी इज इन्वॉल्व. भाई पता नहीं यार, देखते हैं. हु नोज. हाँ मतलब ठीक है, मतलब अगेन मैं स्पेसिफिकली तो नहीं बोलना चाहता पुतिन, बट अगेन मच रेस्पेक्ट टू एवरीवन. बट अगेन भाई कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द फ्रांस फैंस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द मोरक्को फैंस. आई नो काफी कम होंगे इन द चैट, बट दैट्स हाउ इट इज. कहीं ना कहीं मुझे लगता है समटाइम्स इट्स आल्सो रिक्वायर्ड. नॉट दैट आई वांटेड देम टू बी आउट, पोर्चुगल एंड इंग्लैंड, डोंट गेट मी रॉन्ग. लेकिन कहीं ना कहीं इट आल्सो रिक्वायर्ड होता है ना. फुटबॉल, फुटबॉल विंस यार. देखो ज्यादा बेसिकली मैं कल भी बोल रहा था ये बात, व्हेन ऑल द पॉपुलर टीम्स ऑलवेज विंस ना, तो आपका नॉलेज भी थोड़ा सीमित रह जाता है. इफ यू आर अ न्यू फुटबॉल फॉलोअर, आई जनरली फील दैट. एंड समटाइम्स ड्रामा एक्साइटमेंट होता है. समटाइम्स इट्स ऑन लूजिंग साइड, समटाइम्स ऑन विनिंग साइड, तो यू हैव टू टेक इट. आई एम टेलिंग यू, ये लास्ट नाइट एंटायर नाइट मैं सोया भी नहीं. मैं सोया भी नहीं. आप इमेजिन कर सकते हो, सो फॉर समवन हु इज वाचिंग नेदरलैंड्स फ्रॉम लाइक लास्ट 28 years, ऑनेस्टली इमेजिन करिए, 8 साल लास्ट वर्ल्ड कप में थे नहीं अपन. बट इट इज पार्ट ऑफ फुटबॉल. इतना तो सीख गया अब इतना. बिल्कुल यार, अरे थैंक्स यार, एब्सोल्युटली ग्रेट ग्रेट स्टफ भाई. दीस काइंड ऑफ थिंग्स कीप मी गोइंग एवरी डे दे कीप मी गोइंग. एंड अगेन यार अभी भी बोल रहा हूँ, आई एम स्टिल ऑन मेडिसिंस. होपफुली विद ऑल योर सपोर्ट, वी काइंड ऑफ गेट बैक टू टोटल फुल ग्रूव इन कपल ऑफ डेज आफ्टर दिस ब्रेक. एंड इवन बीच में मैंने एक स्ट्रीम करना है, और वील बी रिव्यूइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 days एज वेल. क्या बोलते हो भैया, अप टिल नाउ 2010 से बेटर है क्या इस वाला वर्ल्ड कप? भाई इन टर्म्स ऑफ सरप्राइजेस, इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, इट इज कंपेरेबल. 2010 नहीं, 2006 बोलूंगा मैं. अच्छा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, इन टर्म्स ऑफ जस्ट स्टार्स एंड क्वालिटी ऑफ फुटबॉल प्लस ड्रामा, जो टोटल पैकेज बोल रहा हूँ ना, अभी भी मैं देखना चाहूंगा कपल ऑफ वेरी गुड मैचेस. बिकॉज 2006 का वर्ल्ड कप वाज नेक्स्ट लेवल फॉर मी. दैट्स लाइक साउथ अफ्रीका चोकर्स. बिल्कुल यार, 100% अग्रीड. क्या बोल सकते हैं. आई नो टॉटनम भी बोल सकते, सॉरी यार. आई नो ब्रिटिश में टॉटनम सपोर्टर अभी सुपर चैट दे रहे, बट अगेन थैंक्स फॉर द सुपर चैट ब्रो. मच लव टू यू. एंड अगेन भाई सब लोग, देयर इज अ मेंबरशिप एज वेल, यू कैन गो फॉर इट. देयर इज अ लॉट प्लान. एक मेंबर स्ट्रीम हो गया है. आई होप मेंबर्स वर देयर हैड फन इन दैट. इफ यू डिड, आपका अटेंडेंस दे दीजिए विद योर नाइस इमोजी. लेकिन हाँ, बाकी लोग देखते हैं यार, मतलब होपफुली विल हैव मच मोर कंटेंट. वर्ल्ड कप के बाद तो भाई हु एम आई, वो सब वापस से शुरू होना है. यू नो दैट हु एम आई. पीपल नो इट by now hopefully. Who am I? Do check it out. It's a brilliant quiz. हमारा जो सीरीज है, डू चेक इट आउट. इनफैक्ट 3 सीजन हुए हैं उसके, तीसरा सीजन का सेमीज बाकी है अभी, तो विल गो देयर. हाँ, 2006 इज आइकॉनिक. द स्क्रिप्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप इज द बेस्ट. हाँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो चीज है ना. हाँ एग्जैक्टली भाई, वो पोर्चुगल तो बाहर होगी, अब क्या कर सकते हैं ना. 2006 बेस्ट फाइनल. ओहो, दैट फाइनल वाज समथिंग. पनेनका मिला आपको, रेड कार्ड मिला, वो भी हेडबट. क्रेजी, मतलब पेनल्टी शूट आउट भी, ग्रॉसो विद दोस. भाई 2006 फाइनल वाज अनदर. और जस्ट नॉट फाइनल, 2006 में बैटल ऑफ न्यूरम्बर्ग हुआ था. आई नो, मैं एज अ नेदरलैंड्स फैन आई डोंट लाइक टू रिमेंबर इट, बट बैटल ऑफ न्यूरम्बर्ग राउंड ऑफ 16 उसमें हुआ था ड्रामा. इट वाज सिमिलर टू यस्टरडे. दैट वाज व्हाट हैपेंड, बैटल ऑफ न्यूरम्बर्ग. देखना वो लोग, अगर आप मिस कर दियो तो. had a lot of quality generally. पहला ही मैच में 4-2 हुआ था, जर्मनी बीटिंग कोस्टारिका. फिलिप लाम फ्रॉम लेफ्ट बैक विद अ क्रेजी गोल. बोलो वो सब चीज होता है 2006 में. मेरा नेट नहीं सही नहीं था अंकित भाई, बट नेक्स्ट टाइम आई विल विन. ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. बेसिकली दिस इज अबाउट द मेंबरशिप. पुतिन बोल रहे हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम. व्हाई इज इट कॉल्ड बैटल ऑफ न्यूरम्बर्ग? चलो आज का होमवर्क, चेक शॉट्स ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. बेसिकली कुछ नहीं है. बेसिकली शॉर्ट्स में मैंने किया है 1 महीने पहले, आप चेक कर सकते हो. 50 सेकंड का वीडियो देख सकते हो आराम से, मजा आएगा आपको. लेकिन बेसिकली न्यूरम्बर्ग इज अ प्लेस, जर्मनी में हुआ था वर्ल्ड कप, और बैटल हुआ था. ये सिंपल सा लॉजिक है. क्रेजी बैटल, बेटा यू हैव टू सी. अंडरडॉग जीत जाए तो ये बेस्ट वर्ल्ड कप होना चाहिए मेरे हिसाब से. हाँ, तब बोल सकते हैं. बट अगेन, डू आई कंसिडर यूरो 2004 इज द बेस्ट यूरोज एवर?
probably, but probably not. देखते हैं, वो आएंगे. Depends on the quality of matches as well, मेरे ख्याल से. Battle of Lucelle has more cards, just about. पार्ट 2 कल हुआ था. बिल्कुल बिल्कुल. चलो भाई, अभी के लिए इतना ही है. चलो अभी मिलते हैं जल्दी से. होपफुली कल विल डू either a video या we'll come live. And Almighty Sports Plus पे there's a high probability that we might do something. तो do check out उसके लिए. Hit that bell notification icon दोनों ही में. And again, भाई sorry for Portugal fans, sorry for Ronaldo fans, sorry for England fans. Of course मैं चाह रहा था for my Chelsea boys to win something. Hopefully Hakim Ziyech करे कुछ, Kovacic करे कुछ, वही बोल सकता हूँ मैं. But again, Argentina fans are waiting the wings. You know that very much, especially Messi. तो भाई अभी के लिए इतना ही है. But absolutely, we'll go with that with a last chat, and which is what Pudin has shared. Brilliant. अरे thanks यार, much love to you. भैया it's just fans talking, friends talking. उतना ही मैं बोलता हूँ. चलो, see you for now and have a good night. Take care.